Okay. Good morning, all of you today. How old are you guys? Are you in your 20s? 19, 18? Okay, so near about that. Anyway, the time that you were born, the world was quite a different place. Well, at least India was quite a different place. I don't know whether any of you know that we had only one TV channel. It was Doordarshan. And a movie used to come only once a week on Sundays. And there was something called Chitrahar. Do you guys know what a Chitrahar was? So you had to wait for 2 days just to listen to old songs, you know. Can you imagine a world like that? Today you guys have, 24-hour music channels. You can watch music whenever you want. We used to have landlines and you had to make a trunk call, book a trunk call to make a call to somebody internationally. Now you guys have WhatsApp, Snapchat, you know. When you asked what job do you want to do, parents would always tell their kids, okay, doctor, engineer. Now no more. You can be a hairdresser, you can be an RJ, you can be a DJ, a stylist, anchor. There's just so many more opportunities. And this is fantastic. It's wonderful. Because I think the big advantage of being young is the ability to have choices. You have so many choices. But it's also difficult because it's complex and you need to have the right kind of information. You need to be strong to be able to navigate those choices and make the right ones. It's very important when you're young to experiment, to really find that one thing that you love to do, and so that you can make a choice with the rest of your life. As you get older, this gets much more difficult. Most of the time, the people that we have to learn from, our role models, are family members, right? Family members, okay, you can talk to them, you can learn about their success stories, but they have a hidden agenda. They want you to do all the things that they didn't do. So they're not very reliable in giving you good advice. And this is actually where Mind Rocks comes in. It's a platform that allows you to meet role models from different walks of life and talk to them and understand the stories behind their success. So you get a better perspective on how to make the choices you need to for your life. Today we have some amazing stars who have really shattered boundaries and limitations. We have Singh is King sitting right there, who with his powerful punches has broken many limitations. We have Sukhvinder ji coming later with his amazing voice. We have Bhagwant Maan with his humor. He's made a big dent in Indian Parliament and we're going to talk more to him later. There's Sardar Singh, who's done amazing things in hockey and, we have to learn from his tenacity. And there's Isha with her sheer beauty. So what's your job today? To listen to them, to ask them questions, to make sure they don't give you any goalies, get the real story behind their success, be inspired, be wiser, and make better choices. You've already made a good one today in the morning by coming here, so welcome. I want to just tell you a couple of the rules of this event. It's a little bit different to normal conferences. We don't expect you to sit here and, in attention and listen to what we have to say. We want you to join the conversation. We expect you to ask questions. You're going to get whistles. We expect you to whistle if you like something. Hoot, which is very in fashion now. There's going to be a dhol guy who will be, doing the dhol. When you guys like something, the dhol will go off. And that's about it. You can dance as well if you want with the star. So that's the rules, okay? No sitting straight and being on attention, okay? So have fun today. Thank you. Thank you so much, Kali. And crux of the whole speech was, you just have to be pure Punjabi. You can't sit just like that. And we want the voice to come out from your mouth, rather your mobile phones. So I would request you all to please, put it on vibration. And now I would like to request Mr. K.K. Khandelwal for the inaugural remarks. He's the Principal Secretary to the Chief Minister of Haryana, and they are the presenting sponsor for the India Today Mind Rocks Youth Summit. So can we have you on stage, please? Can you have a big round of applause?
Good morning, friends. I will be a little bit formal because I will be giving only the background of youth programs in the country and particularly about Haryana. मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा उन्होंने इस माइंड रॉक्स यूथ समिट का उद्घाटन करना था, लेकिन किन्हीं व्यस्तताओं के कारण उन्होंने ये संभव नहीं हुआ कि वो इस कार्यक्रम में भाग ले सकें। मैं उनकी ओर से आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। इस यूथ समिट में आकर के 30 साल पहले जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे, जिस तरह का जोश, जिस तरह का उत्साह आप लोगों में देख रहे हैं, उसकी बड़ी याद आती है। आज की यूथ समिट में आप कंट्री के बहुत सारे यूथ आइकॉन से इंटरेक्ट करेंगे और जैसा कि कली जी ने कहा कि आपको बहुत ही फ्रैंक होकर के अपने सवाल जवाब करने हैं, जो आपके अंदर शंकाएं हैं उनसे उनके बारे में समाधान पूछना है। 2011 का जो वर्ष था, बड़ा ऐतिहासिक वर्ष था दोस्तों। युवाओं के लिए इतना ऐतिहासिक वर्ष था कि 2011 के बाद दुनिया की तस्वीर बदलने लगी। आपने ट्यूनीशिया की रजनीगांधी क्रांति का नाम सुना होगा, सुना है? ट्यूलिप रिवॉल्यूशन क्या थी ये? कि एक पोस्ट ग्रेजुएट पास स्टूडेंट, उसको वहां की सरकार नौकरी नहीं दे पाई। उस व्यक्ति ने सब्जियों का अपना व्यवसाय शुरू किया, तो वहां की जो भ्रष्ट अफसरशाही थी, जो वहां की तानाशाही हुकूमत थी, उन्होंने उसको कहा कि नहीं, तुम ये नहीं कर सकते हो। यहाँ के जो नियम कानून है वो तुम्हें बिना परमिशन के ये कार्य करने की इजाजत नहीं देते, और उस व्यक्ति को जेल में डाल दिया गया। युवाओं के माध्यम से, एसएमएस मैसेज के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से ये बात पूरे ट्यूनीशिया में फैल गई और करीब 1.5 लाख युवा ट्यूनीशिया की राजधानी में इकट्ठे हो गए। और ट्यूनीशिया की राजधानी में इकट्ठे होकर के जो वहाँ का तानाशाह था राष्ट्रपति, उसको विवश कर दिया कि उसे देश छोड़ करके भागना पड़ा। ट्यूनीशिया की रजनीगंधा क्रांति जो थी, युवाओं के जोश, युवाओं के उत्साह, युवाओं के जुनून, युवाओं के जज्बे की कहानी थी। इसने पूरे के पूरे मिस्र में, सूडान में, मॉरिटानिया में, अल्जीरिया में जो तानाशाह थे, उनके अंदर एक कपकपाहट पैदा कर दी, उनके अंदर एक डर पैदा कर दिया, उनके पसीने छुड़ा दिए। इंटरनेट के इस युग में अब अन्याय और अत्याचार के खिलाफ युवाओं का आवाम उठ खड़ा हुआ है। ये पूरी दुनिया की हकीकत है। एशिया के देश भी इससे प्रभावित हुए हैं और हिंदुस्तान में भी युवा अब यदि उनकी रचनात्मक शक्ति का प्रयोग नहीं किया गया, उनकी ऊर्जाओं का यदि सृजनशील कामों में प्रयोग नहीं लाया गया, तो यह युवा आक्रोश एवं बगावत का आगाज हो सकता है। आपने फैज अहमद फैज का नाम सुना होगा। फैज अहमद फैज जो थे, 2012 में इस देश ने उनकी जन्म शताब्दी मनाई थी और फैज बड़े क्रांतिकारी कवि थे। ऐसा युवा कवि था जिसने उस समय की शासन व्यवस्था, जहां अन्याय और अनीति थी, अत्याचार था, उसके खिलाफ उन्होंने ये 2 पंक्तियां कहीं, एक खाक नशीनों उठ बैठो, अब वक्त करीब आ पहुंचा है, जब तख्त गिराए जाएंगे और ताज उछाले जाएंगे। तो दोस्तों, अब समय वो आ गया है जब कोई भी अन्याय हो, कोई भी अत्याचार हो, कोई भी कुरीति हो, कोई भी ऐसी चीज हो जहां आपका दमन किया जा रहा हो, युवाओं को उठ खड़ा होना होगा, युवाओं को आक्रोशित होना पड़ेगा, युवाओं को बदलाव के लिए सरकारों को, आवामों को विवश कर देना होगा। आज
जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो भारत के पक्ष में है। हमारे पास युवा शक्ति की एक बहुत बड़ी दौलत है। हमारे देश की कुल जनसंख्या का 72% जनसंख्या ऐसी है जो 40 वर्ष से नीचे है। 47% आबादी ऐसी है जो 20 वर्ष से कम के लोगों की है। हमारा देश डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के एक ऐसे संधि काल से गुजर रहा है जैसा कि 20वीं शताब्दी में यदि आपने देखा होगा कि जो ईस्ट एशियन टाइगर्स के नाम से देश जाने जाते थे, कोरिया, सिंगापुर, वहां के युवाओं ने भी अपने देश के जीडीपी में बड़ा भारी योगदान दिया और आज वो देश अग्रणी देशों की पंक्ति में है। हमारे पास आज वो समय है। सबसे पहले तो चूंकि इस युवा समिट में आपको ये समझना होगा कि युवा कौन है। युवाओं की अन्य अन्य संस्थाओं द्वारा अलग अलग समय पर अलग अलग डेफिनेशंस दिए हैं। यूनाइटेड नेशंस कहता है जो 15 साल से 24 साल का है वो युवा है, और भारत सरकार भी इस पर एक मत नहीं है। भारत सरकार का जो नेशनल यूथ पॉलिसी थी 2003 की, उस यूथ पॉलिसी के तहत उन्होंने 13 वर्ष से 35 वर्ष को युवा माना, और अब 2014 की नई पॉलिसी आई है, नेशनल यूथ पॉलिसी 2014, इसमें उन्होंने 15 वर्ष से 29 वर्ष को यूथ माना है। तो आज हम मतलब इस चीज को लेकर के कि जो डिस्कशंस हैं उसमें 15 वर्ष से 29 वर्ष को यूथ मान करके अपने डिस्कशंस को आगे बढ़ा सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो सरकारी कागजात होते हैं, सरकारी दस्तावेज होते हैं, ये सरकारी दस्तावेज ऑफिस की फाइलों में, ऑफिस की अलमारियों में सिमट करके रह जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी भी यूथ को यहाँ जानकारी होगी कि 2014 की यूथ पॉलिसी में क्या है। अब समय आ गया है जब कोई भी यूथ पॉलिसी हो या कोई भी आम आदमी से संबंधित किसी भी प्रकार की योजना हो, वो योजना सरकारी अलमारियों में बंद होकर के ना रहे। उसका लाभ जिस घटक के लिए वो बनाई गई है, जिस वर्ग के लिए बनाई गई है, उस वर्ग को उसकी पूरी जानकारी हो। हमारे यहाँ जो आज जनसंख्या है 15 से 29 वर्ष के बीच में 27.5% जनसंख्या है। और यदि आप दूसरे देशों के साथ इसको वो करें कि चाइना में जो मीडियन एज है, पूरी एज का बोलें तो 37% है, जापान में 44% है, अमेरिका में 37% है, लेकिन इंडिया की जो मीडियन एज है वो 24 वर्ष है। यानी ओवरऑल जो एज प्रोफाइल है हमारी 24 वर्ष है। यदि आप इसको देखें कि वो लोग बूढ़े होते जा रहे हैं, उनका जो पॉपुलेशन का जो कंपोजिशन है वो जैसे आप बाल्टी को उल्टा कर दो तो जो शेप बनेगी ना उस तरीके की शेप है, बहुत कम टेपरिंग है उसमें। सारी की सारी जनसंख्या एक से एजिंग पॉपुलेशन, बूढ़े लोगों की जनसंख्या ज़्यादा है, जबकि हमारे यहाँ युवाओं की जनसंख्या ज़्यादा है। जैसा मैंने कहा कि 72% लोग 40 वर्ष से कम उम्र के हैं। तो ये जो 2025 तक जो दुनिया की 4 सबसे बड़ी इकोनॉमीज हैं, इंडिया उसमें चौथे नंबर पर होगा। अमेरिका, जापान और चाइना को छोड़ करके हम लोग चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी के रूप में आएंगे। और ये संभव कैसे होगा? ये संभव होगा क्योंकि हमारी यूथ फोर्स जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा यूथ फोर्स है। यानी यूथ फोर्स का जो प्रतिशत है पूरी जनसंख्या में वो दुनिया में हमारा सबसे बेहतर है। युवा वह शक्ति है जिसके सदुपयोग से समाज, राष्ट्र व विश्व तक का नक्शा बदल सकता है। और आज आप एक ऐसे संधि काल पर हैं युवा, जो इस देश का नक्शा बदल सकते हैं। 2025 ही नहीं 2020 तक हम उन अग्रणी राष्ट्रों की पंक्ति में आ सकते हैं यदि युवा को आज सही दिशा मिले, युवा को सही अपॉर्चुनिटीज मिले, युवा को सही माहौल मिले, सही परिवेश मिले, सही वातावरण मिले। कुछ राजनीति के कारण समय समय पर इस तरीके की चीजें हुई, जैसे आज यहाँ कई पड़ोसी राज्यों को ले लें कि ड्रग्स का सबसे ज़्यादा आप अखबारों में भी पढ़ते होंगे, बहुत सारी गैंग पकड़ी गई, बहुत सारे नोन नेम के नाम उसमें बीच में आए। जिस तरह से किसी जमाने में क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था।
अब जरूरत है कि अगस्त के महीने में ही आप करो 23 अगस्त कि हम लोग क्विट ड्रग मूवमेंट के नाम से एक नई मुहिम जारी करें ताकि देश का कोई भी युवा ड्रग्स का शिकार ना हो। देखिएगा, राजनीति के बारे में मैं एक छोटी सी लाइट सी बात कहता हूं कि राजनीति की कुछ भी कर सकते हैं, युवाओं का काम है कि राजनीति की अपनी मनमानी ना कर सकें। एक किसी कवि ने कहा है कि राजनीति जब से बनी पद की वैध रखेल, ग्राफ बढ़ा अपराध का और देश बना है जेल। बड़े बड़े लोग अंदर चले गए, क्या राजा प्रजा के सामने चली उसकी, वो भी अंदर गया। और बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जबकि युवा आक्रोश के कारण सरकारें भी उनके अंदर जो मौजूद मजबूत लोग थे और जो भ्रष्टाचार में गिरे हुए थे उनको भी जेल जाना पड़ा। ये युवाओं की शक्ति का, युवाओं के आंदोलन का प्रभाव था कि शासन भी, सत्ता भी उन लोगों को नहीं बचा सकी। युवाओं की जो प्रतिभा है, उनका जो पौरुष है, उनका जो तप है, उनका जो त्याग है, उनका जो शौर्य है और उनकी जो गरिमा है, वो राष्ट्र के गर्व का विषय होते हैं। तिरंगा झंडा जो है ना, दो अवसरों पर फहराया जाता है और दो अवसरों पर राष्ट्रीय गान बजाया जाता है जो देश की शान और शौकत का प्रतीक होता है। जब हमारी सेना कोई युद्ध जीतती है या जब हमारा खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में कोई पदक जीतता है। मिस्टर विजेंद्र यहां बैठे हुए हैं, वो कितने गौरव का समय होता है जब पदक जीत करके हमारा खिलाड़ी डायस पर खड़ा होता है और राष्ट्रीय गान की धुन के साथ इंडिया का तिरंगा झंडा फहराया जाता है। आपने युवा नचिकेता का नाम सुना होगा, जिसने मृत्यु के ठेकेदार यमराज तक को झुका दिया। किशोरावस्था के लवकुश, अभिमन्यु, ध्रुव, प्रहलाद की कहानी को कौन नहीं जानता, जिन्होंने अपने पराक्रम, पौरुष और तप और त्याग के बल पर अपनी शारीरिक और आत्मिक शक्ति का अद्भुत परिचय दिया। मैं अजय आज युवक सिद्धार्थ की बात करूं, जिसने केवल जवानी के दिनों में सत्य की खोज के लिए दुर्गम पथ पर पड़ गए। 16 वर्ष के शिवाजी थे, उन्होंने अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध कमर कस ली थी। सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर, राजा महेंद्र प्रताप, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, उधम सिंह, महारानी लक्ष्मीबाई, अरुणा आसफ अली, कल्पना चावला आदि के युवा चमत्कार क्या बुलाने योग्य हैं। गुरु गोविंद सिंह और उनके नौनिहाल लाडलों ने देश धर्मित अपने प्राणों की बाजी लगा दी और राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर के शब्दों में 2 पंक्तियों में जो युवाओं का उन्होंने जय घोष किया कि अंधा चकाचौंध का मारा, क्या जाने इतिहास विचारा, साक्षी है उसकी महिमा के सूर्य चंद्र भूगोल खगोल, कलम आज उनकी जय बोल। तो आज का दिन है युवाओं की जय बोलने का, युवाओं का जयकार करने का। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मैं थोड़ी सी बात जो कि यूथ का विकास जो है, यूथ का विकास 3 चीजों से संभव है कि एजुकेशन हो, एम्प्लॉयमेंट हो और एंटरप्रेन्योरशिप हो, स्किल डेवलपमेंट हो। शिक्षा सबसे जरूरी चीज है। भारत सरकार करीब 90,000 करोड़ रुपए यूथ प्रोग्राम्स पर खर्च करती है, यानी 2710 रुपए प्रति व्यक्ति, प्रति युवा प्रतिवर्ष। हरियाणा सरकार करीब 3350 रुपए प्रति युवा प्रतिवर्ष खर्च करती है। हमारे यहाँ यदि देखें शिक्षा के तौर पर कि जहाँ पहले 8 विश्वविद्यालय थे राज्य में 2005 में, आज वहाँ 43 विश्वविद्यालय हैं। जहाँ 16,560 टेक्निकल ITIs में सीट होती थी, आज वहाँ 62,000 हैं। जहाँ 27,000 पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज में सीट्स होती थी, वहाँ 1,58,000 हैं। यानी करीब 2.5 लाख युवकों को सीधा एम्प्लॉयबिलिटी के लिए तकनीकी एजुकेशन का वो देते हैं। हरियाणा की जनसंख्या है केवल 2% पूरे देश की, 1.3% हमारा क्षेत्रफल है। लेकिन जब मेडल जीतने की बात आती है तो हरियाणा के मेडल होते हैं 33% से 35%।
ओलंपिक 2 मिनट ओलंपिक खेलों में जब ये हुए 6 पदक आए थे इंडिया के, जिसमें 4 पदक हरियाणा ने जीते। एशियन खेल्स हों, कॉमनवेल्थ गेम्स हों, ओलंपिक्स हों, हरियाणा की पदक संख्या 30 से 35% रही है और ये केवल युवाओं के कारण संभव हुआ है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लेकिन इन पंक्तियों के साथ कि युवाओं के लिए हम वो दरिया हैं जो चट्टान से टक्कर लेकर ढूंढ लेते हैं नई राह, पलट नहीं जाते और अपनी राह बना जाते हैं। तो इसके साथ कि आप लोग के हाथ में देश का भविष्य है, आप अपने हक की लड़ाई लड़ें। आप जहां भी कहीं लगे कि आपके हक के साथ अन्याय हो रहा है, दमन हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो आपको अपनी आवाज बुलंद कर देनी है। कोई मजाल नहीं कि भ्रष्टाचार को हम नहीं मिटा सकते। यदि हर युवा 5 युवा भी एक शहर में ऐसे हो जाएं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ स्काउटिंग कर सकें और वहां यदि कोई भ्रष्ट व्यक्ति उसके कार्यालय में जाकर के बैठ जाए, तो कोई कारण नहीं दफ्तरों से भ्रष्टाचार खत्म ना हो। इन्हीं शब्दों के साथ कि आप में देश का विश्वास है, लोग आपसे आशा करते हैं आगे वाले सुनहरे भारत की, सुंदर भारत की, शिक्षित भारत की, सुसंस्कृत भारत की, कि तकाजा है दिन का कि तूफान से जूझो, कहां तक चलोगे किनारे किनारे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान लेता हूं। धन्यवाद। Thank you so much, sir. Now this is what I've always wondered, ki how do teachers, manage to give long, meaningful speeches? This all comes with experience. So we are here to gain these experiences, and we're going to start off with our sessions. And एक चीज पूछना चाहूंगा, हरियाणा और पंजाब में क्या सिमिलैरिटी है? नहीं, ये सिमिलैरिटी वो है जो हमारे अगले जो फर्स्ट यूथ आइकॉन की टी शर्ट में मेंशन्ड है. When he's going to come on stage, just look onto his t-shirt. And to take you through this session, may I invite Anjana Kashyap, please. All the girls here are definitely going to really envy me. This is Vijender Singh Beniwal, DSP Haryana Police. Height 6 feet 1 inch. Bronze, silver, gold is his forte. But we're not talking about police wala. We're not talking about police wala, gold and silver. Asian Games, Commonwealth Games, Olympics, bronze, silver. He has won from bronze to silver to gold, just back from Glasgow with a silver. Please welcome on stage, Vijender Singh. And yes, and I call upon stage our Chief Synergy Officer, Kalipuri. Please, a big round of applause for her. Because we decided that he cannot be handled by one woman. Okay, we'll wait for a minute to get that done so that everybody has a whistle and you can actually show your happiness through the whistle. Ooh! I like the energy, yeah. Wow, it's superb, huh? The youth ki energy, right? You can feel that thing. Amazing. I want to begin with a teaser. He's wearing a t-shirt for sure, but if you see what he has under the sleeve,
I just saw it. You want to see that? You want to see what's under his sleeve? Okay, let's begin with that. Let's see. Okay, that's No, I couldn't see it properly. Yes. Yes. Now we're talking. Okay, and the whistles are not stopping. But Girls, please control yourself here. boys also control yourself. very hot, यार. बड़ी गर्मी लग रही है मेरे भाई. सच्ची. वो तो हमारे वजह से. Yeah, that's what I'm saying, man. I feel so hot and feel so lucky. Yeah. अब दो के साथ, you know, I'm the only one. Yeah, feel so good. So the session was meant to be just with Anjana, but having met Vijender at coffee, we thought he needed two to control him and to get the best out of him. So over to you, Anjana. Yes. If you see Vijender, he's actually a man who brought boxing to the forefront, the pin-up boy he became. So we want to know from Vijender, what is it? What is it that made you actually the big poster boy for boxing? And I definitely want to share. वो जो लम्हा होता है जब आप देखते हैं तिरंगे को आसमान छूते हुए, पूरा देश नाच करता है. उस एनर्जी के साथ शुरुआत करते हैं और वो पूरा आप कैसे गए ये पोस्टर बॉय और ये ऊपर से नीचे तक? नहीं, पोस्टर बॉय तो मैं बहुत पहले से था, बट लोग पहले जानते नहीं थे मेरे को, लाइक कौन विजेंद्र सिंह है, राइट. लेकिन जब मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की और जब मैंने ओलंपिक मेडल जीता लाइक 2008 बीजिंग में, उससे पहले मैंने कई शूट किए थे, मैगजीन शूट लाइक मैक्सिम मैन हेल्थ और मैन हेल्थ, राइट, पहले किया था मैंने. और एक दो और मैगजीन थी, बट नोबडी नो मी क्या कौन विजेंद्र सिंह है. लेकिन जैसे मैंने ओलंपिक मेडल जीता उसके बाद एवरीबडी नोज कि लाइक हाँ हुज विजेंद्र सिंह. उसके बाद दे आर सेइंग कि हाँ विजेंद्र सिंह ने शूट किया है, पोस्टर बॉय है ये और समथिंग लाइक दैट. तो जब मैं इंडिया में लैंड किया तो उसके बाद मेरे लिए लाइक दुनिया लाइक टोटली चेंज, सब कुछ चेंज हो चुका था. और लाइक पीपल नो मी, रिकग्नाइज मी कि लाइक हाँ कौन विजेंद्र सिंह है. तो आई एम हैप्पी कि दैट वाज द मोमेंट कि लाइक उस टाइम मैं जो मेहनत की थी मैंने वो आई थिंक मेरे को अचीव मिल गया, मेरे को मैंने अचीव किया. तो आई एम हैप्पी. कल आप कह रहे थे रहेंगे दोनों तरफ. नहीं आप कह रहे थे कि आप पहले भी ओलंपिक मेडल जीतने से पहले भी आप विलेज के या अपने गांव के अपने टाउन के पोस्टर बॉय थे. जरा बताइए वो वाली बात बताइए. अभी मैं लेके तो जा नहीं सकता आपको वहाँ पे, यू नो, बिकॉज वो बहुत दूर है यहाँ से. और जब हम जाएंगे तो फिर वो लोग मेरे पीछे आएंगे, फिर आपको कोई नहीं देखेगा वहाँ पे. तो आई डोंट थिंक सो कि बिकॉज मेरी जो टेंशन है वो फिर यू नो डाइवर्ट हो जाएगी, बिकॉज नाउ आई फोकस ऑन यू राइट नाउ. फोकस ऑन मी राइट नाउ. अच्छा, क्या करती थी लड़कियाँ? बुरा नहीं मान रही इसलिए दिख रहा है. He wants to dance, I guess. लड़कियां बल्ले बल्ले करती करना थी. पड़ता है ना. आप जब जाते थे अपने घर के पास से तो लड़कियां बल्ले बल्ले करती थी. नहीं, वो हरियाणा है तो वहाँ बल्ले बल्ले नहीं चलता. क्या चलता है? बताइए क्या चलता है? I don't know that. मैं अगर मैं उनकी तरफ ध्यान देता तो आई डोंट थिंक सो कि जब मेरे को ओलंपिक मेडल मिलता, राइट, तब मैं चुपचाप कहते फोकस होके जाता था. फोकस होके वापस तो लड़कियां यहाँ वहाँ मरती रहती थी और आप बॉक्सिंग में फोकस रहते थे. ऐसा कुछ नहीं है. ऐसा कुछ नहीं है. अच्छा, जो बाहर की लड़कियां हैं जब आप ओलंपिक्स के लिए जाते हैं, CWG के लिए जाते हैं, वो भी आप पे मरती हैं या ये सिर्फ इंडियन गर्ल्स हैं? नहीं, मैं हैप्पी विद द इंडियंस यार. इंडियन मेरे को बहुत अच्छी लगती है, बाहर की नीचे. अच्छा, तुम लोग बताओ, लाइक तुम्हें बाहर के लड़के पसंद है या फिर या इंडिया के? बिल्कुल इंडियन. आपके बगल में क्या बोलूंगी? अब आप सामने बैठे हो तो मैं क्या बोल सकती हूँ. और वो भी स्लीव्स उठा के. थैंक यू. बट कभी किसी लड़की ने एक्चुअली मेड अ पास एट यू, कुछ ऐसा लगा, मतलब हम सिर्फ गांव की बात नहीं कर रहे, अभी भी जब आप खेलने विदेश जाते हैं, कभी किसी लड़की ने कुछ इशारों में कुछ बता दीजिए. इशारों में देने वाले. अरे कंपनी दे यार में तो लड़की साथ में गाएगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना. और अदर वी कैन हैव हिम dance for a minute because he's been a part of Bollywood.
He's recently... We play the song. Sanjeev, can we play the song from his film Pagli? And can we have, Great. for his comfort level and some feel on stage, can we have one or two girls on stage? नहीं लड़के भी आ सकते हैं, don't worry, come. वो कह रहे हैं लड़कियां जितनी मर्जी आ सकती हैं. डुकेगे. चोरी चोरा चोरी पार्टी में. चोरा चोरी. बाकी लोग खड़े होकर डांस कर सकते हैं. ऑन योर सीट, कम ऑन. चोरा चोरी पार्टी में. Come on, this is Punjab. No one can sit here. Please, everybody. All right, this is what you call is energy. Thank you so much. Thank you so much. अभी और भी गानों पे नचाना है, so we'll give him a little comfort. A big round of applause, ladies and gentlemen. Wow. बट वो इतनी लाइक क्राउड था ना, जो प्रॉपर स्टेप थे वो आई नो दैट कि लाइक कौन से स्टेप है, बट वो कर नहीं सकता बिकॉज जो कोरियोग्राफर ने सिखाया था आई नो दैम लाइक क्या था स्टेप. अच्छा, कोरियोग्राफर ने may have taught you dance steps, but what about the fight master? Like, did they have to teach you things, or did you teach them a few things? बच्चे अब तो मेरे को लाइक 13-14 साल हो गए बॉक्सिंग करते हुए, तो आई टीच देम लाइक हाँ हाउ टू बॉक्स. तो ऑब्वियसली अभी किसी लड़की को प्रोडक्शन चाहिए या कुछ भी चाहिए रिलेटेड टू बॉक्सिंग, तो आई कैन टीच देम, राइट. Were the co-stars and extras a little bit worried about doing fight scenes with you? एक मुक्का पड़ गया गलती से तो. एक सीन था जो मूवी का पगली में आपने देखा होगा, लाइक तू जानता नहीं मेरा बाप कौन है, तो फिर जिमी पाजी जो भी आई थिंक नेक्स्ट सेशन में आएंगे वो यहाँ पे, तो उसके बाद जो सीन था वो बहुत फाइटिंग सीन था. फिर वो लाइक आपने देखा मूवी में वो थप्पड़ मारते हैं, और जैसे ही फिर मैं उनकी बैंड बजाता हूँ उसमें थोड़ी सी मूवी में, तो उस टाइम पे लाइक मैं भी वरी था. ऑब्वियसली मेरे को मालूम था कि कहाँ हिट करना है, आई नो बिकॉज आई एम बॉक्सर, और जिमी पाजी को भी मालूम था कि लाइक हाँ भैया बॉक्सिंग करता है. बट वो फाइनली ले दे के हमने सीन कर लिया वो 5-6 टेक के बाद, और जब कई बार पंच जब साइड से मारता तो मेरा लाइक सड़क के ऊपर लगते थे, तो काफ़ी इंजरी हुई थी मेरे को उस सीन में. बट ऑल बिकॉज ऑफ जिमी पाजी हमने बहुत अच्छा सीन किया था वो. अब ये मारधाड़ की बहुत बात हो गई है, तो आप ऑडियंस में से विजेंद्र इज गोइंग टू choose any girl, and let's see, because he wants to be an actor and he's done Pagli, how will he be a romantic actor? शाहरुख खान. He has to propose. He has to propose to the girl. Okay? स्वयंवधू, स्वयंवधू. आप I can propose both of you, right? I can propose. Both you, of right? you? Yeah, why not? अच्छा, रिंग लेकर आए हो कि नहीं? किसका है ये तुमको इंतजार में होना, एक बार में. शाहरुख खान का जो फेवरेट है वो एक सिग्नेचर स्टेप है. हम बड़ी कॉपी करते थे उसकी, बट हार्डली हम मैनेज कर पाते थे. And we have also heard you're a big fan of Akshay Kumar as well. जी हाँ, अक्षय कुमार सर कहते हैं कि वो एक खिलाड़ी कुमार हैं, एक स्पोर्ट्स पर्सन है. उनके साथ ट्रेनिंग बहुत की है मैंने. वो जब मैं फर्स्ट टाइम उनसे मिला तो दैट टाइम के मैं लाइक फ़ोन आया मेरे पास, हाँ जी हाँ दिस इज अक्षय कुमार. मैं कहा रहने दे, मैं क्यों दिमाग खाइए ना, मैं फ़ोन रख दे. मैं कहा तो बाद में दोबारा से फिर फ़ोन आया, अल्लाह सच्ची अक्षय कुमार बोल रहा है. फिर मैं कहा चल ठीक है भाई, मैं ठीक है हो ठीक हो, हाँ अल्लाह चल बॉम्बे में मिलते हैं. मैं मस्त ठीक है, मैं पहुँच गया बॉम्बे चला गया. तो उसके बाद उन्होंने कहा हाँ कब मिले, चल कल सुबह मिलते हैं 5:30 में. हैं इतनी जल्दी उठ जाओगे आप? लाहौर क्या इतनी जल्दी उठता हूँ मैं. फिर हम उठे फिर जैसे ट्रेनिंग की और सारी चीज़ें. बट ही इज लाइक टोटली इनटू फिटनेस. बहुत हेक्टिक शेड्यूल रहता है. हर एक सुपरस्टार का लाइक, चाहे सलमान हो, चाहे शाहरुख हो, चाहे अक्षय कुमार हो, तो आज क्या टोटली फिट है, बहुत फिट है. तो आज
हम बात कर रहे थे कि आज आप सुबह हॉट सीट हो गई है यार, ये बहुत हॉट हो गई है 2 लड़कियों की वजह से। नहीं, ये है हॉट सीट, ये है ये। नहीं बीच में है ना। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि आज आप सुबह पटियाला से आए and you took a car at about 7 o'clock, but you woke up before that and you had a workout, right? So how were you able to manage the schedule of Bollywood and boxing together? Because one of the things that happened was people said, oh, अब तो वो Bollywood चले गया है, forget the medals, boxing में कुछ नहीं होने वाला. So can you explain how do you manage the schedule? Everybody asked me like movies क्यों कर रहा है यार, मैंने कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी साइन किया कि मैं सिर्फ बॉक्सिंग करूंगा, राइट? तो इट्स अ ट्रू थिंग, व्हाई नॉट यार? अगर यूथ है इनसे पूछो, इफ दे गेट द चांस टू वर्क इन बॉलीवुड, ऑब्वियसली कौन मना करेगा यार, है ना? तो सब लोग कहें हाँ यार, हाँ मेरे को भी चांस मिलना चाहिए, मेरे को भी चांस मिलना चाहिए। ये लोग वो बोलते हैं जिनको चांस नहीं मिलता। आई डोंट थिंक सो, या आई डोंट नो क्यों जेलिस होते हैं। तो व्हाई नॉट यार? अगर दूसरा एक, मैं कोई बुरा काम नहीं करा बॉलीवुड में जाके, एक अच्छी मूवी बनाई है, लोगों ने पसंद आई, म्यूजिक बहुत अच्छा था, वो काम किया, उसके बाद वापस आया, उसके बाद CWG का मेडल जीता, और ठीक है अभी दोनों बैलेंस चल रहा है अभी तक राइट नाउ। आपको जब आप बॉलीवुड कर रहे थे एंड योर क्रिटिक्स वर सेइंग दिस, आपको कुछ वरी थी कि अगर मैं ना कर पाऊं? जी मैं परवाह करता नहीं किसी की, अगर परवाह करता तो यहाँ तक नहीं पहुँचता। बिकॉज अच्छा लोग तुम्हारे बारे में बोल रहे हैं, बिकॉज अगर उन्होंने बोलना बंद कर दिया तब दैट टाइम आई थिंक मेरे को प्रॉब्लम हो गई। अभी अच्छी बात है मेरे बारे में बकवास करें, लिख रहे हैं कुछ ना कुछ, तो अच्छी बात है, दैट्स गुड फॉर मी। ये फिलॉसफी बहुत सही है, बट अभी चांस खत्म नहीं हुआ है। वी विल कम बैक टू हिम एंड वील टेल हिम टू प्रपोज अ गर्ल इन दिस ऑडियंस, ओके? सो आई हैव नॉट फॉरगॉटन दैट, बट now let's play a romantic number for him, and because he wants to be a romantic actor, I really want to put him to test. Let's see, Akshay Kumar का एक romantic गाना बजाते हैं संजीव, and let's see how you perform on that song. अक्षय कुमार का कोई रोमांटिक गाना है? I will ask. Raise your hands. लड़के भी हैं बाजी, लड़के भी हैं। So बॉलीवुड में आपको सबसे टफ क्या लगा? What was the big thing that you had to overcome in Bollywood? Was it? नहीं डांस तो यार इतना हाई जी, बट बिकॉज इट्स सेम लाइक फुटवर्क, लाइक बॉक्सिंग में जो फुटवर्क है वैसा ही यहाँ पे फुटवर्क चलता है, लाइक सेम थिंग, यू नो। बट कंफ्यूज तो नहीं हो जाओगे आप CWG में कभी कोई बॉक्सिंग नहीं, जो कोरियोग्राफर दे नो में कहा विद जो बॉक्सर है तो थोड़ा ध्यान से दूर रह के हाँ हाँ ये स्टेप कर ले, ठीक है। बाकी जो बिकॉज एडिट बहुत होता है आजकल, यू नो, कैमरा में बॉलीवुड, सो वो मिल जाता है। लेकिन मेरे लिए जो सबसे पहले डिफिकल्ट पार्ट था जब मैं फर्स्ट टाइम मैंने लेह लद्दाख में शूट किया था, तो आई डोंट नो कि लाइक लाइट कहाँ है, कैमरा कहाँ है, कहाँ फेसिंग करनी है, कहाँ डायलॉग स्टार्ट करना। सो दैट वाज द टाइम, बिकॉज मैंने कोई एक्टिंग क्लास नहीं की थी, मैं जस्ट साइन किया मूवी और डायरेक्ट सेट के ऊपर पहुंच गया, चलो शूट करते हैं विद दैट सेट। और लेह लद्दाख का हमने शेड्यूल कंप्लीट किया था, वहाँ किया। और हाँ शुरू में बहुत डिफिकल्टी थी बिकॉज मेरे को नहीं मालूम था क्या करना क्या, लेकिन जो डायरेक्टर था उसने मेरे को बताया कि तू मस्ती कर, उसके बाद हम अपने आप कवर करेंगे। भाई सब का Okay, yeah, Jimmy Shergill is here and we'll have him for the next. जिमी भाई सत श्री अकाल जी, ठीक है भाई। Okay. तो जिमी भाई भी हमारी मूवी में थे फगली में, आपने पता और ही आपने है। धो दिया था उनको? नहीं, उन्होंने मेरे को थप्पड़ मारा था पहले। He is a very brave man, आपको थप्पड़ मारा, अगर आपको गुस्सा आ गया आपने एक बॉक्स भी लगा देना था। सुपर कोप इन द मूवी ना, तब चौटाला जी तो आज नहीं है, लेकिन देखो अभी कह रहा हूँ कंपटीशन। सॉरी, सो कैरी ऑन। अपन दोनों करते हैं, छोड़ना उनकी। नहीं तो आपके डायरेक्टर ने आपको हेल्प करी टू अंडरस्टैंड डायलॉग, लाइट, कैमरा, एवरीथिंग। और जब उसके बाद फिर मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चला गया था, जैसे ही मैं आया तो हम एक शो कर रहे थे जिसका नाम था गुड इन बैड, जो काफी उसमें प्रॉब्लम हुई थी, जिसके लिरिक्स में भी था कुछ लाइक गुड इन बैड बेबी गुड इन बैड।
तो मैं जैसे वर्ल्ड चैंपियनशिप से आया, जैसे मैंने आज लैंड किया, लाइक कल हम शूट कर रहे हैं दिल्ली में, और दिल्ली की ठंड थी वहाँ पे, और सारे कपड़े उतरवा के स्विमिंग पूल में डाल दिया मेरे को। उसके बाद शुरू किया, चलो गुड इन बैड करो, अभी सॉन्ग शुरू कर दिया। सर मैंने कोई रिहर्सल नहीं की, कुछ मेरे को डांस स्टेप नहीं मालूम थे, तो उसमें मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुई थी उस शूट में जो दिल्ली में किया था हमने। तो आपने फिर कैसे, आपको फिर किसने हमने 2 गरम दिन का करा? टाइम लिया, हमने एक शूट का 1 दिन का काम था, लेकिन हमने 2 दिन में फिनिश किया उसको, टेक आफ्टर टेक टेक आफ्टर आफ्टर। अब बाद में रिहर्सल कर करके हम सीख गया उस चीज को। अभी तो टेक यहाँ भी होने वाला है, अभी तो there's going to be a girl that you're going to propose, but बात करेंगे। But coming on a serious topic, because Vijayendra, sports is a serious business. एक इंटरव्यू में आपने कहा था, I fail to understand government bias. Why perks like free land is given only to cricketers? Come on, we boxers aren't that bad. We are smart, intelligent, and decent looking too. What is that pain inside you? क्या दर्द है वो? ट्रू, बट अभी तो हरियाणा गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट किया। लाइक हरियाणा गवर्नमेंट ने मेरे को 3 एकड़ लैंड दी है, लाइक मेरे को सुशील को 5 एकड़ और लाइक बॉक्सिंग को 3 एकड़ दी है, सोनीपत में दी है। तो हरियाणा गवर्नमेंट अभी सपोर्ट कर रही है, और आई थिंक हरियाणा गवर्नमेंट ही है जो जिसकी वजह से जितना प्राइज मनी अभी हमारे को मिला है दूसरे किसी स्टेट में दिया हो। और अभी मैं बताऊंगा, लाइक हम स्कॉटलैंड में थे जब फाइट हो रही थी, हमारी क्वार्टर फाइनल फाइट थी, एक दूसरी स्टेट का प्लेयर था, उसका नाम नहीं बताऊंगा मैं। तो जब हम दोनों लाइक वार्म अप करते बिफोर द फाइट, तब बातें होती है भाई, लाइक हाँ क्या हो रहा है, अगर जीत गया तो मेडल, अगर नहीं जीतते तो कुछ नहीं मिलता हमारे को। तो तब तक हरियाणा गवर्नमेंट ने लाइक 1 करोड़ और 50 लाख और आई थिंक 25 लाख का अनाउंसमेंट कर दिया था। तो वही सही कि हाँ मेडल आ गया था, 25 लाख पूरे हो जाएंगे तुम्हारे, ये वो। तो भैया मैं कहा तुम्हारा ले, हमारा गवर्नमेंट तो कुछ देती नहीं, हम तो सेम लाए था। तो वो क्वार्टर फाइनल में हार गया था, लेकिन मैं जीत गया था। तो एक मैं मानता हूँ कि एक स्पोर्ट मिलता है एक एथलीट को, उसके जो उसका मोरल होता है वो मोटिवेट होता है कि हाँ यार मेरे कोई प्राइज में नहीं मिलेगा। तो मैं मानता हूँ कि हरियाणा से दूसरे स्टेट को भी सीखना चाहिए कि अगर स्पोर्ट्स पर्सन के लिए अगर वो प्राइज में नहीं बढ़ाएं या उतना ही सेम करें, तो आई थिंक उनको भी एक मोटिवेशन मिलेगा और अच्छा परफॉर्म करेंगे वो इंटरनेशनल रिंग पर। अच्छा, आपका लास्ट क्वेश्चन, आई वांट टू नो, सिंस यू डन बॉक्सिंग एंड यू हैड योर फर्स्ट रिलीज इन बॉलीवुड नाउ, व्हाट इज अ हाई पॉइंट फॉर यू? इज इट द ओलंपिक medal, or is it the release of your first film? Has it shifted? What is the one high point in your life so far? Olympic medal. I love Olympic medal. All because of here I am because of Olympic medal. Because that was the highest point in my life. So that's still the best moment of your life so far. True. And boxing remains your first love. Of course. What about all the girls? Girls, यार मैं कर लूँगा, मैं don't worry. मैं मैनेज कर लूँगा। The girls are waiting. The last thing, the girls are waiting. Okay. Rewind it up with that. कौन सा, लाइक शाहरुख खान और लाइक अक्षय कुमार विद सलमान खान, कौन सा स्टाइल? Whatever. पहले तो अपनी करीना कपूर चुनो ना, Style में. और जिमी बाजी स्टाइल। Yes. वो सोचे कितनों को चुनो यार। हाँ. हरियाणवी में प्रपोज कर सकते हो आप? That will be really good. Do that. Do that. Propose in Unique. हरियाणवी. अच्छा क्या बोलते हैं? हाँ अच्छा यार, हाँ that's good. यार मैं तो उठा के ले जाता, मैं थोड़ी प्रपोज कर, चलो चलो यार चलते हैं, अभी बहुत हो गया। We'll let you off. थैंक यू सो मच। पर अगर हरियाणवी में प्रपोज करना होता तो एक लाइन क्या होती? चलिए इस पे वाइंड अप करेंगे हरियाणवी में। बहुत दिन हो गए सच्ची, मूवी में ऐसा बात किस- की थी मैंने। ऐरा कह रहे हैं। ओके यार हेल्प करो, लड़के लोग कहाँ गए तुम लोग? हाँ 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 हम भी आ गए, वो आ गए। बोले भाई चोरी ब्याह करेगी मुझसे? हाँ ये प्यार कर रहे हैं या गुस्सा कर रहे हैं? नहीं वही तो है, एक लैंग्वेज वैसी हरियाणा की लोग, आपको लगता है कि लाइक गुस्सा कर रहे हैं, बट वो लड़की समझ जाएगी कैसे बात कर रहा है ना। Thank you so much. Big round of applause, please. Thank you. And we have started off the session with a punch, and I would request Miss Kalipuri to give a token of appreciation to Vijender Singh. सीटियां रुकनी नहीं चाहिए यार। Great expectations from our boxer Vijender Singh. And as we have started off the event with a big pishum punch, we're going to continue with the same punch, and we're going to start off with the next session.
which defines how I made it. And it's about someone who's going to come on stage और उसके बाद लड़कियां कहेंगी, oh my God, I love you! And to take you through this session, I have my colleague, Apar Shakti Khurana, who works with me in OA 104.8 FM, Delhi. What's up, Chandigarh? Well, you know what? Coming back to Apna Pind, Chandigarh, it always feels great. Chandigarh का ही मुंडा है क्या जी मैं? So नाम थोड़ा अजीब है, घबराने की जरूरत नहीं है. अपार शक्ति, ये किसी इंसान का नाम लगता नहीं, किसी आटे या देसी घी के ब्रांड का नाम लगता है. So anyone else in the audience has a unusual name? किसी का थोड़ा हट के ऐसा नाम हो, कुछ ऐसा? Yeah. Can I have a mic for the audience throughout the session? I want to involve. Can I give one of these mics? Is that okay? Can I give one of these mics? Yeah. So this mic will always be in the audience. Yeah, okay. Please give a mic in the audience. Throughout the session, we'll have everyone talking to Jimmy Baji. Yeah? Okay, yeah, what's it? Yeah? Yeah? Okay. Shout out loud, yeah? What's your name? चुक. तो क्या चुकते हो पूरा दिन खाते रहते हो चुक? What do your friends call you? Okay, Chuki it is. You know what? अब नाम की बात हो ही चुकी है. So somebody who has really made it big, somebody who has really made a name for himself, I'm going to call him on the stage. Before that, I want everyone to sing with me. Yeah, are you guys going to follow? ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਗੱਡੀ ਮੋੜਾਂਗੇ ਕਵਾਂਗੇ ਰਾ ਪਾਸੀ ਮਿਕਸ਼ਰ The city is not new to you. I know you're not new to the city. Chandigarh di galiyan, Punjabi movies, you have seen it all. And I'm sure the audience, ये तो पाजी पहले ही आपके fan हैं. So tell me something. नामों की बात हो रही थी तो Jimmy Shergill, it's quite a heavy name, Shergill. But why Jimmy? It's like a nickname. ऐसा क्यों? सब तो पहले तो जी सत श्री अकाल है सारे नू. Good morning. Jimmy is actually my nickname. And it was weird. I mean, when we were shooting for Matches J, to see Matches dekhonge, my name on the screen still comes as Jasjeet Shergill. But then in the trade, because my nickname was Jimmy, everybody started calling me Jimmy. And in the trade magazines also, it started coming as Jimmy Shergill. So when Mohabbatein was releasing, is when I was talking to Aditya Chopra and I told him the problem. So he said, no, I think because the trade has been writing Jimmy Shergill, I think you should go as Jimmy Shergill because otherwise there'll be a lot of confusion. Because before that only Matches had Jasjeet Shergill. So he said the people forget. So that's how it actually came into play. Nice. So Baji, talking about Matches, and you started with Gulzar Saab, what a dream star it is. And people who started with you, be it Jugal Hansraj and other guys, not really in the forefront. This long journey which we're going to talk about, that how you made it big, and I'm sure a lot of people are going to learn from it, the entire youth who is there. ये जो लंबी innings खेलनी पड़ती है, what do you think उसका एक मात्र वो क्या है? How do you, define the entire journey? Is it hard work? Is it passion? Is it everything together? Is it? No, hard work, passion, patience, all these things are always there, but you got to keep the stress on, yeah. You have to keep the stress on. Yeah, you have to keep the stress on. Till, all of a sudden if you say, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या होगा, क्या नहीं होगा, बस जहाँ वो हो गया, कहानी खत्म. तो वो stress on रखो, मैं तो stress पे ही चल रहा हूँ. लोग बोलते हैं तुम वैसे ही लगते हो जैसे माचिस के टाइम में लगते थे. मैंने कहा वो स्ट्रेस लेना शुरू कर दो, आप भी वैसे ही लगोगे पूरी उम्र. So I think that's the thing. And I think when you're talking about Jugal and everybody, I think Jugal was always, when we were shooting for Mohabbatein also, he wanted to direct films, he wanted to make some very interesting
kind of cinema. He wanted to do animation films and stuff like that. So he's following his dream. Uday is heading Yashraj studios in Hollywood. So everyone is, yeah, I mean, doing what they want to do. And Uday always was selective in terms of his films. He just wanted to act in 1 or 2 films and the big ones and stuff like that. And he's doing just that. Okay. You just spoke about Mohabbatein. I'm sure all the people present here want that life. वो हल्का सा हर एक को मोहब्बतें मूवी भी पसंद है and मोहब्बतें वाली लाइफ भी पसंद है. So when was your first girlfriend? School, college, कब पहली girlfriend कब बनी? मेरी पहली गर्लफ्रेंड की कहानी तो बहुत अजीब है. I was, I think, in the 4th standard. Whoa! Paji, this is what the youth is there for. पहली girlfriend कैसे बनाई जाती है? No need to चौथी क्लास में क्या किया? No need to get so excited. It was a one-sided thing. And years later, obviously I was a stud. I had a juda at that time, and I used to love this girl. Years later, I got to know that there is something called infatuation. तो मुझे शायद वही हो गया था. But then for years I kept thinking about her. Like, I changed my school, I went somewhere else, and these days things are very easy. Facebook and all that, whatever. तो मैं जिस ज़माने की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे तो उस वक्त telephones ही बहुत बड़ी बात होती थी. So then lost in touch, but God bless her wherever she is, and I still remember her, and that's it. And talking about the first relationship or girls, tell me something. A lot of people, especially in the north, I think sometimes, especially boys, lack that chivalry in the head. क्या लगता है आपको? Because it's a youth summit, how do you get that straight in their head? आप as a youth icon, क्या बोलेंगे उनको? What do you want to say that? How should they? Where should they start from to respect women? We'll start from where I left. I think उसके बाद बहुत सारी infatuations हुई, and the first girl I fell in love with, I married her. Okay. So in one line it means कि पहली गर्लफ्रेंड से शादी कर लो. ऐसा है क्या? Just serious girlfriend. यार वो आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है. आप मेरे हिसाब से मत जाना, वरना बहुत जूतियां पड़ेंगी. So हर इंसान की अपनी लाइफ होती है, अपनी सिचुएशन होती है. आप अपनी सिचुएशन को देख के अगर आपका दिल जरा सा भी कह रहा है कि नहीं यार, this girl is not the right girl for me, or this boy is not the right boy for me, I think you should follow your heart and say no. Just don't go for that person out of desperation. Just don't go कि मेरे पास गर्लफ्रेंड नहीं है तो चलो ये भी चलेगी, या मेरे पास बॉयफ्रेंड नहीं है चलो ये भी चलेगा. ऐसा नहीं होना चाहिए. Okay, let's come to movies now. From Hindi movies to Punjabi movies, from marches and to Dharti, I think you have rather changed the face of Punjabi film industry. Do you take that credit full-heartedly, or do you think that other people were also involved? See, my journey in Punjabi film started with Manji. Manmohan Singh ji was the cinematographer, the cameraman for Marches, Mohabbatein. And then he decided that he wanted to start directing Punjabi films, and he made a couple of big Punjabi films. And then once at one of the functions he met me and he told me that I've got a story, I'll narrate it to you, but first I want to ask you, would you be willing to do a Punjabi film? Because at that point of time you wouldn't say that any of the people who were acting in Bollywood films would have gone in for any of the regional films. So I said, Manji, for you I'll do anything, and that's how Yaran Al Bahara happened. And that was my first Punjabi film, and I enjoyed shooting for it so much that I decided and I said that every year I'll do one good Punjabi film. And then I did Mannat and Tera Mera Ki Rishta, and then finally there was Munde UK, their first one, and then finally there was Mail Kara De Rabba, which kind of just... Okay, and you are the only person who's been able to rope in big stars like Neha Dhupe and all, and bring them to Punjabi film industry. Where do you see our industry going 10 years down the line? It's very difficult to say right now. I mean, you go through phases, and I think this is a phase wherein people feel that, you know, Punjabi movies are making a lot of money, let's produce a Punjabi film. So you have randomly a lot of people coming up and just making films
which is why at the end of the year, people are saying none of the films are working, none of these things, and they're coming with a set mind that this is the genre we want to make. That's the reason why you'll see all the films are almost the same kind of stuff is happening. So somewhere somebody has to come up with something new, which we tried once with Dharti, and we, to a great extent, were successful in terms of the film. And it was the only Punjabi film in that year to have gone. They were celebrating 100 years of Indian cinema. It was the only Punjabi film to have been selected for that. It was a great sense of pride for us. And then after that also, I want to do something different, but what do? They don't come up with something different. They don't come up with something interesting that, which when I read comments on Facebook and stuff, like people saying that, Paji, we want something different. We want something like Tarti, like you came up at that point of time, something different. Because they're used to watching me in films like a Sahib Biwi Gangster or Special Chabbis or something where there are very interesting and intense roles. So they want to see more like that in Punjabi, and so now that all depends now when somebody comes up with something like that. Otherwise, till then we'll have to keep living up to our promise that I'll do one Punjabi film. I have to choose the best of whatever is this thing. Manji is in Alun, last mein kiti, aage munde UK de. So let's hope that people come up with something interesting now. Sure, Baji. Before we talk about the Hindi cinema, last question for the from Punjabi film industry. Being one of the flag bearers of the Punjabi cinema, I just want to ask you that why a lot of singers are there who are actors? Are we running short of good actors in Punjabi theatre? Are we running short of good actors in general in Punjab? Most of them are singers who turn into actors. No, I think all of them are doing a good job, but the main thing is that the audiences likes to watch them. So why would you want them to sit at home? I mean, the people want to watch them. And so they're doing good work. I mean, in terms of if 5 films are releasing, I'm sure 2 of them are doing really well. So that means the audiences wants to watch them, and why not? Sure. And now about Hindi film industry, there has been a paradigm shift. पहले इतनी ज़्यादा meaningful cinema इतना नहीं होता था. Now with movies like Sahib Biwi Gangster, Special Chabbis, and you being a part of that gang, that camp, Neeraj Pandey, Tigmanshu Dhulia, do you miss those loud Govinda movies, or do you think that this has happened for good, for the betterment of the industry? All these years, I feel that I would never have been able to do those loud films. Ab dil karta hai ki kare thodi loud. So I would love to do a film wherein somebody gives me a loud character to play. I mean, I would love to do it. Okay. So I think the tempo has become very serious. Let's kind of involve the audience. And is there anyone who wants to ask somebody? Just anyone who wants to ask Jimmy Shergill about anything? Okay, there are a lot of people. I'm so sorry. Okay, can we have a mic there, or should she just say? Yeah, there's a mic there. Please give her the mic. We all know that. Don't say that I have a crush on Jimmy Shergill. I was about to start with that. We all know that. Sir, how you proposed to your wife? I mean, when she was your girlfriend, how you proposed to her? Yeah, I told you this is the youth world. Talk about relationships, girlfriends, boyfriends, wife and all. No, ours was, I think, a very weird kind of a situation. She was actually trying to set me up with one of her cousins, her friends. And I think she said something while this thing and I laughed. I don't think I've ever laughed like that for my entire lifetime. And I think that's where it all started. I think she thought that this guy laughed at me. I'm going to make sure I marry him. And I think that's how it happened. Thank you. Yeah, there's another girl there. Then we come to the boys. I can see a boy there. Yeah. First of all, hi Jimmy Shergill. Definitely you have been working in the Indian Bollywood industry as well as the Punjabi industry, and you have done a variety of roles including intense roles, romantics and actions and everything included.
So we have heard actors saying that to be a successful actor, you need to be versatile, you need to do different sort of roles. But definitely there must be something which you love doing like nothing else. Which is that genre? Which is your favorite genre? I love to do light-hearted films. Yes. मेरे को मिलती सब intense हैं. मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरे को अगर कोई कॉमेडी लाके दे, कोई बोले कि कोई एक light-hearted film. Your upcoming film, which has just released, is a light-hearted film. I had a great time shooting for that film. Even the first one, when we made it, I think we had a great time. But so I say that I always love light-hearted films because you don't take anything back. Enjoy karke, you get back home and it's this thing. But intense films take away a lot from you. At least for those many days that you're shooting for. I know that when I was shooting for those 40 days for Sahib Bibi Gangster Part 2, I mean, it kind of always takes a lot out of you emotionally to do those kind of films. Thank you. Okay. कोई क्रिएटिव टाइप इंसान है, कुछ बोलना चाहते हो, कोई शेर व शायरी, कोई पंजाब, कोई बोली, या पंजाब चंडीगढ़ में आए हैं, that can happen, come on. Yeah, okay. टोरी बाजी तुसी इथे आ जाओ प्लीज. हाँ. Okay, who is it? कौन बोली पाएगा? Yeah, okay. Please give us the mic, yeah. डेरा 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 मुंडे आवे कोट वालिया, मुंडे आवे कोट वालिया, तेरे वर्गा परोना मेरा कद कद ललक पवे, कद कद ललक पवे, नाले दुख दा काल जा मेरा आंदे करवे नू वर्त रखूंगी तेरा आंदे करवे नू. Baji, come, Baji, come. आओ भाई. Whoa. डेरा डेरा वे मुंडे आवे कोट वालिया, मुंडे आवे कोट वालिया, तेरे वर्गा परोना मेरा विचो विचो ललक पवे, नाले दुख दा काल जा मेरा आंदे करवे जी बारी बरसी खड़न गया सी, खट के ले आंदे नलके, बारी बरसी खड़न गया सी, खट के ले आंदे नलके. मैं जी भंगड़ा तां सजदा ज नचन सारे रल के चकदे फटे मारे. थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच. हाँ, so yeah, now I can see. Yes, Veerji, tell me, what do you want to say? Take the mic, please take the mic, buddy. So please tell us about your struggle before Marches, how you got the entry into Bollywood. Struggle तो जी आज तक चल रही है, but Marches being my first film, I think when I got the film, a lot of people told me कि तू बॉम्बे गए हैं, ते उत्थे जाके तू एक छोटा जा रोल कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? But I think within my heart of hearts, I knew that I've got somebody like a Gulzar Saab with whom I'm doing my first film. I have never seen a film being shot in my life. I had never seen a movie camera in my life. So for me to get that kind of a break, I think it was a big thing. For about 2-3 years, I was just in Bombay doing my acting classes. Acting classes साडियां 6 महीने तो लेके 1 साल दियां सीगियां, मैं 3 साल लाते उत्थे, क्योंकि मेरे कोल होर करन नूं कुछ नहीं सीगा. So I think it's all a matter of time and patience here, and what you believe in. I believed that I was doing the right thing, and that's all. By talking about marches, ਜਿਹੜੀ marches ਦੀ ਤਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਜੀ, ਬਹੁਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਿਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ना. There are a lot of people who do that to Punjabi film industry as well. कोई topic पे उनको बस वो चाहिए होता है before a movie is getting released. Not only in Punjabi film industry, in Hindi film industry as well. So be it poster, be it an item number, be it a dialogue in the movie. Have you ever suffered because of, or your film has ever suffered because of such gimmicks? No, I think I produced a few films in the middle. ਹੁਣ मैं बंद करता produce करना. So the thing was that any film that you were making, sometimes किसी dialogue no लेके there was a problem, and some people would file cases and then they would not. Is that why you stopped making movies?
हाँ जी, मैं बंद करता सीगा. Now, luckily for us, we've instead of going and finishing it off by apologizing or something like that, we took the legal way, and because maybe we believed in the system, and we went ahead and we fought those cases, and we won, and today we've got the person who actually fought those cases for me, this young advocate from here, from Chandigarh, Kamalveer Kang. He's right here, and he's the man who's fought the cases and he won the cases for us. क्या बात है? What's your name, sir? Kamalveer Singh Kang. So, Kangveer ji, so what I want to say is that it's not, right now, I've stopped making films, so it's got nothing to do with me. But these amendments that have been made now, or these kind of things that were happening, is going to be very good for other people who are producing films or directing films or acting in films and stuff like that, because lots has happened, and rest, I guess he'll be able to tell you more. Mr. Kang, do you want to say something on that? Well, one thing I remember when I was contesting these cases for Jimmy Paji, there was a proposal made in the court and it's part of the record. If he apologizes, this all could be over. So I had a moment to talk to him and I said, what is your... I was ready to apologize, by the way. I was looking for a shortcut. So I said, khatam karo yaar, kaam mein the. Initially he was, but then again, he also thought about the entire industry. He said, if I apologize and finish it today, then there's going to be another case tomorrow. So we have to settle on the principle. So we did take, thereafter we fought the case, and I think we won all of them. And this apologizing incident is part of the judgment today. It's published in the judgment that he refused to apologize and he contested those cases. Whoa. Okay, Baji, before we call Isha on the stage, last... No, I'm asking the last. Yeah. So, She wants to Jimmy and Apar. Yeah. Jimmy, you've been saying that actually you get intense roles to do, and that's not what you always want to do. So, since you have the opportunity here, we're giving you a chance to do a funny role. Please give us an impromptu something, your funny side. Can we see that? There is no funny side to me. So, Haji? Yeah, that's kind of funny. Yeah. That itself is funny. So I think... Have you never played a light-hearted character or, said, no, oh, I've I'd love played to light-hearted characters in my... I've just played it recently in my Punjabi film that just released. It's called Aage Munde UK De. So, yeah, so Can that's we see about a little bit of it? Of Aage Munde UK De, it's in the theatres right now. No, a preview. Can you show us something that you're doing in the film? Any funny situation in the film? See, I'll just say that in the whole film, basically, I'm a fraud UK guy in this one. So all I'm doing in the whole film is jidda kidda, that's it. So guys, Punjabis in UK, they talk like that. What's up, yaar? Ki haal hai, yaar? Vadiya, yaar? That's how they mix Punjabi and English. That accent was something that was taught to me by our colleagues, Rana Ranbir and Kuki Paji, because I don't think anybody does it better than them. So normally वो ऐसे बात करते हैं कि बड़चिंग खाया बड़ी वधिया है, उसकी गर्लफ्रेंड है कि बड़ी hot है यार. That is how they talk. कुछ एक लाइन ऐसे इसी टोन में बोल दो भाजी. तेरी गर्लफ्रेंड बड़ी hot है जिद्दा. Okay, last top three. This is the Parshakti's top three, and then we call somebody on the stage. This is a rapid fire thing, okay? Hindi movies or Punjabi movies? Hindi movies or Punjabi movies? No, for me it will always be both, otherwise I won't be doing them. Okay, Chandigarh or Mumbai? Punjab or Mumbai? To stay? ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ Punjab. Okay, last. One girl in the audience you have a crush on when you see, oh yeah, ये कुड़ी cute लग रही है. अभी किसी ने एंटर करा है. In a healthy way, in a healthy way, in a healthy way. मैं सच्ची दसा तुसी मैंने टाइम ही नहीं दिता कुड़ियां वाल देखने दी. खड़े होके देख लो एक बारी. You can't take Isha's name for sure. Everyone has a crush on her. हाँ चंगी गल है, वो भी आप ले रख ली. Yeah, one girl in the audience you think you can have a crush on. They're all pretty faces, yeah. Chandigarh has beautiful women, yeah. Only one girl. बड़ी गेड़ियां लंदन से मिलते हैं. ऐसे कुछ वो नहीं है. He's already married, yeah. नहीं मैं वो तो फिर मैं दसांगा ना भाजी. Anyone? हाँ जी. किसी ने भी बुला लो, ये अक्खा बंद करके किसी ने बुला लो, सारी सोनियां हैं. Okay, then I think on that note, please get up for Isha Gupta. Whoa!
And I would also like to invite Vijender to give a token of appreciation to Jimmy sir. A small token of appreciation, please. और लड़कियों ने कहा ना कि हमारी आंखों का तो इलाज हो गया, अब लड़के कह रहे हमारी आंखों का क्या? So for boys we have Isha Gupta. Can we have some music as well? And I would like to request Vijender to please give a small token of appreciation to Jimmy sir. Isha is supposed to give it to them? Okay, Vijender is supposed to give both of them. गुरु दक्षिणा दे रहे हैं विजेंद्र. Yeah, all of it together. थोड़ा सा छोटा मोटा स्टेप भी हो जाए तो मजा आ जाए यार. Okay, you know what? थोड़ा सा स्टेप्स हो जाए. Just a second. We'll have another song. पंजाब आए थे पंगड़ा नहीं कीता. You've seen Isha and Imran Khan dancing together on a song. धत्तेरे कि मैं धत्तेरे कि मैं धत्तेरे कि मैं घर नहीं जाना. That is what you're gonna say at the end of the event. ये बोलना धत्तेरे कि मैं घर नहीं जाना. Can you have that song? I want all three of them to jive with it. Here you go. Come on, Jimmy Baji. Come on, Isha. Vijender Baji. Okay, Isha wants a couple of people from the audience to join in. Okay, these two girls and the polka dot. Yeah. Come on, everyone. Tonight. Here telephone से मम्मी डैडी से कमे हो गए मैं नहीं जाना धत्तेरे कि मैं घर नहीं जाना. Jimmy Baji, come on. धत्तेरे कि मैं घर नहीं जाना. Okay. Thank you so much, guys. Thank you so much, Jimmy. Thank you so much, Vijender Baji. Thank you so much. So the next session we have is with Isha Gupta. How I Made It. Yeah. Hi. Can you all hear me? Yeah. So, how she made it. Okay. अरे once and for all खींच के सीटी मार लो. नेचुरल सीटी हो जाए एक बार. नेचुरल वाली सीटी. I was talking about how कि जिम्मी का किस लड़कियों में क्रश है. How many boys have a crush on Isha Gupta suddenly? नहीं एक सेकेंड. असली सीटी कौन मार सकता? ये वाली भी सुननी मुझे. I know ये whistle है. जो असली सीटी मारेगा. Okay, we together. Asli CD together. Okay, let's have a. I think Isha को देख के CD अपने आप बजेगी आपकी. But let's have a little competition है. Give them a mic. कौन सबसे ऊंची CD और लंबी CD मारेगा? Please give him the mic. The guy in the check shirt. No wait. Okay. This guy in. Yeah, the green shirt guy. You know what, bro? Wait. जो जिसके पास माइक है वही सीटी बजाएगा, and you have to do it with the ढोल. Yeah? चलो करो start. ये तो बड़ी गंदी सीटी है बाजी आपकी. I'm not upset with her. आपने ईशा गुप्ता को नहीं, आपने डॉली बिंद्रा को देख लिया. Okay, so the guy in black t-shirt. Yeah. Hello. Yeah. भाई इधर नाल. मार भाई. I think he's the loudest. We'll give it to him. Give it up, boy. What's the name, bro?
Yogesh, Yogesh. Okay. पट गई Thank you. इससे ज्यादा पानी दे दो So, Isha, I think a lot of girls who are sitting here would have that feeling in their heart that this is what I want to look like, this is what I want to do in life. So, being a youth icon, how does it feel? You know, it's as overwhelming as it sounds because there was a time where I've seen actresses sitting like how you all are and coming from a very moderate family. I think, you know, you don't expect anything beyond a certain thing. It's just like, you know, when you come from a certain kind of background, you don't expect for the stars because you only want to expect and you have your aspirations only till where you know that you can reach. You know, now in fact just the other day I was telling my dear friend who's sitting here, Mehak, I said, now I don't think about anything but beyond stars because I'm just like, from nowhere I made it here and I know I'm going to make it further. So I just think we all have it in us. It's just being there at the right place at the right time. Yeah. And talking about Chandigarh, the youth summit is happening in Chandigarh. Have you been here before? Oh yeah, I mean, who hasn't? I mean, I'm from the north. I'm from Delhi, and I think who hasn't been to Chandigarh? It's one of the Have you been to the Gedi route? Huh? Have you been to the Gedi route? No, actually, I haven't. Give me a chair. Who all go to the Gedi route every day? Yeah. Okay. I think because of Gedi route is okay. Somebody asked me what is Gedi route? Gedi marne jate hain jahan. Yeah, Gedi marne, where good-looking girls like Isha Gupta are there and boys normally come and just do Gedi. It is a random thing though, but I think it is one of the most, it is there on Google Maps as well. The Gedi route has become so big now. Anyway, so I've written something for the Gedi route. It is, because I'm from Chandigarh, then we'll come to Isha's first question. College de main sare saal Gedi route, लाते गेड़ी रूट थे जिन्ने छेड़िया मेरी गर्लफ्रेंड ਨੂੰ मैं सारे बंदे कूटते ਅੱਜ ਸੱਦਿਆ ਮੇਰੀ ਮਿੱਟੀ ਨੇ मैं आया अपने पिंड माइंड रॉक्स ਨੂੰ ਹਾਂ ਬੋਲਣੀ मैं ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸੈਕਿੰਡ and then we got in touch with a lot of actresses from Bollywood that they should come and be a part of the youth summit. I was like, yeah, we want to come, And then we told them it's in Chandigarh. They said, no, we can't come to Chandigarh. All the actresses, they were like, you can't come to Chandigarh. I was like, why? पहला मैं सोचा ਵੱਡੀ एक्ट्रेस क्यों ना चंडीगढ़ आउंदियां ने फिर पता चले कि चंडीगढ़ दी कुड़ियां इन्होंने बहुत कॉम्प्लेक्स दे जातियां ने so all the Chandigarh girls and the Delhi girls, how is it that all the girls from the north, most of them make it big in Bollywood? Is it that Punjabi looks? Is it that Northy attitude? What is that? I think it's the attitude for sure. I mean, all of us North Indians, वो एक attitude होना है ना कि देख लेंगे, कर लेंगे. So that's the attitude that we have. Like, we don't bend down in front of anyone. We are like, you know what? If you can do 100%, we'll do 1,000%. So totally. I think that's the North Indian attitude. And tell me something. You see good movies happening, you see bad movies happening, you see item numbers. What is your take on movies like, or maybe item numbers for that matter? My take on what? Item numbers. You know what? It's been going on since forever and ever and ever, and I don't see the harm in it. You know, you'll even see like you know, a Sri Devi dancing, you know, on a particular song. Juhi Chawla ji did it in, you know, Lagiyaat Sawan Ki Fir Wo Jadiya. She wasn't there in the movie, but she was only in the song. So item songs have been coming since then. And you know what? That's what, it's an attraction. It's a good packaging to a film. So I don't see any harm in it. It's just like I would love to do. I did it. Dhat Tere Ki was kind of an item song that you'll call because it was. But it is an upmarket item song. Yeah, aspirational version of item number. But, you know, even I'm 1/4 Punjabi. Let's be honest. None of us are that upmarket by the end. We all like the being loud. We all like loud music. We all like, you know, sophistication comes because. Yeah, I'm an actor. I mean, it's as good as that. Sure. Anyone in the audience can sing. I want somebody to hum Jannat to any song for her.
Is it Naina? Naina? Naina, give them. The entire audience like Naina. Naina, आपने पैसे दिए क्या? क्या चक्कर है ये? Okay, yeah. Naina's mic is not working. Sound. Yes. Hello. Yeah, now it is working. Come on. So Naina, ऐसा क्या है? सब Naina कर रहे हैं. सब friends हैं मेरे. Oh. Hello, national winner. Hello, Naina. Give it up for Naina once again. Okay. So Naina, what are you going to sing for Isha Gupta? तुझे सोचता हूँ मैं. Okay. It's one of my favorite songs. I would actually love if you can come here and Come, sing. Naina, come. Come on the stage. And if one boy can also come, she can sing and that boy can dance. You want a boy on the stage or should Naina sing? Or Apar Shakti would dance. Apar Shakti. Isha sing, Mama says no boys. Okay. Who's going to be the Imran Hashmi of that song? Okay, yeah. Okay, let Naina sing. We have Imran Hashmi of that song. Hello, Paji. Who called him on the stage? He looks like Imran Hashmi. Eh? See? Chehra dikha, left profile, right profile. How many of you think he looks like Imran Hashmi? अपने lips दिखा भाई, lips दिखा, pout कर pout. लड़कियों response मिला है Imran Hashmi के लिए. Okay, tell me something. Imran Hashmi is very famous for kisses. Are you also famous for that in your college? मौका मिला तो जरूर famous हो जाऊंगा. Okay, I think we should concentrate on the talented girl here, na? On Then the I talent said, over here. Yes. Yeah. Not the hidden talent. Yeah, We yeah. see the other Yeah, yeah, talent. तुझे सोचता हूँ मैं शामों से इससे ज्यादा तुझे और चाहूँ मैं क्या तेरी धड़कनों में ही डूबा रहूँ इससे ज्यादा तुझे और चाहूँ मैं क्या अब इस जहां में जाना संग हूँ तेरे तू जगराते में आया है? अब इस जहां डांस करे संग हूँ तेरे अब Okay, give it up for Naina once again. Thank you so much, Naina. Thank you so much. You have a wonderful voice. Thanks a lot, bro. तुसी इमरान हाशमी आ गए हो. Don't worry. Okay. Tell me something. When you, I think this was not there in my prep. I suddenly thought कि Jannat 2 had Imran Hashmi. What was your reaction and your mother's reaction that you're going to be opposite Imran Hashmi, the serial kisser? I think, no, my mother only told me one thing, let Imran keep the serial killer tag, you don't take it away from him. That's all she told me. So I'm glad that he has it. No, but I'll be honest, Imran has made, again, he's come from nowhere, he's a common man's dream, he's a common man idol. Even though my mom loves it, I think he has a very good market, especially even in my mother. I mean, my mother was more excited to meet him than to meet Saif. My mother's like, I want to meet Imran Hashmi. And I'm like, okay, from a distance, woman. Like. Isha, whenever I speak to you, you always speak very highly of your mother. Very? Very highly of your mother. Yeah. And you talk about your mother a lot of times. Yeah. So, ऐसा क्यों है? Is she the main source of inspiration? Is she, like, do you idolize her? Every daughter does, but what about you? Every daughter does, of course. But मेरे लिए मैं एकदम I'm a carbon copy of my mother. I think from every Is she as good looking angle, as you are? She's prettier than me. What do you think? Thank you. But yeah, it's just I think हमारी life में हमेशा we have that one person who always pushes you further beyond. Especially for girls, I think it's very important when you have your mother's support. I got lucky that मेरी mother ही मेरी best friend है. If it wasn't for her, मैं Miss India में नहीं जाती.
मुंबई नहीं शिफ्ट होती, एक्टिंग करियर नहीं लेती. तो आई थिंक या इवन द कॉन्फिडेंस दैट आई हैव, एवरी लिटिल थिंग फ्रॉम माय फर्स्ट बॉयफ्रेंड टिल माय फिल्म एंड अभी तक मैं क्या कर रही हूँ. आई थिंक द ओनली पर्सन हु नो. फर्स्ट बॉयफ्रेंड कौन था? शायद उसे भी नहीं याद हो कौन था. ये बातें हम बता देते हैं. ये बातें अंदर की बात है जिसे हम बोलते हैं. सो इट्स जस्ट लाइक या आई थिंक यू नो for every child I think mother is more important, but especially for me my mother. Yeah, you just finished Hum Shakals, yeah, and a lot of people don't speak very highly about Sajid Khan in the industry, outside the industry, the media. You have worked with him for the entire project. I'm sure you guys will hang out together for at least 3-4 months, and then the promotions, you've been around. What is your take on him? And a lot of people also, not about Sajid Khan, but a lot of people talk about directors who've been into casting couch and all that jazz. Do you think that exists in our film industry? You know, I honestly think casting couch is such a thing that exists not only in the industry, so don't get scared. I think I would like to say, I'm sure like there's so many of you who want to be actor and actresses. Nothing like this happens, but you know what? You're as good as what you think. If you think it happened, it will happen. If you think it doesn't happen, it won't happen. Secondly, about Sajid, I would really like to say I have spent almost 6 months on this film. One of the funniest guys. Jo unki movies hai, that's how he is as a person. You know, but what happens is, once you make a mistake, then you make a mistake twice. Third time, people want to pull you down. Yeah. Because that's happened to me. I mean, I'll take one step ahead. I'll have 10 people to pull me down. But, you know, I just think that if you are strong enough to pull me down, I'll be stronger than you and get up. And I really hope that happens with Sajid because he's a lovely person. He's really funny. Him and I have fought so much that people have got involved in between and be like, okay, calm down because, you know, he's वहाँ के and मैं you know पंजाबी खून वही निकल कर आता है मेरा. But you know it was just as bad luck that film didn't do well. I think कोई भी film चल जाती. If this film would have worked, people would have been you know signing him right now and waiting to work with him. So yeah, it's just you know I hope he bounces back with the next film. Kudos to you for accepting at least that it happens. It's not only about the film industry, it happens in general. You know, but I've seen it everywhere. I've, you know, seen men especially taking advantage of women just because of power. But I think it's... Has anyone tried to do that to you in the initial phase of your career in the industry? No, not in the film industry, not even in modeling, but just in general, I always felt like, you know, men like to show their power that, oh, hum is position mein hai, you know, we can get you here, we can get you there. But the thing is, I have a simple formula. If I'll reach somewhere on my own, I'll reach somewhere. Otherwise, ghar jaake shaadi karo ho gaya. You know, it's not like that's my backup plan, but you need to be headstrong that, you know what, I will make it on my own. And I have made it on my own. Totally. So. Talking about women power, what is that one thing which you would want to say, especially to the girls here? Mardani has released yesterday. That is a big example. I think more than the girls, I like to say this to the guys that I'm not saying please don't make every girl your sister because हमें थोड़ी population बढ़ानी है, but respect women. I think थोड़ा late joke समझ में आया, चंडीगढ़ में हो ना इसलिए. I think नहीं, but it's just respect women and more for women, you know what, stand with each other. I have met women, वो एक जिसे सच में बोलते हैं ना औरत ही औरत की दुश्मन, वो मैंने सबसे ज्यादा देखा है. कोई अच्छी दिख रही है, अरे कैसी अच्छी लग रही है, बेचारी ने छोटी स्कर्ट पहनी है. Thank you. लड़के ज्यादा बिलीव करते हैं, लड़कियां भी चलो ताली मार रही है. You talk about छोटी स्कर्ट and you have whistles there. That's Chandigarh for you. नहीं, I don't think छोटी स्कर्ट, but I think लड़कों को पता है, लड़कियां ही लड़कियों की ज्यादा बुराई करती रहती है कि कैसे कपड़े पहनती है, किसके साथ घूमती है. Let's take that from the audience. All those girls who second that. All the girls who second that. कि लड़की की ज्यादा बुराई करती हैं. Okay, can we have a mic there? सब लड़के बचपन से दोस्त होते हैं, लड़कियां जब देखो 1-2 साल में दोस्त बदलती रहती हैं. ये इसलिए ये बिकॉज टिक ही नहीं पाती यार. ये मैंने देखा है बहुतों से. मेरी एक दोस्त है, वो सालों से दोस्त है, बट वो इसी वजह से बिकॉज हमें फर्क नहीं पड़ा. सो आई जस्ट थिंक लड़कियों को एक साथ, यू नो, गर्ल्स नीड टू यूनाइट एंड स्टैंड against everything, especially
when there's an outer force, of eve teasing, of, respecting women. And men need to be stronger because कल किसी और के साथ हो रहा है, आप ignore करके चलते बनेंगे. Tomorrow it's going to happen to your sister, to your wife, to your girlfriend, to your mother. So that's all I like to say. Just, stand with each other. That's more important than anything else. Yeah. Who was it girl who wanted to say something? कि लड़कियों की लड़कियों से क्यों नहीं बनती है? Some girl was raising her hand there. Okay, relax. Okay, so Isha, I think it's been forever that everyone has been talking about that you look like Angelina Jolie. Is it a good thing or a bad thing? So does that make you feel good? Okay, wow, I look like somebody who is extremely beautiful. Hence, I'm also extremely beautiful. No. Or does it make you feel bad that The why am I thing being is, compared? even if you're saying that I look like Angelina Jolie, there can be two Angelina Jolie, but there's only one Brad Pitt, so it's really sad. I don't have a Brad Pitt. Okay, you've seen that ice bucket challenge happening, in the entire country and the world as well. Do you see that as a valid movement, or do you see that as a fun activity happening? Chalo baraf dale, chalo baraf dale. We were just talking about it yesterday. I had tweeted about it the other day saying that I really hope that the people who are doing it, know what it's about. Correct. Because, the challenge is कि अगर आपने challenge नहीं किया, अपने ऊपर अगर आपने ice bucket पानी नहीं डाल पाए, तो you have to I'm so sorry donate. to cut you short. I'm thinking a lot of people in the audience might not know what ice bucket challenge is. So tell them a little. Okay, it's an ALS, which is a medical condition where, your whole spine and everything, it just contracts, you can't move. So I'm sorry, I'm forgetting the name. Who was the guy who started it? One of the patients who started it? He was a basketball player who got it, so he started it. So he decided that's the best way to raise. Who knows that name? Okay, one of you can Google meanwhile so others can see, because I'm sorry for my lack of knowledge over here. So the reason he started is that if you can't put that cold ice bucket water on yourself, you rather donate $100. I've seen videos, people of only, you know what, I accept the challenge, I'm going to do it, I'm going to ask 3 other people in 24 hours to do it. I've not heard a single person donating. I just don't understand. I know, okay, you're James Bond and you're Spartans and, you're a gladiator, but just donate. You rather donate than waste water. I'm not going to do it and waste water. I'm sorry. There's just no water in this world. Yeah. So, yeah. Thank you. Okay. So please, all of you rather donate than, Totally. waste water. He wants to say something. Can you please have a mic there? I can't, sorry. Please give us your name first. I'm Niharika, and I'm Hi. sorry to interrupt you. No problem. But, it's actually the challenge is because if you cannot donate money, everybody from Obama to all the celebrities have been doing it. If you cannot donate money within 24 hours, then your punishment is that you pour a bucket of ice on yourself. I know, darling, but that's exactly my point. People like these, and especially us celebrities, the reason we are celebrities is because if I'm here, an icon, youth icon, and plus I can spread the word. But if if I'm not even donating, the only thing I'm doing is something for to get attention. I just don't understand. That's the whole what's point. happening. Sadly, instead of spreading awareness, people do not know what this is, but That's they're exactly following it. Yeah. Thank you. Dare mainly challenging Bhajan Saab. I'm sure he might just not know that what is it about. Yeah, it's just I wish that people do some research and find out about Totally. it. Yes, I can see a hand there. What do you want to say? Yeah, please give him the mic. Good morning. Hi, good morning. What's your name, bro? Anurag. I'm from LPU. Exactly what the challenge, there are a few rules which we have to follow in this. First of all, you have to get challenged by someone. Yeah. And second thing is, if someone is challenging you, if you're not performing that, you have to pay $100. Yeah. Then also, if you are performing that, after that also you have to donate some money. So No, actually not, because you've not heard any of the people saying that we are donating. Because in the video, what you have to do when you are making that video of doing that ice challenge, you have to take those 3 names whom you are challenging, Yeah. and you have to
also tell that what amount of money you are donating on that website of Yeah, ALS. but that's exactly what we're saying, that people are wasting resources. Have you seen recent videos? And I've been seeing enough, because there've been enough people In on India, Twitter, and in India I'm talking, there've been enough people challenging me, but I wrote eventually, I said, I'm not going to fall sick, I'd rather just donate money. It's as Exactly. simple. In India, what's happening is people Yeah. are just doing that without donating any money. Yeah. But the main motto was to donate money. Either ये you एक और do it. प्रॉब्लम है हम लोगों की इंडिया में, कोई और बाहर वाला कुछ करे, हम अपने कल्चर इतना नहीं मानते ना, हमें प्रॉब्लम ये है इंडिया में, वेस्टर्न ने कुछ किया, वी विल डू इट बिकॉज वी आर नॉट दैट कॉन्फिडेंट. Exactly, ma'am. Exactly. Whoa! Okay. Ice bucket challenge को side पे रखते हैं. I think we should have a challenger for, I mean, an on-ground challenge, है ना? Boys में से कौन गाता है? 1 and 2. That's not the challenge. आ जाओ लेकिन ऊपर. Quickly. Come on the stage. Okay. Come, bro, come. Okay, you've already been on the stage. Can I have somebody who has not been on the stage? That guy in the specs here. Come. Okay. What's your name, bro? Rama. And? Sylvester Stallone. भाई बड़ा खतरनाक है वो आपका. Sylvester के आगे? Stephen. Okay. गाने वाले चैलेंज जो बाद में आएंगे, आप दोनों में से जो ज्यादा पुशअप्स मारेगा वही गाना गाएगा ईशा के लिए. चैलेंज है, कमल ऐसे थोड़ी है. या पुशअप्स ज्यादा मारेगा वही गाना गाएगा ईशा के लिए. ढोल साथ बजेगा पुशअप्स के. ठीक है पाजी? ओके. Are we good to go? क्या है चैलेंज? Okay. How many of you think? चैलेंज क्या है? चैलेंज है कौन सा पुशअप्स मारेगा, जो पुशअप्स ज्यादा मारेगा वो आपके लिए गाना. थैंक गॉड सनी पाजी यहाँ पे नहीं है. Okay. How many of you think Rama is gonna win? Stephen? Yeah? Okay. Rama and Sylvester. Here we go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Rama, आप रुक गए थे. हो गया. That guy stopped in the middle. No worry, Rama. कोई टेंशन नहीं है. यार Thank you so much. इतनी मेहनत के बाद भी आप गाना गवाओगे. अब गवाएंगे. That's a challenge. नहीं ऐसी ही और my winner यहाँ both of you. इतनी मेहनत के बाद. अब do you guys want to sing together? नहीं, no, okay. So the winner says no. Yeah, he was the winner. So thank you so much, bro. But you were really, really good, isn't it? Hana? He was. Thank you so much. To sing. अरे कमाल है. नहीं. Who wants to sing? You want to sing? Okay. You win this one. अब सांस भूल गया, अब कैसे गाएगा ना बेचारा. But don't worry. ये सांस पुशअप्स मार के फूला है कि ईशा को देख के भूल गया. स्टेज पे जब चढ़ा तब तो मैम को देख के भूल गया. उसके बाद हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम जिंदगी, अब तुम ही हो. चैन भी तेरा दर्द भी तेरी आशिकी. Get up by once again. Thank you so much, brother. Thank you so much. Okay. So do you want to say anything to both the boys? Thank you so much, and beautiful voice, the gentleman over there. Yeah. So last thing, this is a Parshakti's top 3 again. Modeling or acting? Acting. Marriage or live-in? Marriage or live-in? Companionship.
Okay, companionship. This thing I asked Jimmy Paji as well. I'm going to ask you as well. Like I asked him about a girl, but one boy in the audience you think you can have a crush on. In a healthy way. तुम seriously मत ले लेना यार, रात को नींद ना आए. ईशा गुप्ता को मुझ पे crush है. अपनी girlfriend को breakup कर दिया है. तू छोड़ यार, ईशा गुप्ता को मुझ पे crush है. So don't do that, okay? It's in a good way. Yeah. खड़े होके check करना चित्रा. A nice sweet boy. स्वीटी लड़के होता है चंडीगढ़. वो हाथ दिखा के क्या? अरे वैसे ही पटरा लिया यार गाना गा के और कितना? One boy. Any one boy. The guy said, oh, है ना? This. Yeah. The one in the check. The one in the check. Oh! Take a mic. Give him a mic there. Give him a mic there. Give him a mic there. Let me just find out how does it feel? Isha Gupta has a crush on you. Oh my God. हाँ. भाई मैं तो मतलब पागल हो जाता, मैं स्टेज छोड़ के भाग जाता मैं. Tell me, how does it feel? क्या बोलूं? Isha Gupta has a crush on you. How does it feel? Dhak. सीधा heartbeat पे तुमने माइक लगा दिया. मतलब पूरा आपको उसी से समझ आ जाएगा. Do you have a girlfriend? मतलब मेरा चांस है अभी. Okay, thank you so much. Thank you so much, Isha. Can we please have? Right. I would like to request Kaveri Bamzai, the editor, India Today, to please come and give a token of appreciation to Isha Gupta for her contribution to Bollywood and to the India Today Mind Rocks Youth Summit. एक बार सीटी बनती है फिर से यार, नेचुरल वाली सीटी. नेचुरल वाली. Personal conversation later. Thank you so much, guys. Thanks a lot. तो मैं क्या हूँ ढोल रुकने नहीं चाहिए पाजी, ढोल बजता रहेगा. और मैं दसांगा ढोल क्यों बजता रहेगा, क्योंकि the next session that we are going to have, it's with a legend, it's with an icon of the Punjabi music industry who's been a part of Bollywood as well. और मैं इनके बारे में क्या कहूँ यार, a singer, a politician, a great soul, and he doesn't have a singing background, but he is a man who made it somehow, and he's made it very large. I'd like to request everybody to please give a big round of applause for Mr. Hans Raj Hans.
जोरदार तालियों से स्वागत करें। बेदी साहब तशरीफ ले आए हैं। आ गए हैं। जनाब सरदार बिशन सिंह बेदी, जो हमारी मुल्क का मान है, प्राइड है, इन पे हम बहुत प्राउड करते हैं। वेलकम हजूर, खुशामदीद। मेरे आपकी ड्यूटी मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर। मैं कहूँ सर, आपने दो चीजें ऐसी मिस करी हैं जो मैं चाहता तो इनको एक बार कहता एक बार फिर से गाएं, लेकिन वी आर गोना हैव अ लॉट मोर। बहुत सारे गाने और आपसे गवाना चाहेंगे, बिकॉज दिल किसी का भरेगा। मिल पाते हैं। जो पॉजिटिव पहलू है वो ये है कि छोटे छोटे गांव से, देहात से, गुमनाम जगहों से आके बहुत बड़ा प्लेटफार्म आर्टिस्ट लोगों को मिल जाता है, जिनको इससे पहले नहीं मिलता था रियलिटी शो से पहले। तो दूसरा जो पहलू है वो ये है कि सबका नाम नहीं होना होता। सब लोग गाते हैं, रियाज करते हैं, फिर एंड ऑफ द डे यही कहेंगे ये डेस्टिनी है, मुकद्दर है। कुछ लोग बहुत आगे निकल जाते हैं। तो मैं चाहता हूं पॉपुलर बंदा ना भी हो, थोड़ा सुर में हो जाए, सुर में हो जाए, यही बहुत बड़ी अच्छी। लो जी, मैं क्या सुर, सर कहते हैं मेरे अंदर सुर नहीं थे, अपने आप ऑटोमेटिकली आगे, रब दी मेहर थी। इधर मैं पूछना चाहूंगा, कोई पंजाबी गाना गाना चाहेगा और सर से उनके सुर चेक कराते हैं, रियलिटी शो यहाँ पे कर देते हैं यार। कैन वी हैव वन कंटेस्टेंट? तो पंजाबी गाना होना चाहिए, लेकिन यार आ जाओ, जो अपने आप पंजाबी को बांधना चाहिए यार, कम ऑन। तुसी पंजाबी गाना गाओगे पक्का? आ जाओ फिर, छेती 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 आ जा, टप के आ जा, मारे चढ़ के आ जा। हिम्मत नहीं मेरी पैरी कि मैं सर दे सामने कुछ गावां, बट कोशिश जरूर करूंगा। सौण का महीना तो वैसे ही निकल गया, लेकिन बारिश बुरिश हुई नहीं चंडीगढ़, लेकिन फिर भी मैं सावन तो ही कुछ गल करना चाहूंगा कि अज मेरा जी करदा रब्बा रब्बा मी बरसा साडी कोठी दाने पा, रब्बा 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 मी बरसा साडी कोठी दाने पा, कावा 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 अज मेरा जी करदा कि अज मेरा जी करदा मैं उठ जा, उठ जा नाली हवा, अज मेरा जी करदा कावा 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 अज मेरा जी करदा मैं उठ जा नाली हवा। मेरी किस्मत ने, मेरी किस्मत ने कर दित्तियां ठंडियां छावां, अज मेरा हो कावा 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 अज मेरा जी करदा रब्बा रब्बा मी बरसा साडी कोठी दाने पा, रब्बा रब्बा मी बरसा। थैंक यू वेरी मच। वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छी। तो सर आप क्या कहेंगे? आग लगा दी तूने, आग लगा दी, आग लगा दी, या मुझे तरह की रोटी चाहिए? हमें जो कमेंट्स तुम्हें मिलने वाले हैं मेरे भाई, ये कमेंट्स हमेशा अपने जहन में रखना, बिकॉज ये एक उस इंसान से मिलने वाले हैं जिसने अपने आप को खुद बनाया है। मैं एक चीज कहना चाहूंगा सर के बारे में कि सर को शायद याद नहीं है, ये मेरे अंकल भी हैं, इनका बेटा युवराज हंस, हम एक ही कॉलेज से पढ़े हैं, एपीजे कॉलेज से। बहुत अच्छे बेटा, गॉड ब्लेस यू। और यू भी बेटा, मेरा युवराज बेटा, दो, एक बेटा बड़ा नवराज है, दोनों बेटे आपकी दुआ से हीरो है फिल्मों में, फिल्में उनकी हिट होती हैं तकरीबन। अरे वाह, इंशाल्लाह, थैंक यू। और मतलब इसने पहले ही जान पहचान निकालनी, कमेंट्स थोड़े बढ़िया मिल जाएंगे बेटा। जेन्युइन जो गुरु होते हैं ना, वो स्ट्रिक्ट कमेंट्स देते हैं ताकि तुम और मोटिवेट हो और आगे बढ़ो और कमियों को पहचानो। ऑलराइट, वी आल्सो हैव अनदर सिंगर।
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗਾਓਗੇ ਭਾਜੀ? हेलो मैं गाता भी हूँ, लिखता भी हूँ, तो मैं चाहूँगा कि मैं अपना लिखा हुआ गाना सुनाऊँ। एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, ये तड़कता भड़कता मतलब एनर्जी वाला गाना है या इमोशनल गाना है? इमोशनल ही है, ज़्यादा वो नहीं है। ठीक है, इश्क वाला गाना है, पंजाबी में, पंजाबी और हिंदी टच थोड़ा थोड़ा। हो मैनू तेरे नाल ही तां प्यार है, हो एक तेरा ही तां इंतजार है। हो मेरा दिल बड़ा बेईमान है, मेरी तेरे बिच ही तां जान है, मेरी तेरे बिच ही तां जान है। ओ मैनू तेरे नाल ही तां प्यार है, हो तू ना जाने, हो तू ना माने, हो मेरा हाल बड़ा बेहाल है। तू ना जाने, तू ना माने, हो मेरा हाल बड़ा बेहाल है। तेनू तकिया जदों दा मेरे यार वे, तेनू पाउण लई बेताब है, तेनू पाउण लई बेताब है। ओ मैनू तेरे नाल ही तां प्यार है, एक तेरा ही तां इंतजार है। थैंक यू। पहले कह रहे मेरा दिल बेईमान है, फिर कह रहे मुझे तेरा इंतजार। भाई बेईमान दिल के उसके ऊपर बेईमान हो जाता ना के। अच्छा, मैं कोई यार प्यार मोहब्बत के इतने चक्करों में ना पड़कर, देख ब्रेकअप होने के इतने ज्यादा बाद ना सेहत खराब हो जाती है, कुछ खाया पिया कर। एंड सर के कमेंट्स डेफिनेटली मैटर करते हैं सर, कुछ मोटिवेट करना चाहेंगे इसे? प्यार की खतरनाक बात यह है कि कॉन्फिडेंस से बंदा कह देता मुझे तुझसे प्यार है, बंदा ये सोचता भी नहीं है कि उसको है या नहीं है। चलो लगे रहो मुन्ना भाई, वन साइडेड कभी ना हो, ये बहुत तकलीफ दे है, क्योंकि दिल जब टूटता है वो शदीद डिप्रेशन, शदीद दर्द है, तो वो मैं उससे गुजर चुका हूँ। रब करे किसी का दिल ना टूटे, तो सोच समझ के करो। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू, थैंक यू सो मच। सर आपने दिल टूटने की बात कर ही दी है, और मैं क्या पंजाब आए थे भंगड़ा नहीं पाया, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं तो दिल्ली से आया इसलिए हूँ पंजाब में, भंगड़ा वंगड़ा पाना है। तो अभी दिल टूटने की बात करी आपने, तो दिल टोटे टोटे हो गया, ये गाना याद आता है हमें। एवरीबडी, आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी ऑफ यू नो आउट हियर टू प्लीज स्टैंड ऑन योर सीट्स एंड भंगड़ा पा दो, गिद्दा पा दो। एक बार जोश यहाँ पे देखने को मिलना चाहिए हमें यार। सर एक बार वो गाना हो जाए, एवरीबडी वुड लाइक टू डांस। अखियां लड़ी हो लड़ी बीच बाजार, उसको बुलाया मैंने कितनी बार। अखियां लड़ी हो लड़ी बीच बाजार, उसको बुलाया मैंने कितनी बार, उसको बुलाया मैंने कितनी बार। आया नी चंद्रा एक भी बार, टोटे टोटे हो गया दिल, टोटे टोटे हो गया, टोटे टोटे हो गया दिल, टोटे टोटे हो गया। चल कुड़िए चल चल कुड़िए, चल कुड़िए न चल हो तैयार, कहना पड़ेगा नहीं अब के बार। चल कुड़िए न चल हो तैयार, कहना पड़ेगा नहीं अब की बार। टोटे टोटे हो गया दिल, टोटे टोटे हो गया, टोटे टोटे हो गया दिल, टोटे टोटे हो गया। आजा नच ले, 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 आजा नच ले। ओ एक तेरी काशनी जी अख चन्नीए, पिपली दा पत्त तेरा लख चन्नीए। नी एक तेरी काशनी जी अख चन्नीए, पिपली दा पत्त तेरा लख चन्नीए। नी हैगा के नी हैगा, हैगा के नी हैगा, हैगा के नी हैगा, ओए हैगा के नी हैगा, नी हैगा के नी हैगा, हैगा के नी हैगा, हैगा कि नहीं हैगा सानू दस चन्नीए। मार के हुलारा केड़ा ला दे बल्लीए, मार के हुलारा केड़ा ला दे बल्लीए। ओ बल्ले बल्ले गिद्दे च करा दे बल्लीए,
बल्ले बल्ले गिद्धे छिकरा दे बल्लिए, ओ बल्ले बल्ले गिद्धे छिकरा दे बल्लिए, बल्ले बल्ले गिद्धे छिकरा दे बल्ली। तो आजा नच ले, आजा नच ले, आजा नच ले, आजा नच ले, कदी हूँ करके, कदी हाँ करके, कदी हूँ करके, कदी हाँ करके, गेड़ा दे देनी मुटियारे लम्मी बांह करके, गेड़ा दे देनी मुटियारे लम्मी बांह करके, गेड़ा दे देनी मुटियारे लम्मी बांह करके। आजा नच ले, 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 ओ मैं कहूँ यहाँ पे 5 घंटे लगातार सर गाते रहेंगे और यहाँ पे कोई रुकेगा नहीं, बट वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम। सर इतना अच्छा लगा, मतलब मेरा आना सफल हो गया पंजाब, बहुत मजा आया। थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां फिर से हंसराज हंस सर के लिए प्लीज। और मैं कहना चाहूंगा कि एक हमारे पंजाबी सर हैं, पंजाबी सर कहते हैं कि अगरू मैं कहना चाहूंगा, anybody can pilot a ship when the sea is calm, anybody can pilot a ship when the sea is calm, लेकिन हमारे म्यूजिक इंडस्ट्री के ये लोग नहीं हैं आम गुरु, ठोको ताड़ी खटाक। थैंक यू सो मच सर, एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट बीशन सिंह बेदी सर, प्लीज एक बार आए और प्लीज गिव हिम यू नो द टोकन ऑफ अप्रिसिएशन फॉर द कंट्रीब्यूशन ही हैज गिवन टू द इंडस्ट्री। दो लेजेंड्स एक साथ कम देखने को मिलते हैं यार, कम ऑन। और एक चीज में सर, मोस्ट डेफिनेटली आपके पास कोई ना कोई एक रिक्वेस्ट होगी जो आप करना चाहेंगे हंसराज सर से, कोई एक गाना जो हंसराज हंस साडे देश के हंस ने और सानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ बहुत मान है, बहुत मान है। गुरु महाराज ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖਣ, ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ। थैंक यू, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। यस, ऑल राइट, एक बार जोरदार तालियां फिर से हो जाए। एक लेजेंड हंसराज हंस साहब और दूसरे लेजेंड जो हमारे साथ अभी यहां पर हैं, एंड टू टेक यू थ्रू दिस सेशन we have Kunal Pradhan with us. A new innings is the name of the session, and it's going to be rocking. I can guarantee you that. Sir, please. Good afternoon, everybody. Whistle's already okay. Okay, forget fast bowling. We are at a time in Indian cricket where we seem to have forgotten the art of bowling spin and even batting spin. So my guest this afternoon is a reminder of that glorious Indian tradition. Floating like a butterfly, stinging like a bee, he picked up 266 wickets in only 67 test matches. And that, when he was playing alongside Chandrasekhar, Prasanna and Venkat Raghavan, who he was competing with for wickets. And he beat all of them. He got more wickets than all of them. He's a former test captain. He's a former team manager. But what is the most special thing about him is that he is a straight shooter. He's not scared of anybody. In a scenario when some of our biggest former cricketers have become mere stooges of the BCCI, who they have central contracts, they're not talking because they're scared that their funding will be stopped. Mr. Bedi is a man of integrity who always calls a spade a spade. So ladies and gentlemen, please, huge round of applause for the legendary Bishan Singh Bedi.
Sir, we're all watching, we all watch the Indian team perform in England right now. As for somebody like you, who thought that you had conquered that mountain ages ago, you know, going abroad and winning test matches, how does it feel when you see the team play the way they do? Well, for a start off, if I may mention, that after Hansraj Hans, ours is going to be a very low-key affair. So there is nothing that I can do will make the youth dance here. Okay? But, no, sir, but this is the time when we really need to hear some, you know, plain talk about cricket. Yeah, well, I hope they'll have ear for cricket. That is important. और कहना मैं ये चाहूँगा कि हमारे जो खिलाड़ी इंग्लैंड में दौरा अभी कर ही रहे हैं, कंप्लीट हुआ नहीं, सेकंड टेस्ट जीतने के बाद it appeared as if they had reached a saturation point. That was my observation. And after second test match, third, fourth, fifth, they just kept on going down and down and down. And there was no way they could, themselves or anybody could pick them up. So what is the reason for this? Is it because they're only ready for 4 overs in a 2020 match and to score like a 30-ball 50? That, you know, the staying power required for test cricket, the patience, the work, that they just don't have it anymore. Has the IPL destroyed, you know, Indian test cricket? Well, I've said this right from the beginning. IPL is not the first or second stage of cancer. It is the final stage of cancer. There's no recovery from it. And I wouldn't be surprised that in due course of time, we may even struggle to beat, in the test matches, we may struggle to beat Zimbabwe and Bangladesh. बस नहीं, ये जो बच्चे हमारे पहले खेले थे, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, लक्ष्मण, कुंबले, सौरव गांगुली, I mean, that's the golden era of Indian cricket. All these guys, they jumped into IPL after they had finished their cricketing career. Yes. Whereas this lot is beginning their international career with an IPL window which is nothing except destruction outside. So, but why is the cricket board not realizing that? What is it about the IPL that makes them think it is the be-all and end-all? Well, it's very simple, Kunal. It's money makes the mayor go. It's money, money and money. You see, I have often mentioned this, that money is the bane of all problems. Either the lack of it or the excess of it. You know? और आपने भी जिक्र किया था about some of our giants not expressing their opinions. मेरा कहने का भाव ये है कि अगर पैसा बुलाता है तो पैसा चुप भी कराता है. Right? So this is and BCCI seems to be the master at it. जिसको लगता है कि वो public opinion sway कर सकता है, उसको वो कोई contract दे देते हैं, उसको वो कोई. Sir, ये former cricketers are also to blame for the state of Indian cricket right now. Do you agree with that? To a certain extent, yes. But again, now अगर आपको 4 ओवर फेंकने के लिए 9, 10, 11, 12 करोड़ मिलते हैं, तो दिमाग खराब है मेरा, सपोजिंग कि मैं 35 ओवर फेंकूं और सिर्फ 5-6 लाख रुपए के लिए. It's as simple as that, you know. And I feel very strongly. Now today I was reading in the press, Stephen Fleming has made a remark that all the test candidates or test stars should be kept away from IPL. And then he goes on to say that I'm nobody to make a remark like that. You know, you can't run with the hare and hunt with the hounds, can you? But most of our giants are doing it. Sir, and you know what is really worrying is that, you know, you mentioned that a lot of these young cricketers in the team right now are starting their careers at the time of the IPL. But actually a lot of the people who are there right now are people who had actually started from Ranji Trophy. It's more worrying about the next generation. You know, once these people also go, the next generation that comes will have only been playing cricket at a time when, you know, coaches आजकल बोलते हैं कि parents हमारे पास आते हैं और बोलते हैं यार defense छोड़ो, आप छक्का मारना सिखाओ. That's it. क्योंकि you know, that is what is needed in IPL. Yeah. So, you know, I want to ask you a very simple question. You know, cricket as a sport
has a character to it. The character is कि 5 दिन का मैच है, 4 दिन का मैच है, 3 दिन का मैच है. Okay? So when the game was invented in England about 200-300 years ago, this was invented as a social event, right? Because that was the time when England was going through a huge economic depression, right? And cricket was introduced as a social interaction. Anybody who didn't play this game was considered an outcast. So that is how this game evolved in England. Now, when I say this game has a character, golf has a character too. 18 होल खेलने पड़ेंगे आपको. आपने कभी, can you imagine a tournament taking place, golf का tournament जिसमें 3 या 4 होल ही हों, right? और फुटबॉल की गेम है 90 मिनट की गेम है, 5 मिनट की तो होने वाली नहीं हो, right? हॉकी 70 मिनट्स, वो 3.5 मिनट की नहीं होगी, 70 मिनट खेलने पड़ेंगे. So every game has its own basic character to it. And I can't figure this out, that you want to destroy, for the sake of money, you want to destroy the basic character of a game of cricket. And so actually the problem, and just to sort of get you clearly on this, is not to invent a new format. You can invent a new format, but the problem is to give it so much importance as if it is more important than what cricket was meant to be. I think that is the issue, right? That's right. You know, pardon me saying this, media is equally responsible. Absolutely. You know, media cannot escape, because they are giving 5-6 pages to IPL every day, whereas Ranji Trophy match only gets Sir, वो a कहते small हैं little column. public देखना चाहती है. Well, this is it. You know, I refuse to believe that cricket can be converted into a tamasha. Cricket, to my mind, is a biggest character and personality builder. No other sport can claim that. So do you think when this keeps going on, you know, when we talk about Indian cricket, we actually talk about its characters. We talk about people who went to, you know, other countries, उनको बोला कि भाई ये आप 5 फुट 3 इंच का opening batsman लेके आए हो, इसका तो we'll blow his head off. Yeah. You know, and he goes to West Indies, Sunil Gavaskar, and he shows them कि boss, you know, height is not important, heart is important. Yes. Yeah, so, you know, and it's replete with characters like this. You know, you drop, they come back. आपको लगता है कि if this process continues, even the character building of the Indian cricketer that cricket used to do is going to... It's already gone to dogs. I'm sorry to say this. You know, there's a little kid, under 19 captain, Unmukh Chand. Yeah. Okay. He won the under 19 competition against Australia. And he came back. He was one of my trainees. So within a year's time, he got a contract with Delhi Daredevils. तो उसके वाले साहब ने मुझे फ़ोन किया ना, मुबारक देने के लिए कि आपका जो ट्रेनी है वो IPL कॉन्ट्रैक्ट मिल गया उसको. And you know, my reaction was, I said, oh, bloody hell, I hope you're wrong. And पिछले 5-6 साल से we're not even Heard his hearing. name. Yeah, No. yeah. And there are at least 20 kids in my computer, mental computer, who've gone, vanished from the scene. But this craze for, you see, the sad part is that we would like to think that success is directly related with your bank balance. No. Success is how consistently you can do a particular job with personal and national pride. So what do you think of Mahendra Singh Dhoni as the captain of the Indian cricket team? What is your view on it? Long term, short term, What do you for want the me to- future? No, whatever. What do you want me to think? Tell me. No. I've said this long ago when myself and Mahendra Ramanath were together on a television show. That he's a very good athlete, excellent athlete, and he can bat a bit. But he's no keeper, he's no bloody captain. Let me assure you that. No. And if people think there is no alternative, I'd like to remind them that all the cemeteries are full of those people who thought they were indispensable. You know? So you think that that Indian cricket should say that, okay, he's done X what he could do, we've seen what he can do, now it's time to move on? I think it's time to move on, definitely. And Indian cricket needs fresh ideas. You know, whoever takes over must do it now. Sir, but not after the team is destroyed in Australia and the self-confidence of the side. Sir, but how will the ideas come if the impression is that the BCCI seems to think that everything is fine?
There is no problem. They are paying tons of money to people to go on saying that everything is fine. Well, so that's the impression. How will this happen? How will this change happen? No. You can make fools some people sometimes, but not all the people all the time. So, sir, you think the time has come for the public to demand that, enough is enough, IPL is fine, and, meaningless home series are fine. But unless you start winning test series abroad consistently, your cricket has not come of age. I think so. Honestly, that it's about, for start off, tell me, we have a board president, okay, who has been stopped by the Supreme Court from functioning. So this is the first step to find out what is wrong with the top. I have always believed that anything good or bad, any aspect of our life which is good or bad, it trickles from top to bottom. Doesn't go from bottom upwards. अगर कुछ ऊपर जाता है नीचे से, वो है आपकी टैलेंट ग्रासरूट लेवल से, आपकी एक्सेलेंस, वो नीचे से ऊपर जाती है. और जो भी भद्दी हरकत है, ऊपर से जो जिसको बोलते हैं ना हम इम्पैक्ट, it starts from top. Look what happened to Congress. If I was to give you an example, Congress made a mess of it, but it started from top. And here we have it. And I'm not a great fan of our present PM, but he seems to be doing everything right. For example, his speech from Red Fort, he was touching the basics. He was not flying in the cloud 7. No. सर तो ये जो आप कह रहे हैं लोग भद्दी हरकतें कर रहे हैं at the top of the BCCI, इनको कैसे हटाएंगे? कौन हटाएंगे? They have engineered the system in a way that वो वोट पे चलता है. They know how to engineer the votes and they'll remain in power endlessly. उनको सुप्रीम कोर्ट मना करता है, वो फिर भी आ जाते हैं. उनके अगेंस्ट इंक्वायरी होती है, आ जाते हैं. उनका son-in-law is accused of match fixing. वो कहते हैं कि मेरा कोई लेना देना नहीं इसके साथ. Can you imagine? So how do you solve? No, well, I think I have a lot of faith in the Supreme Court of India. I think they will put this jolly house in order because that's the last hope. Otherwise, I tell you, our sports officials, whether they are in IOA or in cricket, any federation, the only way they can be replaced is by sheer providence, eventual death. Otherwise, they just don't want to leave the scene. Yeah. So did you agree with the Supreme Court when it asked Sunil Gavaskar to be made the head of the cricket board in an interim manner? Yes, that was a very good decision, and I thought Sunil Gavaskar delivered. Yeah. No, sir, but isn't he being accused by people of the same problems? Taking a central contract to do commentary, to, speak his master's voice. I mean, see, he may or may not be doing it, but there is a natural conflict of interest. You can't speak against your employer. There is conflict of interest. Yes. But what I'm talking about purely from an administrative angle. Yeah. He was no, so is that setting a good example to finally have somebody on top who is also a victim of conflict of interest? I'm not saying that he actually does it, but conflict of interest is the potential. It is not, proof. So there is potential that he protects the board. So is that a good? I think he would protect the board. Yes. So would Ravi Shastri. Yes. So and now they've made him so would many others. director. Yeah. But I'm looking at it purely from that particular period when he was asked to do a job by the Supreme Court. Okay. Yeah. Please, question right there. Can somebody get a mic? Mic. गुरमुख हो आ जाओ यार. Come. आ जाओ. And how are you? Hello, good afternoon, sir. Sir, I would please like you to tell us about your journey. At your time, what was it like? Your glory, your passion about cricket, and what students should take from your journey, and what should a student do? Lessons from your own journey. Your glory days and your own... My journey is about to finish, So, in any case, I would like to live in the present. And I'm very happy that I'm alive here sitting with you. Yeah. My past is not going to come back to me, and I don't know what tomorrow holds. So, lucky. So I have a question.
अब जैसे भी जो भी रिजल्ट आता है किसी भी मैच का, जैसे अभी हाल फिलहाल में इंग्लैंड सीरीज का आया, तो कैप्टन हैज टू से जस्ट वन लाइन, यू नो, एंड ऑफ द डे द बॉयज प्लेड रियली वेल. So do you think he's a lenient captain? He's not strict, and the board and the selection committee is not strict? And one more question with this: what all, apart from the selection, what all are the distractions of the players? I know they try, but शायद कभी कभार ऐसा होता है कि हम लोग भी जैसे काम है तो कर रहे हैं, but it's end of the day a religion for us. Cricket is a religion. तो किस तरह अगर हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं? Cricket is a religion. हमारे लिए मतलब एक धर्म हमारे लिए रिलीजन नहीं है, क्रिकेट का रिलीजन हो. तो आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या क्या डिस्ट्रैक्शंस है हमारी टीम की जो परफॉर्म. हमारे मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में क्या हो रहा है? हमारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में क्या हो रहा है? वो इबादत करने की जगह है, राजनीति खेलने की नहीं. वही मैं जानना चाहूंगा और क्या डिस्ट्रैक्शंस हैं कि टीम परफॉर्म नहीं कर पा रही है. परफॉर्म देखो, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम इंडिया हैज परफॉर्म बैडली, and it won't be the last either. Okay? But मेरा जो गिला है छोटा सा वो है कि इस टीम की इंग्लैंड जाने से पहले प्रेपरेशन क्या थी? How did they prepare themselves for England tour? I just want to ask one question. अगर उसका कोई जवाब दे पाए. ये IPL खेल के खत्म करके इन बच्चों ने कुछ नहीं किया सिवाय कमर्शियल एड्स के. And then suddenly they packed off to England without any press conference. अब इसको अगर आप इंग्लैंड दौरे पे जा रही है टीम और आज के दौर में इसको हाश करने की जरूरत क्या है? हमको चोरी करने थोड़ा जा रहे हैं, खेलने जा रहे हैं भाई. तो फिर सारी हिंदुस्तानी पब्लिक जिसको आप रिलीजन बोलते हो, क्रिकेट को रिलीजन बना रखा है, उनको बताया क्यों नहीं कि टीम जा रही है और इनकी देयर इज नो फोटो ऑपरेशन एट ऑल. इन्होंने क्या किया है? 10-15 दिन कैंप लगा कहीं कि नहीं. तो आई थिंक वी आर नाउ ऑनेस्टली barking up the wrong tree because damage has been done. अब ये जो किया है ना इन्होंने तब्दीली, थोड़ी 3-4 कोचेज भेज दी यहाँ से, वो पहले अपने आप को एक्लेमेटाइज करेंगे, बच्चों को करेंगे. And so but Ravi Shastri has been there for several weeks doing. Yeah, but Ravi Shastri again his master's voice. His master's voice. And वो तो कुछ बोलेगा ही नहीं. Sir, तो क्यों कर रहा है? This is just an eyewash. No, this is hogwash, absolutely. And can you imagine Ravi Shastri was उसकी जो पार्लेस चल रही थी, वो चौथे टेस्ट मैच में चालू हो गई थी, which means they were ready to face a defeat in the 5th also. Now these kind of things, as I mentioned earlier, you can make some people fools. Sir, he's saying he's going on a fact-finding mission. What is he going to find? What are the facts? Really? What are the facts? So, what fact is he going to find? Yeah, what is it? What is it that Siddharth Singh ji सत श्री अकाल, क्या हाल है मेरे? ऐने मेरे हीरो. Yes. मैं क्रिकेट जरूर खेलता रहा, but for me Indian hockey was sport number 1, always and always. जी. Sir, spin bowling का लेकिन क्या हो रहा है? What's happened to spin bowling? आपको कैसा लगता है जो हमारा number 1 spinner टेस्ट मैच खेलता है रविंद्र जडेजा? Again, everything boils down to this IPL nonsense. 4 ओवर में कितने अच्छे स्पिनर बन जाओगे आप? बताइए. अब ये अपने सिद्धार्थ सिंह जी मैं पूछना चाहता हूँ, जब ये पेनल्टी प्रैक्टिस करते हैं, क्या ये 5-6 स्ट्रोक मार के अलग हो जाते क्या? प्रैक्टिस इज. सर, तो एनसीए में ट्रेनिंग नहीं हो रही क्या स्पिन की? एनसीए इज द हॉस्पिटल भाई, वहां पे जो बीमार पड़ता है एनसीए चले जाता हूँ. सर, वहां पे there's some problem with spin coaching also? हाँ, वहाँ कोच इन्होंने रखा है वो यूज्ड टू बोल मीडियम पेस. तो वो कोच है वहां पे, एंड ही इज द कोच ऑफ स्पिन डिपार्टमेंट ओनली बिकॉज ही प्लेज गोल्फ विद द बोर्ड प्रेसिडेंट एट कोडाईकनाल गोल्फ क्लब. या सर, देखिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में we've been talking for the last 5 years. Supreme Court got into it. There was a move. He was removed. He was set aside. Mr. Gavaskar came in. He engineered some way. He's come back. He's now head of the ICC.
do you think number one problem right now with Indian cricket, there's a systemic problem, that's fine. Is the number one problem N. Srinivasan? First and foremost, if you start, you have to start somewhere. Where do we begin? He's first and last. First and last problem. Yes. Sir, but we've... यार मुझे बताइए, it's very abnormal. He's a psychic case, I'm telling you. How can he be so power crazy? How can he be so... कि मुझे कुर्सी चाहिए. No matter what. And somebody... 2 days ago, I met a chap. Okay, from Madras. Oh, मुझे बताने, I won't name him. He said, he has mentioned, this is coming from Srini himself, that I am scared of honest people. So he must be very scared of you? No, I got nothing to do with him. I got nothing to do with him. I'm not going to prostrate in front of him, no. Have there ever been moves from the BCCI to try and take you under? They have no chance. Like they've done it with so many other former players? No, they have no chance. They have no chance, so they know they don't try. No, they have so no chance. There's a question from the audience right here. Yeah. Hello, sir. So I was asking, in the starting of your session, you told us that according to you, the IPL is the main cause of failure in the Indian Cricket Board. So in the present scenario... Indian cricket? Only in the Indian cricket, yeah. So in the present scenario, like recently our team went to England and had a great downfall there also. So do you think the IPL is the whole and soul only responsible for the same, or there are other many reasons also? Well, other main reasons branch off from the IPL. So basically those reasons are related to IPL itself now, because... Absolutely, I have no doubt. What is IPL? Tell me. This IPL, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या हम धंधा करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं? Right? उस बिजनेस में दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं. Branding and... No. Two main things are involved. One is principle of that business. The other is profit. यहाँ पे principle तो discuss ही नहीं हो रहा. Then you're standing on very, very flimsy ground. Anjana. Yeah. You just said that Mr. Narendra Modi at least seems to be getting the basics right. But what about the basics of cricket? Because he was the president for Gujarat Cricket Association. After he went away, unopposed, Amit Shah wins. So we have these series of politicians in different states playing around doing nothing to clean cricket. We have these business people who are ruining it, as we've been talking about it. We have players like Shastri coming to the top and they turn out to be just yes men. So what's the way out then? Who takes over? Who does what? Show us the way. Way out is, this won't happen in our lifetime. Let me assure you that. You know, we've been free for, 68 years? Politically. We got freedom politically. We're not free mentally. Let me assure you that. पहले हम गोरों के गुलाम थे, आज हम वन में हुक्मरानों के गुलाम. ये मैं दावे से कह सकता हूं आपको कि जब हमारा मन फ्री होगा ना सोचने में, तो इस मुल्क को होश आएगी. वो भी फ्रीडम नहीं है हमारे दिमाग में. एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं आपको. बड़ी घर में बैठी कि आप बाजार में जाएं, यू वांट टू बाय अ सूट लेंथ, फैमिली आपके साथ है, 5-6 दोस्त हैं, यू लाइक दैट सूट लेंथ, बस उसे 4 बंदे जो फैमिली के उन्होंने कहा नहीं ये ठीक नहीं है, तो आप नहीं लोगे. Because you like it, you see, where is your own decision? हम तो बच्ची की शादी करने के लिए इतना वजन डालते हैं उसके ऊपर, इतना वजन डालते हैं, यही करना, यही पहनना, ये. Why? When a kid is about 21, 22, 25, मेरी बेटी की शादी हुई रिसेंटली. मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ. ओके, इट्स अ वेरी पर्सनल इशू. तो गुरुद्वारे में हमने शादी करनी थी बच्ची की. तो हम रागी जिन्होंने लावा फेरे पढ़ने, उनको बुलाया. तो मुझे कहने लगे जी कि बच्चा जो है ये दाढ़ी वाड़ी तो नहीं काटता. आई सेड क्यों? दाढ़ी वाड़ी के काटने? ही इज नॉट अ सिख, ही इज अ नॉन सिख. तो कहते हम लावे नहीं पड़ेंगे जी. मैंने कहा यार आप कैसे मूर्ख हो ईमान से कि एक नॉन सिख जो है वो सिख खानदान में आ रहा है, आप उसको दुरकार रहे हो. How can you do that? I'm telling you, we're not free mentally. And while I'm talking to you, मेरे रोंगटे खड़े हो इसलिए because I was so annoyed. मैंने कहा तू लावे नहीं पड़ेगा तो और भी और ऐसे नहीं सब. ये हुक्मनामा है अकाल तख्त से.
रोज सुबह शाम मैं सुनता हूं कि नशे बंद करो जी। आप गोल्डन टेम्पल से बाहर निकलो, हर 50 गज की दूरी पे आपको शराब की दुकान मिलेगी। अब कहते हैं हम कुछ हैं, करते कुछ हैं ना। कुछ क्वेश्चन नहीं पूछना है, बट सीरियसली यू आर सो ओपन, you have such a positive thinking and such a clarity in life, sir. I am a big fan of yours and I want to touch your feet, sir. क्या बात है? Thank you very much. So very kind of you. Very kind. Thank you. Yeah, question. Apar. Let me just... Whoa! Baby sir, just a small question. Yes sir, here. Baby sir? Yeah. We kind of agree to that Indian cricket might be blamed for because of IPL, wherever they are reaching right now, whatever they're doing right now, thak gaye hain, jo bhi ho gaya hai. But isn't world cricket also involved in that? Dale Steyn comes here and play. All the cricketers, spinners, fast bowlers, batsmen, they all come. तो फिर वो fatigue और वो जो कुछ भी the way you're saying कि इस वजह से they're not performing well. So then in that case their performance should also come down, ना? आपकी जिस भावना से पूछ रहे हो ना, वो मेरे विचार में इसलिए एग्री नहीं कर रही क्योंकि ऑस्ट्रेलियन आते हैं यहाँ पैसा लूटने के लिए, साउथ अफ्रीकन आते हैं यहाँ पैसा लूटने के लिए। So money is involved. The big thing is money. मैं आपको बताता हूँ कि यार मुझे बड़ी कोफ्त आती है अपने बारे में कहने के लिए जब हम खेलते थे, so that time is over. But same Australians, okay, ये आते थे यहाँ पे और कंप्लेन करते थे पानी ठीक नहीं, हमें बियर के साथ ब्रश करना पड़ता है, सोडा वाटर के साथ ब्रश करना पड़ता है। आज ये रेंगते हुए आ रहे हैं, क्यों? ये पैसे मिलते ना। But they come here to loot, to take money from here. And once they go back home, their commitment to their country is totally different. Totally different. हमें सुनने को मिलता है जी, हमारे जो बच्चे हैं ये ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे हैं मगरा के साथ या और ऑस्ट्रेलियन साउथ अफ्रीकन के साथ. They are learning a lot. That is the argument that everybody. What are they learning? There are only 2-3 words they have learned, which I can't mention here. I'm telling you. So another question. हेलो सर, नमस्ते सर. क्रिकेट इज एवरीथिंग. मेरे घर में रोटी नहीं बनती जिस दिन मैच आता है. मेरे को हार्ट अटैक आ गया था, इंडिया हार गया. एंड आई एम अ स्पोर्ट्स पर्सन. आई प्लेड वर्ल्ड कप में रोलर स्केटिंग, रोलर हॉकी खेलती थी. ऑलमोस्ट खेलती थी. 12 साल पहले मैंने वर्ल्ड कप खेला था सर. पापा ने टिकट लेके भेजा मुझे. स्पॉन्सर नहीं मिला. स्पॉन्सर नहीं मिला था हमें कोई टीम को. पापा ने टिकट लेके भेजी थी. एक लड़की का पासपोर्ट नहीं बना था. इतनी बढ़िया प्लेयर थी, वो नहीं जा पाई थी. सर बड़ा दुख लगता कि बाकी स्पोर्ट्स को एनकरेजमेंट नहीं मिलती. आई नो. अगर आपका नहीं मेंशन किया, जब क्रिकेट मैच होता तो घर में रोटी नहीं बनती तो क्या पापा बनाते रोटी? सर मैं बहादुर भी नहीं बनाता, कहता आज तो नहीं बनेगा. No, this is a fad in our country. It's a social fad कि जब हमने किसी पार्टी पे जाना तो गुफ्तगू क्या होगी, यार धोनी रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए. That's the conversation. किसी ने देखा है मैच या नहीं देखा, मगर he will have an opinion about धोनी. He will have an opinion about Shami or even this fellow Ashwin. Opinion उनके पास जरूर होगी क्योंकि ये डिस्कशन करने का एक प्लेटफॉर्म है. Okay? For me, I used to believe that you don't play this game with bat and ball. No, you live it. You live cricket. I would like to mention here, Kunal, कि हम लोग से तुम बुरा ना मनायो. There is an English saying, proverb, this is not cricket. Okay? We never say this is not hockey or this is not football, this is not tennis, this is not golf. This is not cricket.
Because cricket is directly related with honesty, uprightness and integrity. Right? वो अब हमें फिर मुझे एक छोटा सा एग्जाम्पल इसलिए देना पड़ता कि क्रिकेट में अंपायर्स हैं, राइट? और हॉकी में, फुटबॉल में वो रेफरी हैं. अंपायर इसलिए हैं जब तक के फील्डिंग साइड या बैटिंग साइड बॉलर अपील नहीं करेगा वो डिसीजन नहीं देगा. अंपायर इज लाइक अ जज. Whereas in the case of hockey or football, so many other sports, a referee will whistle the moment he sees a foul. He will not wait for any interpretation from anyone else. तो क्रिकेट का जो महत्व है वो एक हमारा जिंदगी के साथ डायरेक्ट ताल्लुक है. अप्स एंड डाउन जो रोज आते हैं हमारे जिंदगी में वो क्रिकेट में भी आते हैं. अगर आपको नहीं यकीन तो आज भारतीय टीम को पूछ लो जाके. जी बाकी गेम्स को क्यों नहीं बढ़ावा मिलता? मेरी गेम छुड़वा दी कि कोई पूछता नहीं है, पढ़ाई कर, मेडिकल ले, कोई नहीं पूछेगा तुम्हें. क्या फायदा सर? मेरे अंदर था, मेरे लिए सब कुछ थी मेरी गेम. मैंने आपको पहली बात बताई थी कि वी आर मेंटली नॉट टेरिबली फ्री. वी आर नॉट. दूसरी जो बात है ना, हमारे मुल्क में स्पोर्ट्स कल्चर की नाम जैसी कोई चीज ही नहीं. बिल्कुल बिल्कुल. आज अगर हॉकी की टीम ये सिल्वर मेडल जीत के आए हैं, कॉमनवेल्थ गेम सिल्वर मेडल जीत के, तो इनका जिक्र हो रहा है. जब ये ओलंपिक्स में हार के आए थे, nobody wanted to know them. Exactly. This is a sad part. I've got very good friends in hockey. Very, very good friends. मैंने काफी उनसे बातचीत करी, जिक्र किया कि यार आप 5, 7, 10 बंदे इकट्ठे तो हो जाओ. जब आप कुछ करते हो तो 1500 आ जाते क्रेडिट लेने. जब आप नहीं करते जूते इनको पड़ते हैं. But see, when it comes to the financial part of it, I'm willing to give credit to BCCI because they have put their financial house in a fairly good order. But leading further, that order becomes disorder because the craze for money is becoming unreal. बिल्कुल सर. हम घर बैठे आई कैन इमेजिन जब बोलते हैं ना साथ वाले छक्का मारना था, तू 4 बजे उठ के चला जाता, टीम में उठ जाता, छक्का मार लेता. बैठ के आसान है बोलना. Sorry, that's all we have time for, Brinja. Thank you so much. The message from him is very clear. What we are seeing right now is not cricket. It is not cricket. Yes, it's not cricket. Because cricket, not cricket means anything which is taking place under the table. It's not cricket. Okay? Thank you, sir. So our youth is going to know now. ये सारी अंदर की बातें पता लगी हमें. And a big round of applause once again for Sir Bishan Singh Bedi. And I would request the captain of the Indian hockey team to please come on stage and give a small token of appreciation. सरदार सिंह जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए. And we have our next session with the captain of the Indian hockey team, Sardar Singh. और कप्तान साहब से एक रिक्वेस्ट है, शाहरुख खान साहब का एक डायलॉग जो है वो एक बार आप बोल के बता दो. He says I'm the coach of the Indian hockey team. और आप क्या बोलेंगे? एक बार माइक आपको दे दें. फिल्मी अंदाज में. Thank you. Brilliant. बाजी मैं उनको फॉलो नहीं कर सकता. मैं ग्राउंड में अच्छा हूँ, इसमें शायरो शायरी में. चलिए, बहुत अंदर की बातें यहाँ हॉकी की भी मालूम चलेंगी. इंडियन हॉकी टीम. Thank you very much. Yeah. Over to you, Kunal. So, as everybody knows, my next guest is not just the captain of the Indian hockey team, but also the best playmaker in the world. Please, a huge round of applause. He's considered hockey's equivalent of Lionel Messi because of the way he can look at a pass and the way he can find his man every single time. He is also the person responsible for the slow but steady revival of hockey in India. Silver medalist in the recent Commonwealth Games
and now aiming for gold at the Asian Games in South Korea. Please welcome. We like to call him Magic on a Stick, Sardar Singh. Sardar Sahab, before I begin, one thing I must get out of the way. आप जब होटल में आए उसके बाद कमरे में घुसे, मुझे लगा इतना फिट कैसे हो सकता है कोई आदमी। हम बड़े स्पोर्ट्समैन देखते हैं, सारे टाइम देखते हैं, टेनिस प्लेयर्स, क्रिकेटर्स, बैडमिंटन प्लेयर्स, लेकिन ये तो सर जुनून वाली फिटनेस है। ये कैसे बनाई आपने, कितने घंटे आप करते हैं प्रैक्टिस? देखिए, ये मेरा शौक है, अपने आप को फिट रखूं, और मैं जो आने वाला फ्यूचर है उससे मैं डरता हूं कि मेरा पेट बाहर ना आए जब मैं हॉकी छोड़ूं। तो अभी मेरी एज 29 के आसपास है, तो मैं ट्राई कर रहा हूं कि मैं अपने आप को फिट रखूं और कंट्री के लिए अच्छी हॉकी खेलूं और अपने आप को फिट रखूं। सरदार साहब, आज आपका इतना नाम है, हर जगह आप वर्ल्ड 11 में आपका नाम लिया जाता है। लोग कहते हैं कि ऐसा प्लेमेकर कोई हुआ नहीं। डच के जो ग्रेड्स हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के ग्रेड्स हैं, उनके साथ आपकी तुलना की जाती है, लेकिन और ये यूथ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। 10 साल पहले एक टाइम था जब आपने सोचा था कि मैं हॉकी छोड़ के अमेरिका भाग जाऊं। ऐसा क्यों, क्या हुआ था उस टाइम पे? देखिए, घर के हालात काफ़ी ख़राब थे उस टाइम, और मैं मिडिल फैमिली से बिलोंग करता हूं। और उसके बाद अपने पंजाबियों के लिए मोस्टली ये होता है कि अपना अमेरिका कनाडा में जाओ और सेटल हो जाओ। एक्चुअली मैं नामदारी संस्था से बिलोंग करता हूं, और हमारा एक क्लब था जो हर एक साल के बाद यूएस जाता है, कैलिफोर्निया कप होता है उधर खेलने। तो मैं और एक दो मेरे फ्रेंड थे, हमने सोचा था कि चलो हमारे जो गुरुजी हैं उनसे बात करके हम उधर ही सेटल हो जाएंगे। चलो हमने उससे बात की, पर उन्होंने बोला कि नहीं, आपको वापस जाना पड़ेगा। हम वापस आए, आके मेरा सीनियर कैंप में नाम आया, उसमें धनराज पिल्ले जी, सारे बड़े बड़े प्लेयर, गगनजीत सिंह, सारे शामिल थे। तो मेरा थोड़ा इंटरेस्ट बना कि हाँ, कि इतनी छोटी एज में अभी मेरा सीनियर कैंप में नाम है। तो एटलीस्ट उसके बाद मैंने 40 दिन के हमारे उस टाइम कैंप होते थे, तो मैंने 15 कैंप अटेंड किए वो, और काफ़ी हार्ड वर्क किया। फिर 2004 में मैं जूनियर टूर्नामेंट खेलने गया पाकिस्तान, पहली बार, उस बार मेरा टीम में नाम आया था। और स्लोली फिर मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया और फिर सीनियर टीम में जगह बनाई। काफ़ी हार्ड वर्क करने के बाद अभी मैं पिछले 9-10 साल से कंटिन्यू टीम में हूँ, तो ये काफ़ी अच्छी बात है मेरे लिए। एक समय और भी था जब आप और छोटे थे, जब आपको 4 बजे सुबह उठ के प्रैक्टिस करना अच्छा नहीं लगता था, तो आप कोचिंग कैंप छोड़ के भाग आए थे और आपने कहा था मुझे नहीं खेलनी हॉकी। तो ऐसा क्यों, और आपको किसने वापस भेजा फिर? एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। 2004 में जब हम पाकिस्तान गए तो हॉकी काफ़ी फास्ट थी और पहला टूर था मेरा, और 70 मिनट में मेरे पास 2-3 बॉलें आई, और वो भी मेरे से रुकी नहीं, क्योंकि आदमी फर्स्ट टाइम जब इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलता है तो थोड़ा नर्वस होता है, एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं होता आपको। तो 1-2 टच हुई, उसके बाद नेक्स्ट गेम थी और उसमें तो बिल्कुल टच ही नहीं हुई। तो मैंने बाहर बैठ के मैं सोचा नहीं यार, बड़ी मुश्किल गेम है, छोड़ दें इसको, नहीं यार वापस जाके ना छोड़ दूंगा मैं। पर उसके बाद साथ में काफ़ी सीनियर प्लेयर थे, उनके साथ मैंने बात की कि ऐसे यार ये है, मैं नहीं खेलना चाहता। तो उन्होंने मेरे को काफ़ी मोटिवेट किया कि नहीं, हमारे साथ भी ऐसा था, अब जैसे जैसे अच्छे मैचेस खेलोगे, अच्छे प्लेयर्स के साथ खेलोगे, आप इम्प्रूव करोगे। तो उसके बाद फिर मैंने उसको कंटिन्यू रखा। और फिर जो आप बात कर रहे थे, जब मैं एकेडमी में था, क्योंकि सर्दियों में सभी को सोना अच्छा लगता है सुबह 3 बजे, और हमारे कोच साहब हैं बलदेव सिंह शाहबाद के, आपने अगर सुना हो, लड़कियों की टीम काफ़ी फेमस है। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी, तो वो वीक में 3 दिन हमारे पास आते थे, तो वो काफ़ी मैं अभी भी उनसे डरता हूँ। तो आने से पहले भी आज मेरी उनसे बात हुई है, तो उन्होंने काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग करवाई। पर सुबह 3 बजे जब उठना, मैंने उनको बोला कि नहीं मैं छोड़ के जा रहा हूँ। नेक्स्ट डे वो आए और उन्होंने देखा मैं ट्रेनिंग में नहीं हूँ,
मैं घर चला गया था। फिर मेरे दादाजी थे, उन्होंने बोला नहीं तू वापस जा। फिर दोबारा फैमिली मेरे को एकेडमी में छोड़ने आई। फिर उसके बाद धीरे धीरे ट्रेनिंग शुरू की। फिर मेरा कैंप में जैसे मैंने पहले बताया आया, फिर हार्ड वर्क किया, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया मैंने जी। और स्टिल मैं अपने आप को, क्योंकि मैं जितनी मेरी अभी तक पास्ट जितनी अचीवमेंट्स हैं, मैं कभी भी सेटिस्फाई नहीं हुआ और मैं चाहता हूँ कि जो मैंने किया उससे और बेस्ट करूँ। आप कभी सोचते हैं कि अगर आपने दादाजी की बात नहीं मानी होती और नहीं वापस हॉकी खेली होती, आपकी लाइफ कितनी डिफरेंट होती? क्या कर रहे होते आप अभी? बिल्कुल, हम 5 लड़के छोड़ के गए थे। तो मैं जब गांव में जाता हूं तो मैं देखता हूं जो मेरे साथ वाले फ्रेंड्स थे, अभी कोई खेतों में काम कर रहा है, किसी की दुकान है, तो मैं भी उनमें से एक होता। तो ये बिगेस्ट डिसीजन हो गया आपकी लाइफ का वापस? बिल्कुल हाँ जी, मैं सारा ये क्रेडिट मेरे जो गुरुजी हैं, फिर उसके बाद फ्रेंड्स, फैमिली जिन्होंने मेरे को सपोर्ट की, फिर जितने कंट्री हॉकी लवर्स हैं जो लाइक इंडियन हॉकी को प्यार करते हैं, उनकी बदौलत मैं आज इधर हूँ। लेकिन एक बात बताइए, ये जो आपकी स्किल है कि गेम को कंट्रोल करना और पास बांटना इधर से उधर, गोल बनाना दूसरों के लिए, ये विजन कैसे आई आपको? आपने कैसे सोचा कि मैं ये हॉकी खेलूंगा, सेल्फलेस हॉकी? देखिए, मेरा सबसे पहले टारगेट ये होता है कि जितने भी प्लेयर हैं, जो हम टीम के साथ ट्रेनिंग करते हैं वो डिफरेंट ट्रेनिंग है, आपकी थिंकिंग डिफरेंट है, क्योंकि टीम के साथ आप ट्रेनिंग कर रहे हो। फिर अपने आप आपको पता होता है कि आदमी के अंदर कौन सी वीकनेस है और कौन सी अच्छी चीज़ें हैं। तो मेरा यही था, पहले स्पीड बहुत ज़्यादा कम थी, तो जब टीम के साथ ट्रेनिंग मैं करता था, उसके बाद जब सारे प्लेयर चले जाते थे, उसके बाद मैं अलग से लाइक 1 घंटा अलग स्पेंड करता था एवरी डे। और उसके बाद टाइमली रेस्ट, कहीं बाहर नहीं जाना, और नेक्स्ट डे सबसे पहले ग्राउंड के अंदर। आज भी मैं ट्राई करता हूँ कि सबसे पहले मैं ग्राउंड में जाऊँ, सबसे बाहर निकलूँ। और उसके बाद जैसे आपने बात की कि लंबे पास, विज़न, वो आपका टीम के साथ कॉम्बिनेशन होना चाहिए। मैं हर एक ट्रेनिंग सेशन के बाद, इवन ट्रेनिंग में भी जितने जूनियर सीनियर प्लेयर हैं सभी के साथ बात करता हूँ कि कहाँ कौन सी अच्छी बॉल बन सकती है। क्योंकि हॉकी में आई कांटेक्ट बहुत ज़रूरी है। जहाँ आपका आई कांटेक्ट हो गया तो आदमी अंडरस्टैंड करता है कि हाँ बॉल मेरे पास आ सकती है। तो उसमें यही है कि बॉल आने से पहले आपको सोचना पड़ेगा। और जो मेरी पोजीशन है अभी, स्पेशली मिडल में खेलना, वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि सेंटर में अगर बॉल एक भी इंटरसेप्ट हुई तो सीधा गोल है, स्पेशली अच्छी टीम्स के साथ। तो जब बॉल आती है उसमें आपको 4 आदमी प्रेशर डालते हैं सेंटर में, तो जल्दी आपको जिसको बोलते हैं डिसीजन मेकिंग, जल्दी डिसीजन लेना है। तो उसके ऊपर काफ़ी मैंने फोकस किया, और मेरा अभी भी ये होता है कि बॉल जब आए ट्राई करूं 2-3 टच, और जहां फिर ओपन स्पेस मिले उधर मैं बॉल लाइक रनिंग करूं बॉल के साथ। आप इतने फोकस रहते हैं ग्राउंड पे, जैसे आप बात भी करते हैं हॉकी के बारे में, एकदम ऐसा आप सीधे हमको ग्राउंड के अंदर ले जाते हैं, ऐसा लगता है। आप जब खेल रहे होते हैं, आपको जो बाहर चल रहा है हॉकी में, इतना कुछ पॉलिटिक्स, कौन IHF है, कौन हॉकी इंडिया है, कभी पता ही नहीं लगता कौन चला रहा है कौन नहीं चला रहा है, ये इससे इफेक्ट पड़ता है कुछ? नहीं जी, मेरे को कोई नहीं, बाकी सभी की अपनी अपनी मेंटालिटी है, कौन किस चीज़ को कैसे लेता है। बट मेरा फोकस ये है कि मैं सिर्फ हॉकी पे फोकस करूं और हॉकी के लिए बेस्ट करूं, क्योंकि हॉकी के कारण आज मैं इधर हूं। अच्छा, आजकल सरदार साहब, ये बड़ा फैड चल रहा है सोशल मीडिया पे, ALS आइस बकेट चैलेंज। हाँ, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज दुनिया के लू गेरिग्स डिजीज के लिए अपने ऊपर बर्फ डाल रहे हैं। हाँ जी, ये आपने भी किया है कल परसों में? आपको किसने चैलेंज किया था? मेरे को हॉलैंड के जाप स्टॉकमैन है, गोलकीपर। हाँ जी, तो लास्ट अभी यूरोप में उनके साथ ब्लू मंडाल क्लब से खेला था, तो उन्होंने मेरे को चैलेंज किया था। तो 2-3 दिन पहले मेरी बॉडी ज़्यादा सिक थी तो मैं कर नहीं पाया, पर लास्ट कल हमने वो किया। तो अभी मैंने जॉन ब्रैम को, फिर सचिन पाजी को, और एक हॉलैंड के ठेंडनायर हैं, उनको नॉमिनेट किया है। तो आज उनका वो टाइम चल रहा है, होपफुली कि आज वो करेंगे। जॉन इब्राहिम को क्यों? आप कैसे जानते हैं जॉन को? क्यों आपने उनको चैलेंज किया? क्योंकि वो हमारे जो हॉकी इंडिया लीग है उनके ऑनर हैं और ब्रांड एम्बेसडर हैं, और काफ़ी टाइम से मैं उनको जानता हूँ,
और पहले से मैं उनका फ़ैन हूँ, क्योंकि उनकी मूवीज़ वगैरह, उनकी बॉडी से काफ़ी इंस्पायर हुआ हूँ इसलिए। और सचिन पाजी को क्यों? सचिन पाजी भी आप सभी को पता है, लाइक वो इंडिया में लाइक गॉड की तरह हैं सभी, और मोस्टली जब हम उनको देखते हैं, क्योंकि उन्होंने कंट्री के लिए इतनी अच्छी क्रिकेट खेली है और इतना कंट्री का नाम किया, वर्ल्ड कप जीते हैं, तो मैं उनका काफ़ी बड़ा फ़ैन था। तो एक दिन उनका बर्थडे था, सॉरी लास्ट टाइम जब बर्थडे था, तो मेरे को एक प्रेस वालों का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे आपकी एक बाइट लेनी है सचिन पाजी के बारे में। तो मैंने बोला श्योर। फिर उसके बाद मैंने उनका नंबर लिया और उनके साथ अभी मैं पिछले 6-7 महीने से टच हूँ, और वर्ल्ड कप जाने से पहले उन्होंने 1 घंटे का टाइम भी हमारे साथ अभी स्पेंड किया था पूरी टीम के साथ, तो इसलिए मैं उनको जानता हूँ। तो आप जैसे कह रहे थे सचिन गॉड है इंडिया के लिए, हाँ जी। तो एक टाइम था बहुत साल पहले जब ध्यानचंद भी गॉड थे इंडिया के। जी। तो अब ये जो भारत रत्न पे कंट्रोवर्सी चल रही है कि सचिन को दिया लेकिन ध्यानचंद को नहीं दिया, इसके बारे में आपका क्या व्यू है? देखिए मैं यही कहूँगा कि जो सिलेक्शन कमेटी ने क्या देख के सेटल किया, क्योंकि इस बार अगर देखा जाए तो हॉकी प्लेयर्स का अभी भी अर्जुन अवार्ड में भी नाम नहीं है जी। तो मैं इसमें यही कहूँगा कि जो उनका डिसीजन है, हम कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, मैं कुछ नहीं कर सकता, जो उनको अच्छा लग रहा है वही वो कर रहे हैं। नहीं, लेकिन एज कैप्टन ऑफ द इंडियन हॉकी टीम आपको लगता है ध्यानचंद को देना चाहिए वो सम्मान? देखिए उन्होंने भी कंट्री के लिए लाइक जैसे ओलंपिक में लाइक काफ़ी मेडल लिए हैं, और उसके बाद देखा जाए सचिन पाजी की भी काफ़ी अचीवमेंट्स हैं, तो होपफुली कि ध्यानचंद जी को भी नेक्स्ट टाइम मिल जाएगा। अच्छा, एक और बड़ी मजे की बात चल रही है आपके बारे में आजकल अखबारों में, कि आपकी मुलाकात आपकी फियोंसे से कैसे हुई? ये बड़ा सब लोग इसी की बात कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो फेसबुक पे क्या उन्होंने लिखा, क्या आपने जवाब दिया, कैसे बना ये? लंदन जब हम ओलंपिक के लिए जा रहे थे, तो 15 दिन पहले मेरे को मैसेज आया, हेलो हाय, कि आप बहुत अच्छे प्लेयर हो, बस। तो उसके बाद जब मैं उधर गया, मैसेज पे बात शुरू हुई, तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे हमें टिकट नहीं मिल रही मेरी फैमिली को, क्योंकि उनकी फैमिली भी हॉकी प्लेयर है सारे, और मैंने बोला चलो मैं अरेंज कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। नहीं, लेकिन मैसेज तो बहुत आते होंगे आपके पास, ऐसा क्या था इस मैसेज में जो आपने जवाब दिया? नहीं, नॉर्मल बातें जो एक लड़का लड़की के अंदर होती है, बस वही थी। तो मैंने उनको बोला कि थैंक यू कि आप इतना अप्रिशिएट कर रहे हो। फिर बस नॉर्मल बातें हुई एज ए फ्रेंड। फिर उन्होंने बोला कि मैं मैच देखना चाहती हूँ अपने फैमिली के साथ। तो हमारी गेम थी न्यूजीलैंड के साथ, तो मैंने टिकट अपने मैनेजर को बोल के अरेंज करवाई। तो उसके बाद ओलंपिक के टाइम मैं बिल्कुल नहीं उनको मिला। फिर उसके बाद हमारी थोड़ी फाइट हुई, फिर दोबारा बात हुई। फिर मैं स्पेशल इधर से टिकट लेके स्पेशल, हमारी 10 दिन की ब्रेक थी, तो मैं 5-6 दिन उनको मिलने के लिए गया, उनकी फैमिली को मिला। तो बस धीरे धीरे फिर। तो अब शादी का क्या इरादा है? शादी अभी बिल्कुल नहीं। फर्स्ट ये मेरा खेलने का टाइम है, क्योंकि ये टाइम बार बार नहीं आएगा। शादी आप कभी भी करवा सकते हो। तो फर्स्ट भाजी सही कहना मैं? हाँ जी, ये वापस नहीं आएगा बार बार, ये जो स्ट्रेंथ है शरीर में। तो मेरा टारगेट है अभी ओलंपिक के बाद, क्योंकि टीम अभी काफी अच्छा कर रही है। रियो ओलंपिक्स के बाद? जी। अच्छा, लाकी सवाल पूछना चाहते हैं आपसे। सर मैं पहले भाभी जी के लिए कहना चाहूंगा, मतलब इतनी बड़ी उपलब्धि नहीं होगी किसी के लिए यार, मैच की टिकट सीधा घर की टिकट मिल गई। और ये छोटी सी लव स्टोरी भगवान करे बहुत आगे जाए और बहुत प्यार मिलता रहे आपको, जैसे हमसे मिलता है वैसे भाभी जी से मिलता ही है। एक गाना कोई डेडिकेट करना चाहोगे भाभी जी को? कोई मतलब डेडिकेट क्या गाना चाहोगे भाभी जी के लिए? देख रही हैं अभी, उधर देख के, कैमरे की तरफ देख के एक बार थोड़ा प्यार से। भाजी मैं बाथरूम सिंगर हूँ। सारे भाजी बाथरूम सिंगर हैं इधर। कोई प्रोफेशनल आए थे, उन्होंने नाल आपा बड़ा बतेरा गाया, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ गावांगे। एक बार स्टार्ट कर दो कोई रोमांटिक गाना ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ डेडिकेट करो भाभी जी ਨੂੰ। मैं थोड़ी कर रहा है भाजी। मैंने कभी ये काम किया ही नहीं भाजी।
बताओ एफर्टलेसली आपको भाभी जी से मतलब अगर मैं आपको शेड्यूल बताऊं ना मेरे कैंप का तो आप हैरान रहोगे। टू मच यार, ट्रेनिंग फिर उसके बाद सीधा बेड दिखता है, खाओ सो जाओ फिर ट्रेनिंग, बस जैसे फौजी नहीं करते अपने, सेम वैसे हमारा वही चल रहा है। अभी रोमांस कोई भी नहीं है। एक चीज जरूर करते होगे, जब भी हम लोग जब जीतते हैं, कोई हमें जीत मिलती है तो हम सेलिब्रेट करते हैं, तो आपकी टीम कैसे सेलिब्रेट करती है? हमारा में देखिए श्री जी गोलकीपर है हमारे, और जब हम चेंजिंग रूम में आते हैं तो उनका यही होता है कि किसी की निक्कर में आइस डाल दी। आइस बकेट चैलेंज नहीं होता, वो आइस चैलेंज दूसरा होता है। लेकिन मेरे ख्याल से भंगड़ा भंगड़ा भी पाते हो भाजी अब तो। बिल्कुल आज हॉकी को सेलिब्रेट करने के लिए हम सारे भंगड़ा पाएंगे वेद सरदार सिंह। Questions, right here. हेलो, सबसे पहले तो मैं इंडिया टुडे ग्रुप को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एक हॉकी प्लेयर को बुलाया है, क्योंकि बुलाते हैं। सर आपसे क्वेश्चन है सर, अब अनपॉपुलर होते जा रहा है, धीरे धीरे पॉपुलरिटी खो रही है हॉकी इंडिया में, इसके लिए आप मीडिया को कितना जिम्मेदार मानते हैं? क्योंकि क्रिकेट पे दूसरे गेम पे एक सेकेंड, लेट मी कंप्लीट सर, लेट मी कंप्लीट सर। सर दूसरे जो गेम होते हैं उसमें बड़े बड़े स्पेशल शोज किए जाते हैं, उस पे एंकर आई, देखिए किस तरह से गेंद से आग उगल रही है, जैसे क्रिकेट पे शो किया जाता है। क्या आपका हॉकी ऐसी का आग नहीं उगलता? देखिए मैं कहूँगा कि मैं तो थैंक यू करता हूँ पूरी मीडिया का, क्योंकि पिछले जब से हमारी हॉकी इंडिया आई है फेडरेशन तो काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। और हॉकी मैं समझता हूँ कि काफ़ी ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका सभी को भी पब्लिक में लोग जानने लगे, नाम का पता है। तो पहले 4-5 साल पहले किसी का कुछ नहीं था पता। हाँ जी, ये लगता है मीडिया के पीछे पड़ने वाले सब हैं। देखिए मैं कहूँगा कि सारे लोग सक्सेस के पीछे भागते हैं, तो हमें अभी इंडियन हॉकी को एक अच्छे टूर्नामेंट जीतने की जरूरत है। सर बचपन से हमें सिखाया जाता कि नेशनल गेम इज हॉकी, बट उससे पहले किसी ने कुछ नहीं किया, तो अब अचानक से हो रहा है, इट्स गुड। सो आई एम थैंकफुल टू द मीडिया, अर्लियर आई वाज क्रिटिसाइजिंग इट। मैं थैंक यू करता हूँ, इनका बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं चलो अगर इन्होंने नहीं किए तो आज से शुरू करेंगे। इधर भी तो हेलो सर। हेलो सर। सर अगर आपकी लाइफ पे मूवी बनानी हो और उसमें आप ही हीरो हो, तो आप किस बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ रोमांस करना पसंद करेंगे? मैं जॉन ब्रैम को। नहीं सर, एक्ट्रेस कौन सी चाहिए आपको? दोस्ताना 2 नहीं बनानी। पगड़ी आज ज्यादा टाइट बांध ली इसलिए। दोस्ताना 2 नहीं बनानी। दोस्ताना 2 नहीं बनानी, मैं एक्ट्रेस पूछ रहा हूँ। एक्ट्रेस मेरे फेवरेट है वैसे माधुरी दीक्षित, पर अभी तो बहुत वो एज्ड हो गए हैं। प्रियंका चोपड़ा। थैंक यू सर। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਭਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਰ ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਲੀਗ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਪਲੇਅਰ ਆਉਂਦੇ ਕੀ ਉਹ ਸੱਚੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 2-3 ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਵਾਪਸ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਲੀਗ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈਸਟ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਜਿਮੀ ਡਵਾਇਰ ਦਾ, ਵਰਲਡ ਦੇ ਬੈਸਟ ਪਲੇਅਰ ਨੇ। ਉਹ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਦਿੱਲੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਫਾਈਨਲ ਲੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਇੰਡੀਅਨ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ
मैं एक बार इंडियन लीग जितनी चाहूँगा, मैं सारे टूर्नामेंट जिते वर्ल्ड दे, सिर्फ मैं वो जितनी चाहूँगा तो अपना बेस्ट परफॉर्म करना चाहूँगा कि इंडियन, क्योंकि अपने नेशनल गेम में सारे लोग हॉकी ਨੂੰ बहुत प्यार करते हैं, तो सारे का ही टारगेट इतने आके अपना वधिया परफॉर्म करिए, वधिया हॉकी खेलिए। वो दोबारा दिल्ली में सरकार बना पाएंगे या नहीं? बाजी स्पोर्ट्स के बारे में पूछ लो यार, मैं बता दूंगा। Go ahead, go ahead. Good afternoon, sir. My question is somewhat related. It's not directly related to the sportsmen or sports, but just now, like, sir said something about cricket and he talked about sports. Then ma'am also talked about it. We had Vijender, he talked about it. And there was this concern, one concern, that the government is not supporting the other sports except cricket, or I would say not even cricket that much. But at the same time, recently we had Kargil wars, and I would not call it anniversary, but there were news channels going on with all those stories. Where I saw a man who lost his one leg, fine. That guy is not getting his pension. Forget the government giving him further money. He's not getting his pension. There were people who have got the medals. The families have got medals, but then the families are living poor. They don't have food to eat. They don't have money to send their kids to school. So as an idol, like you people are idol to us. You people, why don't you people promote it in a manner that the government provides money to those people? At least to those to whom they've said we'll give the money and haven't given it yet. सर वो पूछ रहा है सर अवेयरनेस आपको बढ़ानी चाहिए इश्यूज के बारे में, क्यों नहीं करते और पब्लिकली क्यों नहीं करते? बाजी जैसे बिशन सर जी ने बोला कि हमारे इंडिया में स्पोर्ट्स का बिल्कुल कल्चर नहीं है, ठीक है जी। मैं चाहता हूँ कि एक तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सेंटर बनने चाहिए जिसमें सारे यंगस्टर सारी गेम, इवन ऐसा नहीं कि क्रिकेट, हॉकी या टेनिस, पूरे लाइक गेम्स होनी चाहिए। तो हर एक स्टेट में ऐसे सेंटर होना चाहिए जहाँ से हम वो बिल्ड कर सकें, ठीक है जी। हाँ पूछिए। गुड आफ्टरनून। The importance of foreign coach. कह रहे जब इतने सारे इंडियन प्लेयर अच्छे हैं सीनियर, तो फॉरेन कोच की क्या जरूरत? ये पूछ ये समय के बदलने से हॉकी भी काफ़ी बदली है। पहले हम हॉकी ग्रास पे खेलते थे और उस टाइम ज़्यादा इक्विपमेंट नहीं थे। अभी हॉकी एस्ट्रो टर्फ पे आ गई है और बहुत ज़्यादा रूल चेंज हुए, सारा कुछ। तो मैं समझता हूँ कि मैं सीरियसली आपको बता रहा हूँ, हमें भी दुख होता है ये कहने में। तो आजकल जो हमारी मॉडर्न हॉकी है, मैं समझता हूँ कि इंडिया में कोई भी ऐसा कोच नहीं है जो आजकल की मॉडर्न फास्ट हॉकी को समझ सके। तो जो बेस्ट कोच हैं वो हमारी हॉकी इंडिया ने टेरी वॉल्स के अंडर लगाए हैं। वो बड़े तू ना वो मोस्टली और कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो अंडरस्टैंड नहीं करते, पर जो नहीं करते उनके साथ सीनियर प्लेयर हैं जो उनको ट्रांसलेट करते हैं। नहीं तो कोच हमारे साथ हैं, जो इंडियन कोच हैं वो ट्रांसलेट करते हैं। पर्सनल मेन यही है कि सभी की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और हमें फॉरेनर कोचेज चाहिए। सर आखिरी सवाल से पहले एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। अभी रिसेंटली कंट्रोवर्सी हुई थी कि बास्केटबॉल प्लेयर्स चाइना के उनको बोला कि आप टर्बन के साथ नहीं खेल सकते। फिर अभी कल एक कंट्रोवर्सी हुई है दोहा में, वही बास्केटबॉल प्लेयर्स के साथ। एज इंडियाज बिगेस्ट सिख स्पोर्ट्समैन, आपका क्या स्टैंड है इसके ऊपर? देखिए मैं यही कहूँगा कि जैसे अगर टर्बन अगर पहली बात तो अलाउ करनी चाहिए, क्योंकि आप जो भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, अगर आप फॉलो करते हो तो उसके हिसाब से होना चाहिए। अगर नहीं तो जैसे हम पटका या जुड़ा करके ऊपर वो करके खेल सकते हैं। तो आपको लगता है कि अलाउ करना चाहिए और इस पे बिल्कुल, हाँ जी। थैंक यू।
Last question. Hello. Good afternoon, sir. So my question is, हम अभी फिलहाल भले ही हम आईपीएल को दोष दे रहे हैं हर चीज़ों के लिए, लेकिन एक बात तो हम सभी मानेंगे कि आईपीएल के आने के बाद क्रिकेट में जो पॉपुलैरिटी थी वो और बढ़ी है. तो हम क्या हॉकी को और इम्प्रूव करने मीन्स इसकी पॉपुलैरिटी और बढ़ाने के लिए, इसको और वो करने के लिए हमें इसमें भी कोई ऐसी लीग शुरू करनी चाहिए, या जो एंटरटेनमेंट पार्ट है, जो हल्का सा नहीं सर, जो एंटरटेनमेंट पार्ट है वो और ऐड करना चाहिए इसमें. सर 10 मिनट का मैच होना चाहिए क्या? नहीं सर, 10 मिनट नहीं सर, वो मेरी जो एंटरटेनमेंट पार्ट है, जो फैंस होते हैं वो तो देखते ही हैं, लेकिन जो एंटरटेनमेंट पार्ट है उसमें एक नॉर्मल जनता भी ऐड होती है. तो सर जो सर सीधा बोल देता हूँ मैं, चीयर लीडर्स की बात हो रही है यहाँ पे, जो कि हमारे भाई पीछे से बता रहे हैं. अभी जो हम हॉकी खेल रहे थे उसमें 70 मिनट की गेम है और 35 मिनट्स का एक हाफ है, 10 मिनट की ब्रेक फिर. तो अभी नया रूल शुरू हुआ है. अभी हम जो नेक्स्ट एशियन गेम खेल रहे हैं उसमें 15 मिनट का एक हाफ है और 4 क्वार्टर है उसमें. हाँ जी, इसमें और ज्यादा इंटरेस्ट आएगा और हॉकी और ज्यादा फास्ट देखने को मिलेगा. Sure sir. Sure. Thank you sir. We are totally out of time. Sorry. Thank you very much. मजा आ गया आपसे बात करके. एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे कप्तान के लिए. एंड आई वुड रिक्वेस्ट Ms. Renika Bishnoi ji, MLA Adhampur, Haryana. Ms. Renika Bishnoi, please if you can come and give a token of appreciation to our captain, a great soul. इतनी मेहनत करने वाले मैं कहूँ, जिन्होंने इतने दिल से हर एक बात बताई, अपनी पर्सनल लाइफ भी शेयर करी और पता लगा हमें कि दिल से भी उतना ही खूबसूरत है यार. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर. तो हमारे साथ दो स्पोर्ट्स के लेजेंड, एक सर बिशन सिंह बेदी जिन्होंने हमें आईपीएल की फुल फॉर्म बताई. इट्स नॉट इंडियन प्रीमियर लीग, इट्स इंडियन प्रॉफिट लीग, है ना. और दूसरे हमारे स्पोर्ट्स लेजेंड सरदार सिंह जी जिन्होंने बताया कि अगर हमें अंग्रेज किसी भी चीज के लिए चैलेंज करेंगे तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, चाहे वो आइस बकेट हो या कोई सा भी हो. एक बार जोरदार तालियां दोनों के लिए प्लीज. और थोड़ी सी अब हमने कहा चंडीगढ़ है, पंजाब है, थोड़ा सा भोजन की तरफ प्रस्थान करें हम. वील ब्रेक फॉर लंच एंड पोस्ट लंच वी हैव अनदर आइकॉन, अ म्यूजिक आइकॉन, सुखविंदर सिंह जी, वो हमारे साथ होंगे. एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज फिनिश, रैप अप योर लंच फटाफट से, एंड वील बी बैक हियर इन लेट्स से 20-25 मिनट्स. थैंक यू. अच्छा, समय थोड़ा बढ़ गया आपके खाने के लिए. यू कैन हैव मोर, 40 to 45 minutes. That's the maximum time you can have.
जो एक म्यूजिक डायरेक्टर भी है इस पे कीबोर्ड पे. देन वी ऑल्सो हैव अ गिटारिस्ट. और हमारा बैंड, ये ढोल तो है ही यार, पंजाब में ढोल ना हो तो बिना ढोल के मजा नहीं आता भाई. ऑल राइट, चेक. मैं सर के लिए एक बात कहना चाहूंगा. ऊपर सर देवलोक में भी जब अप्सराएं सुनती होंगी नीचे का संगीत, तो ऊपर कॉन्वर्सेशन कैसी होती होगी? एक दूसरे से कहती होगी, अरे सुन नीचे ना आतिफ गा रहा है. दूसरी कहती होगी, ओ गाने देना. फिर कहती होगी, आज देख नीचे हनी सिंह गा रहा है. तो कहती कोई बात नहीं, गाने देना. तीसरे दिन क्या होता है, नीचे सुखी जी गा रहे हैं, क्या बात कर रही है. तो मतलब जब सुखी जी गाते हैं तो ऊपर देवलोक में भी कमाल का माहौल हो जाता हुआ है. और जो माहौल सर ने बॉलीवुड में बनाया है, हमारे अंदर बनाया है, उस माहौल के बारे में आज बात करेंगे सर. इंडिया टुडे माइंड रॉक्स यूथ समिट, आज से बहुत कुछ सीखने को बेताब है यहाँ के जनता. तो पहली चीज सर, यूथ यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, इनके लिए क्या कहना चाहेंगे? First of all, I would love to say hello to everyone. आप सबको मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल. Just to inform you कि मैं यहाँ पे I have been invited over here just for a conversation and a press conference. I think so most of people, they are expecting me to perform over here, which isn't. I will be singing in between something if I feel like. It's more over talkative, what I guess. And I understand कि लोग की मैनू बगैर गाउन तो नहीं जान देंगे. I know that. I know that. But the concept is a conversation, not a discussion, not even, I think so, debate. It is just, we are going to share something very special about music, social things, and something which is really very important. And let's start it. बिल्कुल बिल्कुल. It's all about inspiration and motivation from a star जो सिर्फ ऐसे नहीं बट बहुत मेहनत करने के बाद एक स्टार बने. बहुत लंबा अरसा हो गया सर गाते गाते. शुरुआत आपने लता जी के गाने से करी एक स्टेज परफॉर्मेंस पे. Yes, I was very small. इत्तू से थे, इत्तू से. Yes. And I sang on a stage a song which was sung by Lata Mangeshkar ji. Saligama pa 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 gamale gaar mere sang mere sajna. The moment I don't have that recording, someone kept it, and I sound exactly like this. Saligama pa. So वहाँ पर एक प्रोफेशनल म्यूजिक कंपटीशन चल रहा था. The people were from Himachal, Rajasthan, Delhi, Chandigarh itself, and Punjab, of course. तो वो कंपटीशन में CM of Punjab, CM of Himachal, Rajasthan, VIPs were there. So उन्होंने कहा एक छोटा सा बच्चा जो है वो गाना चाहता है. तो they said we cannot allow because it's a mature competition and we cannot allow the kids. तो उन्होंने कहा कि वो बहुत ज़्यादा जिद कर रहा है. Then somehow they managed me to put on stage and I sang this song. और मुझसे ये गाना, at least I was told by the people, because I can't imagine what I was singing and how many times I was singing, but I sung उनकी फरमाइश की वजह से 6 times. भगवंत मान साहब. ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਖਿੰਦਰ ਭਾਜੀ एक रिक्वेस्ट इधरों भी आएगी गाण दी, एक रिक्वेस्ट इधरों भी आएगी, तो नाले मैं क्या साथ भी मिल जाएगा माड़ा. वो भी सिंगर है क्या? तुम सिंगर ठीक ठाक जी. ही इज अ डियर ब्रदर टू अस. और अब नेताजी भी हैं
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. So what I was saying when I was on a stage, तो वो गाना जो है 5 या 6 बार रिपीट हुआ और finally the judges and the VIP they decided me to give that trophy and I won that trophy. So तो ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, one of my favorite person, he is with us. He is a brilliant. और मैं आपको सुखी पाजी, सुखी जी अगर मैं कहूँगा तो भाभी जी नाराज तो नहीं कि उनका पर्सनल वो तो नहीं है कि सुखी जी सिर्फ वही बोलती हैं. You can call me whatever flirt also. जी तो सुखी जी कह के एड्रेस करेंगे, उसमें ज्यादा मिठास आती है सर. तो लता जी को इस बारे में जब पता लगा होगा तो उनका क्या रिएक्शन था कि उनका गाना आपने पहली दफा? No, लता जी से मुलाकात मेरी हुई when I went Bombay, not immediately. और I met Lata ji there at Rahman's place 14 years back, and she was there to sing Jiya Jale Jaan Jale, and I was just close to her and I wanted to speak to her, and Rahman ने कहा कि okay you can. तो मैंने उनके पाँव छुए and she blessed me. तो मैंने उनको वो किस्सा सुनाया and then she started laughing. Then first question from her, she told me, what do you do? I said, I sing. She said, yes, I know you are Sukhvinder Singh. I said, no. I said, no, I try to sing. Oh, you sing? And then by the time Rahman played Chaiya Chaiya song, and she was flabbergasted. And you got a Filmfare Award for that same song. मैं को सिंग जैसे बात करें ना, जितने भी सिंग यार सारे डांसर और सिंगर तो होते ही हैं ना. तो I think so. Moreover, I'm talking about my achievement, which we can change the topic. We can share some technical things. We can share important thing about music and whatever they expect from me. And because मैं अपनी achievement बारे दसांगा और मैं इतना कितना मैं इतना करता तो मैं पिघली जाना सारे दा सारा. So I think so we should go for some creative discussion or whatever. जी टेक्निकलिटीज की अगर बात करें सर तो आजकल काफी गाने ऐसे होते हैं जैसे सलमान खान जी ने भी गाना गाया हैंगओवर. तो आजकल मतलब इज इट दैट कि इतने अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं कि आवाज को रिफाइन कर दिया जाता है और बहुत लोग कहते हैं इनके अंदर सुर नहीं है, दे डोंट एक्सेप्ट दोस पीपल एज सिंगर्स, बट एंड प्रोडक्ट जो आता है वो अगर अच्छा निकल के आता है तो उसमें क्या बुराई है? Basically, there is one saying which is really very important. I agree with that saying. The world is made only for special people, and special people are very few. हम जो बात कर रहे हैं कि ऐसा होता है, there is a certain plugins we call in technical language. It's Antherus. Anther is the name of the plugin. तो वो ऐसी एक प्लगइन है, ऐसा एक फॉर्मेट है कि जो आउट ऑफ ट्यून गाते हैं उनको वो ट्यून में कर देता है, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं करता. जैसे वल्गैरिटी हम लोग बात करेंगे इन फ्यूचर अल्फाजों में, पोइट्री में, तो वो सारे नहीं कर रहे. वल्गैरिटी इज नॉट देयर इन गुलजार्स पोइट्री, इट इज नॉट देयर इन प्रसून जोशी's पोइट्री. It wasn't in Anand Bakshi or Sahib Sahab. It is not there with Javed Sahab. It is not there with Rahman, Gulzar and Sukhvinder. So we have bheed, crowd. जब हम लोग टेम्पल में जाते हैं, गुरुद्वारा साहब में जाते हैं, हम लोग दोनों में से एक शब्द इस्तेमाल करते हैं कि आज बहुत क्राउड है मंदिर में, आज गुरुद्वारा साहब में बहुत क्राउड है, बहुत रश है बाजी, आज बहुत रश है. तो एक और भी शब्द होता है जिसका इस्तेमाल ज़रूरी होता है कि क्या ये रश है या भक्त है. इज दिस क्राउड और इज दिस पीपल आर डिवोटीज, दोनों में से क्या है, श्रद्धालु हैं कि भीड़ है.
तो श्रद्धालु जो है वो नजर आता है, उसके चेहरे का सुकून, दैट कंसिस्टेंसी ऑन फेस, you feel you feel peace of mind behind standing behind these kind of people, and then you feel like to tell them कि these people are devotees. जो लोग ग्रीड के साथ आते हैं कि मेरा ये बिजनेस चल जाए, या वो फलाना मुझे बहुत तंग करता है वो मर जाए, वो ये हो जाए, तो वो ग्रीड के साथ, डिमांड के साथ आते हैं, वो उनको हम लोग क्राउड कहते हैं, उनको हम लोग डिवोटीज नहीं कहते। तो ये जिस तरह के जो लोग हैं, जो ऑटो ट्यूनर भी कहते हैं, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। ये चिप होती है, इसे एंथरस कहते हैं। एंथरस इज द मदरबोर्ड, एंड उसके जो आगे जो डिफाइन किया जाता है उसे ऑटो ट्यूनर भी कहा जाता है। ऑटो ट्यूनर जो लोग ट्यून में नहीं गाते उसे ट्यून में वो कंप्लीटली कर देता है। तो वो हर कोई नहीं करता, सारे नहीं करते, लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ है हमारी सोसाइटी में, सोसाइटी ऑफ म्यूजिक, वी आर लूजिंग नेचुरल ग्रोथ ऑफ सिंगिंग, वी आर लूजिंग पावर ऑफ आवर वोकल कोड, वी आर लूजिंग सेंसेस अबाउट म्यूजिक, because we started depending on these plugins. We actually started depending on these plugins because we know when someone, not all of us, few of singers, they go to the studio, they ask recordist, do you have that particular plugins which can help us? They say yes, we have. तो वो कुछ भी गाते हैं, oh good day, no, I can't give example, मेरे से बेसुरा नहीं गाया जाएगा। तो सुखी से पूछूं मैं कि so they sing in a talkative, I can explain because it is difficult for me to sing the way they sing. I'm not angry, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, उनको गाइड करने वालों ने ही उनको बिगाड़ा है। अदरवाइज ये पंजाब हो, महाराष्ट्र हो, where I stay, or Bengal हो, wherever in the world, capability और capacity लोगों में है। Singers की हम लोग, we are talking about music, we have a brilliant singer in Punjab, they are fabulous, they are fantabulous, and I listen to them, they are fantastic. तो सुखी भाई जी एक सवाल पूछूं कि कितने प्रतिशत सिंगर्स ये चीज करते हैं जो ऑटो ट्यूनिंग और ट्यूनर्स का इस्तेमाल, या कितने परसेंट म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं जो ये चीज करते हैं? I just guess by sixth sense because I do not have that much time, so I sit down and start counting how many percentage they do. I do not have that much time, but I guess if I listen someone, I guess from my sixth sense. I think so. It should be around 70 to 80% people are using this virus. They are eating poison for their throat, though they have fantastic talent, they have a fantastic music background, but they are dependent. ये बहुत लंबा टॉपिक नहीं है। I think so. I have got conviction in my sentences, whatever I have said. जी बिल्कुल। It should be understood easily by the common person. बिल्कुल। एक चीज और जानना चाहेंगे, मतलब आप जैसे बोल रहे हैं कि सिखाने आया हूँ मैं, बिल्कुल डेफिनेटली हम आपसे सीखना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे सिंगर्स भी हैं यहाँ पे। तो एक चीज होती है कि अगर रोमांटिक गाना गाते हैं हम लोग, तो जब भी कोई रोमांटिक नंबर गाते हैं तो इज इट कि हमें किसी को इमेजिन करके गाना चाहिए? Does that bring focus or does that lose your focus? No, it's correct. We have to imagine because of whatever the story we wrote, and we get order from the story about the song. कहानी से हमें गाने की सिचुएशन मिलती है। हमारा सिनेमा, आर्टिस्ट, आर्ट, फिल्म्स, मूवीज, ये सारा कुछ जो है ये ड्रीम है, ये ख्वाब है, ये इमेजिनेटरी ही है। अगर हम लोग अब मैंने जब गाना गाया था लाई भी ना गई निभाई भी ना गई, कैसे गाया था भाजी? अगर इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू सिंग। डायरेक्टर टोल्ड मी डायरेक्टर हो जाए सर, रिक्वेस्ट आ रही है, पंजाब की रिक्वेस्ट है, पंजाबियों की रिक्वेस्ट।
So, boys and girls, I was talking about plug-in, the virus. Exactly. I have got also that virus. One mic I have, which is for talkative. There's another one which is for singing. So I have a beautiful virus. लाई भी न गई तेरी भाई भी न गई, लाई भी न गई तेरी भाई भी न गई, हो मेरे मार दा जहान मैनू सारा, तेरी मेरी ओ टुट गई सोनिए जिवें टुटिया अंबर तो तारा, तेरी मेरी ओ टुट गई सोनिए जिवें टुटिया अंबर तो तारा, लाई भी न गई ते निभाई भी न गई, हो मेरे मार दा जहान मैनू सारा, तेरी मेरी ओ टुट गई सोनिए जिवें टुटिया अंबर तो तारा। सर मैं कहूँ कभी कभार ऐसा होता है कि हम लोग कहते हैं यार बंदा ना लिपसिंग कर रहा है, पीछे कैसेट चल रही होगी, तो मेरे से किसी की भी कसम खिलवा लो यार, आपके सामने हो रहा है, बिल्कुल लाइव परफॉर्मेंस, बिल्कुल ऐसा लगा नहीं कि आप लाइव गा रहे हैं, कैसेट चल रही है। इतनी ओरिजिनल आवाज, इतनी बिना किसी प्लग इन के, जैसे बोल रहे थे बिना किसी प्लग इन के, तो ऐसी होती है खूबसूरत आवाज, एक फिल्टर्ड आवाज। Very funny thing I would love to share with this song. The director and Shah Rukh, both of them, and I was there. Shah Rukh told me, Sukhi, what happened to you? It is not happening. You are not singing from heart. तो मैंने कहा भाईजान बात ये है कि इसमें ये गाना सैड है. So what? तो मैंने कहा मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ कि लाइव भी ना गई, निभाई भी ना गई, ऐसी कोई मोमेंट मेरी लाइफ में आई नहीं है, क्योंकि इसमें ये है कि लड़की ने दिल तोड़ा है. तो कहते क्यों देन? मैंने कहा आजकल तो हमने ही तोड़े हैं दिल तो एक्चुअली विच वॉज वेरी क्यूट फ्रॉम माई साइड. तो जो इमेजिन करना है वो बहुत करेक्ट जजमेंट है. किसी भी तरह का गाना हो, उसकी एक अपनी दुनिया बसा लेनी चाहिए. अगर वो डांसिंग है, जो आपको डायरेक्टर से नरेशन मिलती है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम नरेशन पे कंसंट्रेट नहीं करते. वी डोंट फील लाइक टू कंसंट्रेट ऑन लिसनिंग, बट देयर इज अ फैंटाबुलस थिंग आई कैन शेयर थ्रू टू माई एक्सपीरियंस कि जो सुन सकता है वो समझ सकता है, जो समझ लेगा वो कर लेगा. तो इफ समवन एक्सप्लेनिंग अबाउट द सिचुएशंस एंड वी शुड कंसंट्रेट, बिकॉज जब हम सुन रहे हैं तो हम समझ रहे हैं, जब हम समझ लेंगे तो कर भी लेंगे. तो इमेजिन करना किसी भी गाने को, चाहे वो छैया हो, चाहे वो हौले हौले से हवा लगती के बारे में एक बार मेरे को इन्होंने कहा था, फिल्म फेयर अवार्ड फॉर दैट सॉन्ग. आदित्य चोपड़ा उनके स्टूडियो में गए तो ही टोल्ड मी कि आप 4 बजे आने वाले थे, तो इट्स 6:30, बहुत लेट हैं आप. तो मैंने कहा आई एम वेरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, बिकॉज सलीम सुलेमान के साथ मेरी अंडरस्टैंडिंग ऐसी है कि इफ आई गेट लेट ऑल्सो दे ऑलवेज कंटिन्यू विद देयर प्रोडक्शन. दे डू पुट सम ऑफ इंस्ट्रूमेंट इनटू द सेम सॉन्ग. So I cannot say that the recording was stopped just because of I got delayed. He said no. ये यशराज की बात है. यशराज is the studio of these people, आदित्य जी, यशराज जी. तो उन्होंने कहा कि 4 बजे आपको आना था, आप 6:30 बजे आए. मैं कहा ये ऑफिस किसका है? कहते मेरा. मैं क्या ऑफिस टाइम आप कितने बजे आए? कहते मैं 4 बजे. मैं क्या ऑफिस टाइम 10 o'clock का होता है, आप कितना लेट आए?
So he told me कि आप कि बहुत कम रोमांटिक गाते हैं। मैं कहा नहीं, मुझसे जैसा मेरे से ज़्यादा डांसिंग नंबर ही ज़्यादा इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में गवाए जाते हैं। कहते रोमांटिक गाएंगे? मैं कहा आई एम वेरी रोमांटिक। And I remember the moment I went on mic and he was expecting कि the song will happen or not, because शाहरुख ने insist किया था आदित्य जी को कि I believe Sukhi can deliver the best. So I was there on mic, Aditya ji was there in front of me in the panel, in the console room, and I sung 1 or 2 lines. Then he came inside the theater where I was singing. He hugged me, he said, I love you and this and that. Why? How it was possible for me? I imagined, I created a world by my own imagination. They narrated me एक character है, बहुत simple है, सीधा है, साधारण है, and उसका ये नाम है, एक चश्मा सा पहना है, रिक्शा में एक लड़की है, ऐसी है, ऐसी ऐसे। तो उस कैरेक्टर की जगह मैंने अपने आप को रख लिया। ये ज़रूरी है इमेजिन करके गाना। तो if someone use this format, I think so they can go ahead with this format. जी, और मुझे लगता है वो जो 4 से 6:30 का जो टाइम था ना, वही रोमांटिक टाइम था शायद, जब आप लेट हुए थे। तो उसके बाद इतना बढ़िया गाना अपने आप ही निकल गया होगा सर। Always, I am always. और बिल्कुल जैसे आपने कहा कि आदि सर ने आपको हक करा 1-2 लाइनों के बाद, तो यहाँ तो भीड़ लग जाएगी आपको हक करने की, तो दूर से ही झप्पी पालेंगे आप। एक बार 2 लाइनें उस गाने की हो जाए सर प्लीज। हौले हौले से हवा लगती है। I will just sing. हौले हौले से हवा लगती है ना, हौले हौले से दुआ लगती है ना, हौले हौले हो जाएगा प्यार चलेगा, हौले हौले हो जाएगा प्यार। इसी गाने के लिए सर को फिल्म फेयर अवार्ड में मिला फॉर बेस्ट प्लेबैक सिंगर। फिल्म फेयर अवार्ड इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, देयर आर मेनी अदर अवार्ड्स आल्सो हैव, वी हैव वेरी इम्पोर्टेंट अवार्ड्स आल्सो, बट आई बिलीव rewards is always bigger than any award. Award is decided by 4 or 5 people. Reward is decided by hearts. I have great regard, great respect for awards. They are like a gift you get on your birthday, marriage anniversary, any of celebration. You get bouquet, some other awards, gold, some whatever. It's like a gift, but I think so reward is very wide, very fabulous. जी, और गाना जब आप इंडस्ट्री में आए उसके बाद आपने कहा कि इमेजिन करना पड़ता है किसी को, लेकिन गाना गाने के लिए, सीखने के लिए, एक आइडियलाइज करने के लिए आपने पंचम दा को पीर बाबा कहा। Yes, I said. तो वो एक जो उनके आप कितने टाइम से फॉलो रहे हैं, और उनका कोई एक ऐसा गाना जो आप कभी भी कहीं भी इमेजिन करके वो गाना गा सकते हैं कभी? I love his all melody. I didn't met Panchamda because that time I wasn't in Mumbai, Bombay. So I missed him when I sang Chaiya, and people started recognizing me. That time I was really missing Panchamda, R.D. Burman, Rahul De Burman. I was the same thing I told Rahman also, and he said, me too, is a big fan of Rahman, Panchamda Rahulda. He was a complete composer. I really love his every song. I remember many of songs. I can start, I can sing any moment in any circumstances, in any situation. I sing the R.D. Burman's melody. I remember one of the गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल, may I know the gentleman who's handling this console? Yes, that's right. Can you put this plugins into the same mic? While I will be talking, you can switch on.
गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। ओ मैं क्या 4 बोतल का नशा तो ऐदा ही आ गया। मैं क्या भाजी, मतलब गानों के थ्रू इतना सुरूर बन जाता है। और कोई ऐसी चीज पंचम दा की जो आपको लगता है म्यूजिक डायरेक्टर से बहुत अलग है, कुछ ऐसा जो शायद हम लोग को नहीं मालूम होगा, क्योंकि यू बीन अ बिग फॉलोअर एंड बिग फैन ऑफ हिज। He was a special. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सदियों के लिए एग्जाम्पल बन जाते हैं। I wish, I pray in future we should get another Lata Mangeshkar, but it is difficult too. Lata, आशा भोसले जी एंड मेरे बचपन में ड्रीम में, आप लोगों ने कभी लता जी को लाल जोड़े में नहीं देखा होगा, कभी नहीं। आई सॉ इन माई चाइल्डहुड, ड्रीम आता था, उसमें देवी का रूप था, लाल जोड़ा, और उसमें उनके माथे पे सिंदूर भी था। और मैं छोटा था और मेरी उंगली को पकड़ के वो सिर्फ इतना बोलती थी कि मैं लता, और मैं उनकी तरफ जाता था। हालांकि मेरी ज़्यादा पटती आशा जी से है, दोनों बहनें साथ साथ में रहती हैं। मैं जब भी वहाँ जाता हूँ मेरी यहाँ हवाइयाँ उड़ी होती हैं कि मैं जावा केड़े पासे। अगर तो आशा जी को मिलके मैं लता जी से नहीं मिला तो मुझे लगता है कि रास्ते में मेरे पे बहुत बड़ा केस हो जाएगा। और ऑफ कोर्स तो लता जी जो हैं, even Asha ji has great regard for Lata ji also. Both of them, they are, we call them in a very desi language, one piece. Panchamda. ये एग्जाम्पल है मोजार्ट, बीथोवन, द पर्सन जो सुन नहीं सकता था, एंड ही वाज यूज्ड टू क्रिएट सिम्फोनी, ही वाज यूज्ड टू प्ले। सो ऐसे लोग, हम लोग कहते कि जो सुन नहीं सकता उसकी जिंदगी खत्म है। एक ऐसा इंसान बीथोवन जो सुन नहीं सकता था और उसने सिम्फनी लिखी, उसने प्ले किया और लोगों ने उसे सराहा। तो ये लोग बहुत रेयर होते हैं। आदि बर्मन कुछ भी उन्होंने जो किया, आई सॉ विद माई ओन आईज इन द कार, रहमान ऑलवेज लिसन पंचमदा ऑल्सो, he always listened विशाल भारद्वाज also, I saw. तो ये लोग बड़े अलग होते हैं और उनका हम बिग फैन जी। और लता जी के बहुत बड़े फैन आप भी हैं, हम भी हैं। और मतलब ये बड़ी शायद अलग सी चीज है, मुझे पता नहीं, बट कभी किसी फीमेल सिंगर का गाना मेल गाते हुए कम सुना है। कोई लता जी का ऐसा गाना जो आप गुनगुनाते थे या गुनगुना अभी भी गुनगुनाते हो? कोई एक ऐसा गाना? मुझे many of songs of which are sung by हाँ yes. कोई भी जो आपको पसंद हो सर, लता जी का कोई ऐसा? 16 बरस की 16 बरस की बाली उम्र को सलाम है, प्यार तेरी पहली नजर को सलाम, सलाम प्यार तेरी पहली नजर को सलाम। 16 बरस की 16 बरस की बाली उम्र को सलाम है, प्यार तेरी पहली नजर को सलाम, सलाम है प्यार तेरी पहली नजर को सलाम। मैं कहूँगा सलाम इस आवाज को
और हम कहते हैं कि his voice is the voice of patriotism, कि बहुत सारे आपने ऐसे देशभक्ति के भी गाने गाए। एक ऐसा गाना गाया जिससे हमारे देश को इतना बड़ा नाम मिला कि ऑस्कर अवार्ड मिल गया उस गाने को, जय हो गाना मिला। इसके अलावा टू एनकरेज एंड फिल इन एनॉर्मस एनर्जी इन द यूथ, आपने चक दे गाना गाया। तो इन दोनों गानों में से सर विच इज मोर क्लोज टू योर हार्ट? चक दे गाना है, एक जय हो गाना है, तो थोड़ा सा मुश्किल है चूज करना, बट इन दोनों में से कौन सा गाना चूज करेंगे आप? Which one? अच्छा, यहाँ पूछते हैं, चक दे, हाउ मेनी पीपल फॉर चक दे? अब रिपीट मत करना, हाउ मेनी पीपल फॉर जय हो नाउ? जय हो के लिए दोनों हाथ ऊपर हैं जी। I wish I could hear you what exactly you said. I don't. सर मैं कह रहा हूँ कि दो गाने ऐसे आए जिनमें चूज करना थोड़ा सा मुश्किल है, ज्यादा पसंद कौन सा होगा आपको? चक दे इंडिया या फिर जय हो स्लमडॉग मिलियनेयर? Listen. देखिए, नहीं छटना नारे बाजी। No, I can't insist you that listen to me also. You can shout or you can enjoy also. एक गाने ने कुकड़ थोड़ी है कि दोनों की लड़ाई करानी है। तो गानों में मतलब और both are very beautiful. मजा किसमें आया ज्यादा गाने में? Don't convert these songs into कुकड़. I just want to share fantastic thing because the motive for the reason I'm here. Believe. जैसे हम कहते हैं कि यकीन ही परमात्मा है, यकीन ईश्वर है, यकीन ही वाहिगुरु है। Believe. यकीन। हम लोग यकीन करते हैं, हम फेथ करते हैं। फेथ में ही मोहब्बत है, फेथ ही इश्क है, फेथ ही सारा कुछ है। तो ये हम लोग बचपन से सुनते आए हैं, तो उसको मैंने यहाँ भी इम्प्लीमेंट किया। When this song was recorded for Yuvraj, for Subhash, this Jai Ho, and somehow Subhash told Rahman in my studio. Gulzar Sahab was there, and Rahman and Subhash ji was there also, me too. And Subhash said, Rahman, the song is good, but doesn't suit to my situation. I want something different. I want another song. Will you compose it? As usual, it happened in our film industry. हम लोग गाने चेंज कर सकते हैं, कंपोजर को कभी कभी चेंज करना पड़ता है। एंड जस्ट 10 minutes बिफोर गुलजार साहब ने मेरे को गाना लिखवाया था, जरी वाले नीले आसमाने के तले, आजा आजा जिंदे शामी आने के तले। एंड रहमान वांटेड दिस सॉन्ग, Subhash ji should like it. Though Subhash ji wasn't agree, he said it is good song, but Rahman, please, my humble request you to compose something else. Even I tried my level best to convince Subhash ji also, but he said, he disagreed. He said no. So everybody was sad. And both of them, they went back. Rahman Chennai चले गए और Subhash ji went Bandra अपने घर पे। मैं और गुलजार साहब रह गए। तो सिंपली आई wanted to do something special. मैं गुलजार साहब को बोला, समोसे खाओगे? He said, खा लांगे। तो how much time? मैंने कहा तिवारी साढ़े कोल ही है स्टूडियो दे, गर्मा गर्म एकदम चोंदे चोंदे होंगे। It will take another 15-20 minutes. तो मैंने देख के कहते कहते ਆਪਾਂ 15-20 मिनट करांगे की? मैं कहा ये भी गल ठीक है। मैं कहा कम कर ले, आप एक गाना गा लेने। I will give you one CD, मेरे तो स्टूडियो च है ही है। Whenever I feel like I will listen to you, listen the song. If you feel like you listen also, I will give you the CD. I will transfer it. Yes. But why you want to sing this song? Gulzar Sahab ने क्या कहते, already the song has been rejected by the director, and it is also avoided by the composer also. So now we should forget about the song. Jai Ho is no more, nothing. There's no song called Aaja Zari Wale. I said, गुलजार साहब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा यकीन जो है, मेरा बिलीव ये कहता है कि द सॉन्ग इज रियली वेरी गुड। आई फील लाइक देयर इज इंट्यूशन
ओके अगर इंट्यूशन है यू गो अहेड. एंड इतनी मस्ती में गाया, ऐसा मूड था. बिकॉज आई वॉज़न्ट इन दैट मूड कि गाना ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुका है. नो नो नो, आई वॉज जस्ट बिकॉज आई रियली लव माई सेल्फ व्हेन आई run and when I sing music with passion. I really love myself too. I become my fan also. That, तो वो गाना गाया तो उन्होंने कहा वो बड़ा चंगा गाया तो. एंड 2 या 3 दिन के बाद कहीं गुलजार साहब ने वो सीडी किसी के हाथों चेन्नई भिजवा दी रहमान को. रहमान ने मेरे को फ़ोन किया, हेलो हाय हॉलीवुड सिंगर, यस हाउ आर यू. आई सेड हाउ कम Hollywood singer, suddenly how come? Though I sung previously also in 2 films in New York. We did recording for Inside Man and Bombay Dream in London. He said, your song, that Jaho you sung, Gulzar Sahab sent me the CD and it went into Slumdog Millionaire. I said, what is that? He said, this is the film. I said, I have 6 dogs, but they are all slim, not... They're not from any slum. So that he said, okay, Danny boy want to speak to you. I said, who he is? No, I didn't say who is. I said, what it is? He said, it is not a thing, it's a man. He said, speak to him. Hi, hello, hi, I heard a few songs of yours. I'm a big fan of yours. So, what was that? After 1.5 months or 2 months, the same person, A.R. Rahman, Allah Rakha Rahman, called me and he said, congratulations, your song, Jai Ho, nominated for an Oscar and both of us, we will go and perform over there. So, it was a belief. It was belief. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ये सोच के कि हाँ जो हो रहा है वो बहुत ख़राब है, तो हर चीज़ ख़राब हो जाती है. अगर हम किसी पर्सन के बारे में कहते हैं कि ये पर्सन जो है ये बहुत ही नेगेटिव है, बहुत ही घटिया है, तो हमारी थिंकिंग में उसके बारे में सिवाय नेगेटिविटी और ख़राब के अलावा कुछ भी नहीं आता. वी ऑलवेज बी पॉजिटिव, वी ऑलवेज हैज़ टू बी पॉजिटिव कि दुनिया खूबसूरत है, ये इंसान अच्छा है, वो चाहे ना हो या कैसा भी हो, बट थिंक बेटर अबाउट इट. अपने आप ऑटोमेटिकली जो चीज़ें, अगर आपको लगता है कि ये लड़की नहीं पटा सकते तो आप तो क्या आपका बाप भी नहीं पटा सकता. अच्छा, तो ये जिक्र आपने छेड़ दिया. इफ यू हैव इंट्यूशन, इफ यू, आई एम सॉरी, ये कहीं मेरे लिए नेगेटिव तो नहीं हो जाएगा. तो उसके लिए हाँ तरीके थोड़े डिसेंट होने चाहिए बताने के लिए. आई हैव दैट, आई हैव ओपन द यूनिवर्सिटी फॉर दैट. इफ यू कम एंड स्टडी अबाउट इट. एक चीज पूछना चाहूंगा सर, आई एम सॉरी. तो बिलीव, यकीन बहुत स्ट्रांग चीज होती है. और कितने भी लोग होते हैं, एक पर्सन है हमारे द ब्यूटीफुल स्टेट पंजाब से ही, उनको लोग उनके नाम से पीएचडी भी कर रहे हैं कुछ. आई वॉज शॉक्ड कि यार ऐसे कैसे, उस पर्सन ने किया क्या. न गाना आता है, न बात करनी आती है, मैनर्स नहीं है, एटिकेट्स नहीं है, सेंसेस ऑफ टॉक नहीं है, पॉलिश्ड पर्सन नहीं है, पॉश नहीं है, तो कैसे करेंगे. सेकेंड डे माई ओपिनियन टू दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट वॉज द सेम. आई shouted on that particular student कि how shame on you, you are doing PhD on such a worst person, such a ugly person, such a stupid, such a ridiculous person. And third, fifth, sixth, seventh day, and within 10 days, automatically मुझे ये feel हुआ कि सुखविंदर सिंह, you are wrong. No one is ugly, bad, rubbish or ridiculous. It is you
who is thinking like that. अगर तुम अपने बारे में सोचोगे कि तुमको ईश्वर ने इतनी बड़ी जगह दी है, आगे भी देंगे, तो कितनी सारी गलतियां तुमसे भी हुई हैं, कितने सारे गुनाह तुमसे भी हुए हैं, लेकिन फिर भी ईश्वर ने, परमात्मा वाहेगुरु अल्लाह ने तुम्हें नवाजा है, तो ये हक किसी और का भी बनता है. तो देन आई वॉज क्वाइट अबाउट, आई क्विट फ्रॉम दैट थिंग कि मैंने उसके बाद में उस पर्सन के बारे में कुछ नहीं बोला. हालांकि है बंदा गंदा ही. मैंने कहा हालांकि है वो बंदा गंदा ही. एनीवे, सो बिलीव, यकीन बहुत ही सेक्सी होता है. बस दैट्स इट. सर दिल दी गल करिए आप हुण. दिल दी गल करिए ते बड़ी छोटी उम्र च डिस्को होना शुरू हो गया सीगा तुहाडे दिल च. मैं सुनिया स्कूल टाइम दी गल है जब तुहाडा दिल आया सीगा एक टीचर उत्ते. मीरा नायर. अभी ढोल से मुझे याद आ गया. ढोल तो मीरा नायर. हैव यू सीन मीरा नायर इन फोटोग्राफ्स और मेट समवन? मीरा नायर इज अ वेरी टॉल लेडी. वेरी टॉल. वड्डियां वड्डियां अखां, डेले. And she was there in my studio. The time which I gave to her was about 2:30. So I got delayed. So she shouted on me, "Oh, I'm not going to work with you." I was supposed to compose a song for her movie Monsoon Wedding, and she said, "I'm not going to allow you to compose any song for me." I said, "Okay, I'm sorry, I got delayed. I'm late, I'm very sorry." She said, "No, I just wanted to see who's so-called Sukhvinder Singh. I spoke to Rahman, gave music in my film. He said, no, Sukhvinder will be the right person to compose for this movie. So I just waited for you, not to work with you. I just waited for you to see who's so-called Sukhvinder Singh. And by the way, my name is Meera Nair. I'm not from your so-called Bollywood. We people are from Hollywood. We are very particular, very punctual. You didn't even answer my mail or mail. I said, I have no idea about mail and all. I am a female person. Anyway, उसके बाद उन्होंने जोर से टेबल पे हाथ मारा. मेरे ही स्टूडियो में, हम लोग के ही स्टूडियो में, कैबिन में. And she said, "Okay, goodbye, Mr. Sukhvinder Singh." And उनके साथ में दो बहुत ही, so मेरे को लगा कि यार ये जाए ये दो ना जाए. तो एनीवे, तो बात हम लोग करे थे कि बिलीव, बात हम करे थे अच्छा सोचना, नेगेटिव नहीं. तो ये बोल के जैसे वो बाहर निकली, मेन गेट पे पहुंची, मैंने उनको, मीरा नायर जी को बोला, मैंने कहा, "एक्सक्यूज मी." शी सेड, "व्हाट?" मेरे पास में आके, "व्हाट?" आई सेड, "यू लुक गुड." और मेरे गाल पे पकड़ा. एक्चुअली शी इज नैयर, नॉट नायर. अमृतसर दी है. तो गल पुट के कहते खोता. कहती, वेयर इज माई सॉन्ग, वेयर इज माई सॉन्ग? आई सेड, "योर सॉन्ग इज रेडी, कम इनसाइड द स्टूडियो, आई विल प्ले इट." एंड दैट सॉन्ग वाज के अज मेरा जी करदा हो मैं उड़ जा नाल हवावा, रब्बा रब्बा मी बरसा साडी कोठी दाने पा. रब्बा रब्बा मी बरसा साडी कोठी दाने पा. Everybody sing. रब्बा रब्बा मी बरसा साडी कोठी दाने पा. कावा 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 कि अज मेरा जी करदा, कि अज मेरा जी करदा हो मैं उड़ जा नाल हवावां. अज मेरा जी करदा, रब्बा रब्बा मी बरसा.
मेरा जी करदा ते अज मेरा जी करदा हो मैं उड़ जा नाल हवावा रब्बा 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 मी वर्षा रब्बा रब्बा मी वर्षा साडी कोठी दाने पा थैंक यू वेरी मच थैंक यू आवाज की ताकत है, ये आवाज की ताकत है। एंड ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਈ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਗਾਣਾ, ਆਹ ਗਾਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਫੈਸਟੀਵਲ, ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਇਹੀ ਗਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਗਾਣੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੈਰੀਅਰ ਟੁੱਟ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਜਰਾ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸੋ। you remember that? Can you put later on the long delay into it? Not now because मस्कट में मिडिल ईस्ट फेस्टिवल था, तो हमारे फिल्म इंडस्ट्री के फैमिली लाइक ऑल ऑफ अस, मी, सैफ, रानी जी, अक्षय एंड प्रीति एंड ऑल वी वर टुगेदर। तो वहाँ पर मेरे को पता नहीं ऐसा, इट वाज फॉर द मिडिल ईस्ट वीमेंस, द कॉन्सर्ट वाज फॉर द स्पेसिफिकली वाज मिडिल ईस्ट वीमेंस। तो मिडिल ईस्ट में इस्लामिक कानून के अकॉर्डिंगली वन कैनॉट stand behind women also, specifically in a Muscat, you know, it is a very particular Islamic country. तो मेरे को लगा, मैंने कहा यार की करिए, तो स्टेज पे सब लोग वही कर रहे थे as usual we do on a stage, firing and very stylish performance, everybody they do the best of them. मैंने माइक लिया और जाके रेत पे खड़ा हो गया front of the ladies, but I was with the distance, there was a distance between me and the ladies of Middle East. Anyway, I don't need to say excuse me, but I hope, thank you. It isn't interesting, it is, thank you. तो वहाँ पे मुझे लगा कि मैं यहाँ पर क्या गाऊँ, तो मैंने अमर, he is one of the leading magician of our concerts and he is a very creative. तो मैंने इनको कहा कि मैं कामा कामा गाना गाऊंगा, तो he and Saif Ali, he started laughing. Saif Ali and Akshay Vandam, they both of them they started laughing. कहते ले भाई ये तो फंसा कि Middle East. A song for women of Middle East Festival and singing Punjabi Gana. Gao, 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 Tansen Saab. The meaning was कि लुटाओ अपने आप नो. And there was some reason. And I just want to share with through to my melody कि वो reason क्या था. Just 2-3 lines. Can you put the long in the glass? धोखा हो गया, धोखा। I'm scared कि मुंह ना मर जाए पीछे। कि आज मेरा जी करदा मैं उड़ जा नाल हवावा कि आज मेरा जी करदा जैसे आजान गाते हैं उनके यहाँ मिडिल ईस्ट में कि आज मेरा जी करदा हो मैं उड़ जा नाल हवावा हो मैं उड़ जा नाल हवा कि अज मेरा जी करदा मैं उड़ जा नाल हवा
एक लेडी उनमें से उठ के आई, और बुरखे में आपको एज ग्रुप नहीं पता चलता, और वो मेरी तरफ बढ़ी और इतने यकीन के साथ उन्होंने पास में आके, शी वॉज अ मदरली लेडी, एंड मैंने उनके पाँव छुए जो उनके ट्रेडिशन में नहीं होता है, एंड somehow she managed me to blessed me in an Indian style, ऐसा करके मेरे माथे का पसीना पहुंचा। तो ये बेसिकली ये अपार्ट फ्रॉम अचीवमेंट, व्हाट आई एम शेयरिंग विथ यू, कि पैशन जो है ना वो बड़ी खूबसूरत चीज़ है। पैशन इज अ वेरी ब्यूटीफुल, इट्स समथिंग विच इज द वन एंड ओनली वन। अगर आपके अंदर पैशन होता है तो फैशन अपने आप प्रोड्यूस होता है। आई प्रेफर टैलेंट एंड स्टाइल कॉम्बिनेशन, और जब हम स्टाइल और टैलेंट कॉम्बिनेशन रखते हैं तो रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि हम लोग स्टाइल को प्रेफरेंस देते हैं। कॉन्सर्ट के लिए आपकी अनाउंसमेंट हो रही है और आप आईने के सामने खड़े हो, बालों को संवार रहे हो, एक बार संवार लिया, एक बार पहन लिया, खसमानू खाए हो ना, है ना। नाउ इट्स अ टर्न फॉर टैलेंट एंड स्टाइल, दिस कॉम्बिनेशन आई लव एंड आई हैव। मैं वो गल बातें करन दे बाद मैनू पता चलिया, मतलब थोड़ा सा सेंस करते ना कि किशन कन्हैया तरह रहे हो आप, बिल्कुल नॉटी रहे हो शुरू से ही। और ये बात बीच में रह गई थी कि आपका पहला प्यार वो शायद स्कूल टाइम पे किसी टीचर पे आपका क्रश हुआ था। मैंने टीचर को किस कर दिया था। तो उस एज में दिल में मतलब डिस्को होनी शुरू हो गई थी। इट वॉज एंड दैट ओके ग्रेट, दैट किस that was today's kiss. That kiss was today's kiss. Actually क्या होता है कि जब आप, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਲਾਡ ਨਾਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ, ਯੂ ਡੋਂਟ ਸਾਊਂਡ ਚੀਪ, ਇਟ ਸਾਊਂਡ ਵੈਰੀ ਲਾਡੀ ਪਾਰੀ ਵਾਲਾ। I can't speak about that, but it is. But same sentences, same words. अगर कोई इस तरह का व्यक्ति भी बोलता तो फिर वो गालां जियां लगदियां। ते कृष्ण जी वाली गल, I follow them, I follow him. He is really ideal of everyone, but it isn't that. लोगों ने मैं देखा भोलेनाथ जी का नाम लैके शराबा ही पी जाते हैं, जो मर्जी देखो बाबा जी शराबी थोड़ी थी। अच्छा मतलब कृष्ण, हम तो कृष्ण जी हैं, मतलब 6-7 कुड़ियाँ चिड़ियाँ जी हैं। अच्छा हम तो कृष्ण जी को मानते हैं। अच्छा कृष्ण जी आई काम करते थे, हम तो भोलेनाथ जी के उपासक हैं। मतलब भोलेनाथ जी के पास पी जाओ शराब। भोलेनाथ जी वॉज नॉट ड्रंक गॉड, ठीक है, कभी कदाई थोड़ी बहुत भंग भुंग पी लेंदे सी, बट he was not considered a zapped। ते कृष्ण जी का थोड़ा जा एक्सप्रेशन I have, I love that। ते एक और गल, मतलब आपसे बात करके, आपके गाने सुन के ऐसा लगता है कि यार परफेक्शन इज हियर, परफेक्शन यहाँ है। बट कोई एक ऐसा गाना जिसको गाने में आपको एक के बाद दूसरा टेक, तीसरा टेक लेना पड़ा, मुश्किल आई जिस गाने को गाने में? दे आर शाउटिंग फॉर जय हो और चक दे। जस्ट अ सेकंड, एक सवाल था मेरा कि कोई ऐसा गाना जिसको गाने में, जस्ट अ सेकंड, कोई ऐसा गाना जिसको गाने में, किसी गाने को गाने में सुखी पाजी को थोड़ी सी ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़े? एक्चुअली अगर गाने को तकलीफ से गाया जाए तो सुनने वालों को भी तकलीफ होती है।
ये बात सच्ची है कि अगर आप बात तकलीफ से कह रहे हो, तो अगर कह रहे हैं तो इसका मतलब आप किसी को सुनाने के लिए कह रहे हैं, तो सामने वाले को सुनने में भी तकलीफ होगी। अगर आप खुशी से गाते हो तो सामने वाला भी खुश होगा। अगर आप तकलीफ से ही गाते हो, थोड़ी आप दी तो सामने वाले दी भी ऑलराइट। सो एफर्ट, लेकिन एक बार एक एफर्ट मुझे करना पड़ा था, बट दैट वाज द फर्स्ट एंड लास्ट। लता जी ने बहुत सालों पहले एक बार कहीं अनाउंस किया था, कि नुसरत साहब जो है वो प्योर क्लासिकल नहीं गाते हैं। इस बात को लेकर नुसरत साहब बड़े नाराज हो गए थे, तो उन्होंने एक गाना बनाया था लता जी के लिए। तो इस बात को लेकर लता जी ने जब स्टेटमेंट दिया था कि नुसरत साहब जो है वो प्योर क्लासिकल नहीं गाते, तो नुसरत साहब बहुत नाराज हो गए थे। तो एक फिल्म का म्यूजिक करे थे वो कच्चे धागे, अजय देवगन एंड ऑल स्टार, सैफ एंड ऑल। तो उन्होंने एक गाना कंपोज किया था नुसरत साहब ने। सेम गाना उन्होंने लता जी से गवाना था और सेम गाना उन्होंने खुद गाना था। इट वॉज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वेरी कॉम्प्लिकेटेड। लता जी ने इस एज में वो गाना एक्सेप्ट किया, ये बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी। शी कुडंट से नो टू नुसरत साहब, दो शी हैड ग्रेट रिगार्ड फॉर नुसरत साहब, बट सिंपली शी गिव स्टेटमेंट अबाउट नुसरत साहब कि वो प्योर क्लासिकल नहीं गाते, बट इट वॉज नेसेसरी और नॉट, आई डोंट वांट टू पुट माई सेल्फ इनटू इट दिस टॉपिक। एंड एनीवे, तो वो गाना लता जी ने गाया विच वॉज गुड। इट वॉजंट अ लता मंगेशकर at her young age potential, but it was fine. Now it was turn of Nusrat Sahab कि अब मैं जब गाऊंगा एंड मेरा जो वो आक्रोश है, मेरा जो वो रंज है, मेरा जो गिला है कि मेरे को ऐसा क्यों कहा गया, वो लोगों के सामने आएगा कि नुसरत साहब ने क्या गाया यार। By the time it was a bad luck for all of us, it was a bad luck of every music lover that Nusrat Saab died. And the film was about to release, and these people started searching me. I was in Hyderabad, and somehow they managed me to contact, and they said, you have to come right away tonight and to record song. It's composed by Nusrat Saab. तो वो नुसरत साहब ने गाना था। अब उनकी डेथ की वजह से वो ट्रैक जो पड़ा रह गया। जब मैंने ट्रैक सुना तो मेरे को उन्होंने कहा कि आप ये सीडी ले लीजिए, 8 या 10 दिन आप इस प्रैक्टिस कीजिए। तो हम चाहते आप ही गाइए, क्योंकि फिल्म जो है 1 मंथ के बाद रिलीज है। दिस इज द लास्ट सॉन्ग, एंड नुसरत साहब गाना चाहते थे, तो वो मेरे लिए वो ब्लेसिंग बन के आ गया। दो इट वॉज सपोज्ड टू बी चैलेंज फॉर मी, बट आई डिडंट टुक दैट सॉन्ग एज चैलेंज, आई टुक दैट सॉन्ग एज ब्लेसिंग, आशीर्वाद ऑफ नुसरत साहब। तो मैंने अमर हल्दीपुर, वन ऑफ द म्यूजिक अरेंजर ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉन्ग, आई रिक्वेस्ट दैट फेलो कि आप एक काम करिए, अभी कर लीजिए, बिकॉज मुझे जिस तरह आप सोच रहे हैं कि चैलेंज है, इट इज नॉट चैलेंज, इट इज ब्लेसिंग ऑफ नुसरत साहब फॉर मी। ऑटोमेटिकली ये मेरे लिए एक आशीर्वाद बन के आया है। एंड दैट सॉन्ग जो है वो इतना टफ हो सकता था, बट इट हैपेंड इन हाफ एन आवर। वो ऊपर खुदा आसमानी चे जहां सब है, मगर है तुझे ढूंढे ये नजर तो आया ना। तो कमाल सर, आई थिंक सो। वी आधे घंटे के अंदर आपने वो गाना कंप्लीट कर दिया। अब एक मतलब बातें तो जितनी भी आपने कही हैं सुखी भाजी, मतलब मुझे नहीं लगता किसी को भी वो सारी अंदर की बातें पता थी। बस एक आखिरी गुजारिश जो सबकी यहाँ पे, यू कैन चूज इधर चक दे और नाच सकते हम।
वादे दीदे आसमान के तले जय हो एवरीबॉडी जय हो आजा आजा जिंदे शामी यानी के तले आजा जरी वादे दीदे आसमान के तले जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो आजा आजा जिंदे शामी आने के तले आजा दरी वादे दीदे आसमान के तले जय हो जय हो शबे दिल जय हो everybody come on jump on जय हो शबे दिल जय हो जय हो जय हो जय हो सुखी बाजी की। now we have चक दो फटे मेगा बाजी। एक लास्ट गुजारिश, नहीं तो पंजाबियों का दिल दुख जाएगा। वो तो सुखी बाजी सुख देते हैं, दुख तो देते ही नहीं है। कुछ करिए नस नस मेरी खोले अब कुछ करिए कुछ करिए बस बस बड़ा बोले अब कुछ करिए कोई तो चल जिद फड़िए तू बेतरिए जा मरिए कोई तो चल जिद फड़िए तू बेतरिए जा मरिए चक दे इंडिया चक दे इंडिया एवरीबॉडी चक दे इंडिया चक दे इंडिया कुछ करिए नस नस मेरी खोले अब कुछ करिए बस बस बड़ा बोले अब कुछ करिए कोई तो चल जिद फड़िए तू बेतरिए क्या मरिए कोई तो चल जिद फड़िए तू बेतरिए क्या मरिए एवरीबॉडी सिंग ऑन चक दे इंडिया चक दे इंडिया चक दे इंडिया चक दे इंडिया। So before I leave, this is my request to you. Before I leave, आप लोग सब अपने वेबसाइट पे, फेसबुक पे, मैसेजेस में ध्यानचंद जी के लिए, भारत रत्न के लिए वोट डालें। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। I have already done. He deserve. तो एक थोड़ा सा हम डिमांडिंग थोड़े ज्यादा हो रहे हैं। मेरी बात सुनो, ऐसा ना हो कि मैं यहाँ सेटल हो जाऊं। सर एक सुखी बाजी एक थोड़ी सी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। बप्पी दा यहाँ पे आए थे माइंड रॉक्स में, इंडिया टुडे माइंड रॉक समिट में। तो इस यूथ समिट में उन्होंने अपना एक वर्जन गाया था इंडिया टुडे माइंड रॉक्स के लिए। तो किसी चीज के अंदर इंटीग्रेट करते हुए, यूथ को डेडिकेट करते हुए कोई अगर एक गाना हो जाए। इंडिया टुडे माइंड रॉक्स यूथ समिट, इसको शाहरुख खान बन के आओगे? ईदाई मेरा यार दिया रब्बा खैर होवे हो दे दम दी हो तेरे इश्क नचाया कर थैया। वो यार है जो खुशबू की तरह, जिसकी जुबान उर्दू की तरह, मेरी शाम रात मेरी कायनात। वो यार मेरा सैया सैया चल सैया 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 चल सैया 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 चल सैया 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 चल सैया 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 चल सैया। Sing with me.
छैया 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 चल छैया 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 सर इश्क की जाओ चल छैया सर इश्क की जाओ चल छैया पाओ जन्नत चले चल छैया पाओ जन्नत चले चल छैया चल छैया 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 चल छैया 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 वो यार है जो खुशबू की तरह जिसकी जुबान उर्दू की तरह मेरी शाम रात मेरी कायनात यार मेरा सैया 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 चल सैया 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 चल सैया 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 चल सैया 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 सैया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और वड्डेवीर जी, भगवंत मान जी, आपको रिक्वेस्ट करूंगा मैं, प्लीज ऊपर आए एंड प्लीज गिव अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन टू सुखी बाजी फॉर द वॉइस ऑफ पेट्रियटिज्म। डेफिनेटली कुछ ना कुछ कहना चाहोगे ਤੁਸੀਂ ईमान साहब? मैं क्योंकि ਅਸੀਂ बहुत अच्छे दोस्त हैं सारे, अक्सर जो बॉम्बे जाने हैं तो जे सुखविंदर को ना जाइए तो हाजरी मन्नी नहीं जाती और कितों ना कितों पता लग जाता कि बॉम्बे आए सी, बाद च फिर भैन दियां गालां भी सुननियां पैंदियां। गालां बहुत अच्छी करता मुंडा, बहुत अच्छा टैलेंट है ये। मैं जे पंजाबी च कमां तां एक फकीर है, एक जोगी है, एक मस्त कलंदर, एक खुली किताब वर्गा सुखविंदर है, और जिसने साडे पंजाबी कल्चर नूं, पंजाबी नूं पूरी दुनिया च पहुंचाया है। और जेड़ा गाना किसी होर तो ना गाया जाए सुखविंदर नूं लभना पैंदा है, लभदा अक्सर हैदराबाद बेंगलौर वाले पासे होई हैं। और 4 बजे का टाइम दे के 6:30 बजे उम्मीद करो। एक सॉन्ग साडी मूवी आ रही है पंजाबी दी, मैं सॉन्ग इन्हां कोले लैके गया तो ये पक्की गल है कि जिहड़े बंदे नूं प्यार करदा है उन्होंने समोसे जरूर खवाउंदा है, और वही समोसे तिवारी तो ही मंगा के खवाउंदा है। मैनू भी खुआए सी, उस समोसिया च पता नहीं की पाउंदे ने, हिपनोटाइज हो जाता बंदा, फिर ना बस यही कही जाता यार कमाल हो, तुसीं तां कमाल हो यार, कमाल हो। सो मेरे ख्याल च गुलजार जी नूं समोसे खुआ के गाना गा गया जय हो हैं, और अगे तो समोसियां दा असीं DNA कराउण दी भी कोशिश कर रहे हैं। पर जिहड़ा सॉन्ग मैं इन्हां नूं दे के आया वो माँ बारे सी कि माँ इत्थे है, पुत परदेसां च है। वो कहती है कि साडी इत्थे जिंदगी दी ढल चली शाम वे, क्योंकि इन्हां दी रिहर्सल नहीं होनी उस सॉन्ग नाल, क्योंकि हज़ारां सॉन्ग गाउंदे ने, माइंड च नहीं रहिंदा। साडी इत्थे जिंदगी दी ढल चली शाम वे, तेरे उत्थे देश तां सवेर हो गई होवेगी, जदों तक परतेंगा वतनां नूं सोहणिया वे, शायद उदों तक बड़ी देर हो गई होवेगी। पर सुखविंदर ने कहा कि सॉन्ग यार मैं गा के देखा सी अपने स्टूडियो च, मैं तो हजे गल नहीं बनी, सॉन्ग बहुत ज़्यादा माँ नाल रिलेटेड है। सो अगले दिन मॉर्निंग मैं एयरपोर्ट पर सी तो मैनू कहंदा कि अज दा तरीक नोट कर ला, ऐसा सॉन्ग आया सवेरे 4 बजे उठ के कि मैं रोन लग गया, तो रोंदे रोंदे ही गाना गाया। और उस गाने दे विच इन्हें जिहड़े हटकोरे ने जां जिहड़ी इन्हां दी आवाज़ की एक खासियत है, वो काफ़ी देर बाद पंजाबी सॉन्ग दे विच सुनने मिलूगी तुहानूं, बड़ी जल्दी वो मूवी रिलीज़ होगी। ते नहीं 2 लाइनां च 2 जहाज लंघ जाने उधर इन्हां दे, सो लाइनां तां इन्हां कोले हज़ारां ने। एक बारी जोरदार ताड़ियां साडे अपने सुखविंदर लई, गॉड ब्लैस यू। और इसे तरह साडी इंडस्ट्री दा, साडे पंजाब दा मान सुखविंदर, और मान मत्ता शायर, और बहुत सारे पंजाबी गीत ठीक भी कर दिंदा उत्थे जाके, क्योंकि बॉलीवुड वाले ਜਦੋਂ गाना गाउंदे ने गलत, ਜਦੋਂ कुड़ी नूं कहंदे ने वे, ਜਦੋਂ मुंडे नूं कहंदे ने नी, तो फिर मैनूं ऐ लगदा सुखविंदर नेड़े तेड़े होना नहीं नहीं तो ये ठीक कर दिंदा उन्हां नूं जाके। सो बड़े मज़ेदार किस्से ने, सुखविंदर तक बहुत वड्डी किताब है। सो बड़ा अच्छी, मैं इंडिया टुडे नूं बहुत बधाई दिंदा कि उन्होंने इस तरह का फंक्शन, सुखविंदर नूं गाने गाउंदे तुसीं सारिआं ने सुनिया होना, पर जिहड़ी अंदरलियां गल्लां, गाणिਆਂ दी कहानी, एक गाना पूरी स्टोरी हुंदा है, वो जिहड़ियां सुनाइयां ने वो बहुत काबिले तारीफ ने। और कई बार जिस तरह इन्होंने कहा कि कोई चीज़ रद्दी च सुट दी जाती है, पर नेकचंद वर्गिया ने रद्दी चो ही रॉक गार्डन बना लिया। सो कोई भी चीज़ रद्दी च ना सुट्टो, अपने आप को भी रद्दी का डब्बा ना बनाओ। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर आल्सो सुखविंदर, नो वर्ड्स।
Nobody. Right. Pride of our nation, सुखविंदर सिंह जी के लिए एक बार जोरदार ताली. इनके विधायक बनने पर हम सब इनको मुबारकबाद देते हैं. Congratulations. Thank you so much. Thank you so much, sir. एक बार joint तालियां हो जाए यार. For the pride of our nation, voice of patriotism. All right, we have the next session. It's the making of a politician. And to take you through this session, we have Kunal Pradhan. That is a very tough act to follow, but we're going to try and do our best. My first guest entered electoral politics just a couple of years ago. She stormed to victory in the assembly elections in Adhampur. Now, with the upcoming elections in the state, her party is hoping to get enough muscle to be part of the new government. Well-spoken, articulate, and despite her dynastic connections in every way, the modern Indian politician, Renuka Bishnoi. Please join us on stage. My next guest was born into politics as a member of the Chautala family. His first experience of public rallies began when he was a toddler. He won the Lok Sabha seat from Hisar in 2014 despite a BJP wave in the state and is now leading the assembly election campaign. Ladies and gentlemen, the new face of the Indian National Lok Dal and India's youngest MP, Dushyant Chautala. And my third guest is a BJP backroom boy, the kind that played a huge role in Narendra Modi's victory. He's tech savvy, he's a numbers man, and he can swing close elections with a few adjustments on his laptop. Please welcome Vineet Joshi. It's, elections are going to be announced in the state any time now. But it's hard to start this conversation without this very obvious question because both of you are sitting here. 2014 was supposed to be the year when India rejected dynastic politics. I mean, a few dynasts won. But by and large, it was said that, the old ways are now done. And now New India wants something different. Kuch alag chahiye. So, Renuka, I want to put this question to you. Had you not been a member of the family you're in, how would you have been able to make it in politics? And do you think that is something that is still an advantage in today's political landscape, being a dynast? कुणाल जी, सबसे पहले मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ कि हम हरियाणा वालों ने आपका क्या बुरा किया कि सुखविंदर जी के बाद हमारा इतना सेशन बोरिंग सेशन रखा आपने, क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा है मैंने कुछ भी बुरा किया हो आपको, क्योंकि सुखविंदर जी जैसे गाना तो दूर हमें बोलना भी नहीं आता. और मैं ऑडियंस को भी बस यही प्रार्थना करना चाहूँगी कि थोड़ा सा बेयर कर ले हमारे साथ, क्योंकि नेशन हम लोगों से चलता है, हम सब से चलता है, इसलिए ये बोरिंग 1 घंटे का सेशन भी आपको टॉलरेट करना पड़ेगा. और वैसे आप अपनी चॉइस से यहाँ हैं, हम भी हमारी चॉइस से हैं, आप चाहें तो हम वॉक ओवर भी दे सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है हमारे बाद भी और भी कई इंटरेस्टिंग सेशन अभी तक ड्यू है. और टू आंसर योर क्वेश्चन मिस्टर कुणाल, like you say, dynasty politics. I would just like to know that when a doctor's son becomes a doctor, we have no objection to that. Just because the explanation would be that he's qualified enough. But when it comes to politics, unfortunately, politics doesn't have a qualification. But why does that have to be a disadvantage to the son or a daughter of a politician? Because as they say, experience is the biggest educator. So a child born in a political family obviously has an understanding of the grassroots politics, he has more awareness of the problem faced by the people in his constituency or by the people in his state. So I think just because the father and the son or the daughter and the son or the daughter-in-law and the father-in-law are in the same profession, why should the younger generation be at a disadvantage? And after all, like you have a choice of not going to the doctor whose medicine you don't trust, you have a choice of not voting for the politician whom you feel is not deserving enough.
So the whole concept of dynasty politics to be there or not to be there, I think it's completely unfair. Okay, okay. Dusha, let me now pose this question to you. See, I think the difference is that, when a doctor or a lawyer passes on his practice to, the next, first they have to be qualified, and second, you have a chance to judge whether, they're worthy of that practice or not. What is happening is, political constituencies are being willed almost as if they were practices or as if they were your personal properties. You can will your property to your next generation, but not your political constituency. I think that is where the debate comes in. So what do you have to say about that? What is your view on this whole dynasty debate? Kunal, when we talk about constituencies developing as a well, I don't think so, because if you talk about my great-grandfather Chaudhary Devilal ji went to Rajasthan, fought elections there, he became the Deputy Prime Minister of the country. Talking about my grandfather, he moved out from Chotala, that is Davali constituency, to Narwana, then Uchana. He won there. My dad fought his elections twice from Rajasthan, Nahor, and if you talk about Haryana, he fought from Bhiwani. He won there, and for me, I'm also from Sirsa, but I fought from Hisar and won from there. But when you talk about dynasty politics, as you said, I was born a toddler into politics. Yes, I was 8 when my great-grandfather fought from Rohtak, and I was there for his campaigning. And since that day, whenever I'm in the off, when I had holidays during my school time, college time, I used to be with the people. And that, I think, made a way out to learn about how things go on, how you can solve their problems. And as you say, if a doctor or a lawyer, they practice. For a politician, it's the same thing. We have to be in the people. We have to talk to the people. We have to get their solutions out. And once we get that, people start coming to you. And that is the connection we make. You have to build a connection. Now people are coming in. There is a good amount of social media that's helping people grow into politics. But I think so there has to be a connection that can be built through social media, but that working for over dynasties there, that also creates a good connection. Okay, but isn't, there greater pressure on you, on your generation especially, to change certain mindsets about politics? Because, people are becoming more aware now. अब जैसे आपकी पार्टी के बारे में कहा जाता है, लोग कहते हैं कि भाई ये ना मारपीट करके सब सेट कर देते हैं. हाँ, people have said, recently senior politicians have said. No, isn't there not more pressure on somebody like you to change that perception? Kunal, जहाँ एक mindset create किया जाता है, there I think it's a huge role of media doing that. और आप कहते हो कि एक बड़े सीनियर पॉलिटिशियन ने कहा कि NLD ऐसी है वैसी है. मैं आपको बताना चाहता हूँ, बिल्कुल उनने बोला, वो भी हमारे साथ थे जब हमारी सरकार थी. और आज तक मुझे तो कोई इंसिडेंट ऐसा मेरी लाइफ टाइम में, इफ आई एम बोर्न इन 88, उससे लेकर आज तक तो मैंने कोई इंसिडेंट देखा नहीं जहां ऐसी चीज़ों की. बल्कि मैं आपको बताना चाहूँगा, जब मेरा इलेक्शन था, रैली के अंदर आई हैव सीन अ पर्सन रनिंग, उससे गलती से एक शॉपकीपर के चिप्स गिर गए. अगले ने उठा के चिप्स रखे, सॉरी बोला, चला गया. इससे ज़्यादा डिसेंसी क्या लाओगे? हाँ, रगडनेस जरूर है, क्योंकि गाँव से जुड़ी पार्टी, देहात से जुड़ी पार्टी है. जहाँ आप बात करोगे रूरल बैकग्राउंड से जुड़ते हुए लोगों की, वो किसान है. किसान जब 8 से 10 घंटे खेत में काम करता है, वो भी 40-50 डिग्री के अंदर, तो पकता है. बोलने में वो मीठा नहीं हो सकता, एजुकेशन नहीं है वहाँ पर. धीरे धीरे हम जब शहरों की तरफ मूव होते हैं, वी हैव ग्रोन. ये नहीं कि बिल्कुल नहीं ग्रो किया, हमने बहुत ग्रो किया है. और आने वाले समय में वी होप बाय द एंड ऑफ दिस इलेक्शन वी विल सी अ ह्यूज अर्बन सपोर्ट ऑल्सो फॉर आवर पार्टी. और रूरल तो है ही, दैट इज आवर बैकग्राउंड, एंड वी आर वर्किंग विद दोज पीपल 24/7. चाहे बिजली की बात हो, पानी की बात हो, उनकी जो डिमांड्स है उनको सुनना है. हाँ, एक आजकल जो जेन नेक्स्ट हम जिसको बोलते हैं, बड़ी जल्दी जल्दी एक परसेप्शन क्रिएट कर लेती है. आपने एक कमेंट दिया, दे क्रिएट अ माइंडसेट ऑन दैट एंड दे स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. तो वो जो जेनेटिकल शिफ्ट आया है, उसने पॉलिटिक्स चेंज करी. और मुझे लगता है कि आने वाले समय में आप देखेंगे तो जो नेक्स्ट जनरेशन की हम बात करते हैं, एक बात करते हैं कि इंडिया ऐसा होना चाहिए, तो बहुत बड़ा बदलाव आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा. देखिए, पॉलिटिक्स तो इंडिया की चेंज हो रही है विनीत जी, और अभी हालात ऐसे लग रहे हैं कि आपकी पार्टी बीजेपी इतनी कॉन्फिडेंट लग रही है हरियाणा में, जो कि कभी किसी ने सोचा नहीं था कुछ साल पहले, कि अब आपको अपने एलाइज भी ज़्यादा, आपको उनसे ज़्यादा मोहब्बत नहीं रही है. So should Renuka ji and other allies in other states be worried that you seem to be wanting to go back on your promises and go on your own? हाँ जी, ऐसा है कि भी the topic which you have just touched, that is of like working of alliance.
right? It's a domain of our national president, Amit Shah. So I am too junior to comment on this issue. And I hope this alliance works, and the signs are good, positive. It will work, and you'll see her in the new cabinet. Need not worry. And I like to say, to add two more things. As you talked about dynastic politics, you see, in India, we can categorize our leaders into three categories. One is like by virtue of hard work, where you can take the name of Jawaharlal Nehru, Sardar Vallabhbhai Patel, Morarji Desai, Atal Bihari Vajpayee, Lal Krishna Advani, Murli Manohar Joshi, and the latest, Narendra Modi and his cabinet, all by virtue of their hard work. Second comes dynastic politics. They are people, they are guys who grew up in families, those who are into politics. My simple question is, if a son of a doctor becomes a doctor, if son of an advocate becomes an advocate, an IAS, a businessman, then what's wrong in a politician, a son of a politician or daughter of a politician becoming a politician? No. You see, there's a third, I'll sum up later on. There's a third category also. They're leaders who emerge out of circumstances. One of the old example is Assam Gana Parishad. It started as student movement and they ruled Assam. Latest is Kejriwal. He emerged out of Anna Hazare's movement. These leaders emerge out of circumstances. The point is that dynastic politics, we criticize it a lot. Chhaddo ji, ye ta leader da munda hai. It is easy to say, but it is difficult to face for the sons and daughters of a political family, because they grow through a process where their father, mother are not available. Anyway, let's not talk about it, but I'll say, our election system, our democratic system is so robust, so strong, कि वहां जो है जिसमें दम होगा ना वही आगे आएगा, बाकी सब रह जाएगा. आखिरी लेटेस्ट एग्जांपल है नरेंद्र मोदी और डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के सूरमा राजकुमार राहुल गांधी. ठीक है, ये दो ऐसे के आपके सामने एग्जांपल्स हैं जिनमें दम होगा वो आगे आएंगे. इसलिए डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का इशू को मैं बहुत बड़ा इशू नहीं मानता. देखिए, ये बीजेपी की खास बात है आजकल. Positive and negative, everything is fun in the end to prove how Mr. Modi is, different from everybody else. But going back to the alliance, are you worried about the conversation that is happening between your party and the BJP right now? There was an arrangement कि हम साथ में जाएंगे, 2.5 साल के लिए हमारा मुख्यमंत्री होगा, 2.5 साल के लिए आपका होगा. वहां से तो बहुत दूर आ चुकी है बात. In fact, अभी तो you don't even know how many seats they're going to share with you. So what is, are you worried about? देखिए, मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि हमारा जब अलायंस हुआ था, ये मनों का अलायंस था, धर्म का अलायंस था, जनता के मन का अलायंस था. तो हमने जिस प्रकार ईमानदारी से और दिल से और धर्म से ये अलायंस निभाया, उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का हमारा बड़ा भाई होने के नाते हमें जिस भी विपरीत स्थितियों में इनको हमारा भी साथ देना चाहिए. क्योंकि ये नहीं कि इस चुनाव से पहले विपरीत स्थितियां भारतीय जनता पार्टी के सामने भी आई है, लेकिन हमने किसी भी प्रकार का गठबंधन में या सीट शेयरिंग में फेर बदलने का कभी हमने प्रपोजल नहीं रखा. और मैं समझती हूँ कि यहाँ जो आज ऑडियंस यहाँ बैठी है, हम हमारे पर्सनल पॉलिटिक्स के बजाय हम इन यंगस्टर्स को आज की डिबेट में इन्वॉल्व करें तो ज़्यादा ज़रूरी है. सुखविंदर सिंह जी गा रहे थे तो सारा ऑडियंस स्टेज तक आने को तैयार था, और जब हम तीनों स्टेज पे आए हैं तो आधा ऑडिटोरियम खाली हो गया. और ये वही यूथ है जो हर चीज़ में सिस्टम पे उंगली उठाती है, लेकिन सिस्टम हम सब, डेमोक्रेसी है इंडिया, इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री, और डेमोक्रेसी बनती है लोगों से, हम सब से. लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है. इसमें डेमोक्रेसी में चेंज तभी आता है जब लोग इसमें इन्वॉल्व हो, जब सबकी भागीदारी हो. तो इसलिए मैं मेरे सभी या युवा साथियों से मैं यही अपील करना चाहूंगी कि आपको ज्यादा इन्वॉल्वमेंट पॉलिटिकल सिस्टम में रखनी चाहिए. जो एंथुसियाज्म आपने सुखविंदर जी के लिए दिखाया, उतना ही एंथुसियाज्म हमारे लिए भी दिखाना चाहिए. क्योंकि जो भी हम आज आप लोगों के बीच में आए हैं आपकी बातें सुनने और आपके जो भी क्वेरीज है, आपके क्वेरीज का हम जवाब देने. क्योंकि ये जो सिस्टम है जो हम चेंज करना चाहते हैं, ये अकेले हम इसमें बदलाव नहीं ला सकते. हम सब मिलजुल कर बदलाव ला सकते हैं. और खासकर
जो जितना एनर्जी इस यूथ में है, चाहे वो देश की बात करें या हरियाणा की बात करें, आपने देखे जब भी कभी बड़े नेशनलिस्ट मूवमेंट्स जहां भी हुए हैं, सब यूथ के शुरू किए हुए हैं। तो यदि आपको एक चेंज चाहिए तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप पॉलिटिकल सिस्टम में इन्वॉल्व हो। और जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया कि कम से कम ये एक ऐसा प्रोफेशन है जहां आपको किसी भी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं। आप जो भी मन चाहे, जो भी सिस्टम में बदलाव लाना चाहते हैं, जो भी चीज़ें गलत जाती है, हम सबके पास क्या एक जवाब होता है कि सिस्टम ठीक नहीं है। तो इस सिस्टम को बनाने वाले कौन है? हम लोग हैं। हम नेताओं को चुनने वाले कौन है? आप लोग हो। वोट आपका है, फैसला आपका है। तो हम उंगली कैसे उठा सकते हैं नेताओं पर? आप ईमानदार लोगों का चयन करोगे, आप ईमानदार लोगों को चुनोगे, ईमानदार लोगों को चुनोगे तो जाहिर सी बात है कि आपका सिस्टम ईमानदार होगा, आपकी गवर्नमेंट, आपकी सरकार ईमानदार होगी। और आप यदि सिर्फ कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स करेंगे, सबसे बड़े दुख की बात यह है कि आज के ज़माने में भी जो हम 21वीं सदी में हम पहुंच गए हैं, बात सेक्युलरिज्म की हम करते हैं, लेकिन आज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया वोटिंग का है तो वो कास्ट है। आप चाहे कितने भी एबल कैंडिडेट क्यों ना हो, पर आपको वोटर का वोट इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि आप उसके कास्ट के नहीं हो। तो जब तक हम इस कास्ट सिस्टम से ऊपर उठकर हम योग्य उम्मीदवारों को वोट नहीं देंगे, एबल कैंडिडेट्स को हम वोट नहीं देंगे, तो हम सिस्टम में सुधार की क्या उम्मीद कर सकते हैं? इसलिए हम यहाँ आज बैठे हैं कि आपसे ज्यादा इंटरेक्शन हम आपसे कर पाए। जो भी आपके सुझाव है, हम सब यहाँ पार्टियां बेशक हमारी अलग अलग हो, पर हम सब यहाँ बैठे हैं एक चेंज लाने के लिए, एक बदलाव लाने के लिए, एक बढ़िया बदलाव लाने के लिए। जी देखिए, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि आ गया बदलाव। वो कह रहे हैं अब कास्ट वास्ट छोड़िए, अब जो छोटी पार्टियां हैं, रीजनल पार्टियां हैं, उनकी कोई जगह नहीं बची। दुश्मन, मैं आपसे पूछ रहा था, आई वांट टू आस्क यू दिस, दैट आर यू फीलिंग स्क्वीज्ड आउट इन दिस political game where this large party has come and is now trying to spread its tentacles to states where it never existed? जहाँ पार्लियामेंट की बात करूँ, आई एम एंजॉयिंग इट बिकॉज देयर इज अ ह्यूज बंच दैट इज नॉट स्पीकिंग देयर। जिनको बोलना चाहिए, जितने बीजेपी से युवा आए हैं चुनकर, आप जाके पार्लियामेंट में रिकॉर्ड उठा लो, कोई बोलता नहीं। आई एम गेटिंग अ चांस एटलीस्ट टू स्पीक। चाहे हम 2 गए हो चुनकर एक पार्टी से। और जहाँ स्टेट की बात करते हैं, स्टेट में इलेक्शन स्टेट इश्यूज पे होते हैं, एकदम अलग होगा। आपको अगर लगता है मोदी वेव इस बारी, बताइए, अगर मोदी वेव थी उत्तराखंड में 3 सीटें क्यों हारी? आप बाई इलेक्शन हैं, आप देख लीजिएगा। दैट वाज अ मोमेंटम, टेम्पो सेट उस टाइम पे था और पूरे देश के अंदर कंपटीशन हुआ 2 लोगों के बीच में। जहां हरियाणा की बात आएगी तो आप सीएम डिक्लेयर तो होने दीजिए, कौन कौन लड़ेगा, मुख्यमंत्री कौन कौन होगा, और जिस दिन हो गया आप मोमेंटम देख लीजिएगा। अभी तो आज मैं अखबार में पढ़ रहा था, कहते 4000 टिकटार थी बीजेपी के अंदर है। विनीत जी को ज्यादा पता होगा, मगर मैं इतना बताना चाहूंगा, 4000 आ तो गए, देनी तो 90 को है। वो जो 3900 लोग हैं वो तो भागेंगे मैदान छोड़। देखिए, एक ट्रेंड का कैसे पता लगता है कि कितने सारे लोग आपकी पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से, हर दिन हम अखबार में पढ़ रहे हैं कि वो बीजेपी की तरफ, वही तो बता रहा हूँ आपको, 4000 आप कहते हो आपके पास एप्लीकेंट। टिकट वो जिसको भी दे, लेकिन ऑब्वियसली इन द पॉलिटिकल सर्कल एक सेंस हमको लग रहा है कि उनको लग रहा है कि ट्रेंड उस तरफ है। ट्रेंड नहीं है। आज के दिन एक बड़ी पॉलिटिक्स के अंदर जो चेंज आया है, पहले जो पॉलिटिक्स होती थी इट वाज वेरी क्लियर कि हाँ पार्टी बेस्ड पॉलिटिक्स होती थी। अब कैंडिडेट अपने आप को बनाने लगे, हम चुनाव लड़ेंगे, एक इच्छा आ गई, मनी पावर आ गई, जिसका आज एक प्लॉट बिक गया वो भी चुनाव लड़ने को तैयार हो गया। तो जो ये शिफ्ट आया है, मुझे लगता है इसलिए इतने ज्यादा लोग अब चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं। मगर दूसरी ओर पर जहां आप बात करें कि बीजेपी मोमेंटम सेट कर रही है प्रदेश के अंदर, आज इनके पास कार्यकर्ता कहाँ है? जो ग्राउंड पे रियलिटी है, दैट इज द मैन पावर बिहाइंड यू। कैडर कहाँ है? अगर आज मैं बात करूं तो कैडर इज द मेन थिंग दैट विल मेक यू विन द इलेक्शन। हाँ, जो पीएम का कैंडिडेट था, पीएम का पार्लियामेंट का इलेक्शन था, वो उस मोमेंटम पर सेट हो, वहाँ आपको 2 ही लोगों के बीच में चुनना। आज हरियाणा में तो मेरे को लगता है 8 पार्टीज है और हर सीट पर, जहाँ लोकसभा में 2 या 3 कैंडिडेट थे, विधानसभा में 10 अच्छे कैंडिडेट थे, 10 में से आपको एक चुनना है। वोटिंग मार्जिन जो था वो 16 लाख में से आपको 5 लाख वोट जल के आप जीत गए। मगर जब विधानसभा की बात आएगी तो 1.5 लाख वोट है जो 20,000 लेगा। एक एक आदमी को आपको मार्क करना पड़ेगा, एक एक आदमी के साथ जुड़कर उसकी समस्याओं को सुनकर उसका समाधान निकालोगे, आपके साथ वो जुड़ेगा, वो आपको चुनाव जीत पाएगा। अगर आप ये सोचते हो कि एक आदमी के नाम से चुनाव विधानसभा में जीता जाता है, मुझे लगता है बहुत मुश्किल चीज है। हम तो निरंतर देखते आ रहे हैं और ये चीज बदलाव से कितना 2%, 1% कोई ट्रेंड चेंज हो जाता है। तो नमस्कार,
अभी राहुल गांधी जी का बयान आया था कि जो लोग मंदिर में जाते हैं वो ही बसों में जाके माँ बहनों को छेड़ते हैं। तो मैं आप सभी से राय लेना चाहूंगा कि इस सूची में हमारे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का सबसे ऊंचा नाम है, सही वो भक्त हैं, नरेंद्र मोदी, और भी इसमें बड़े बड़े नेता शुमार हैं। तो क्या वो लोग भी बसों में जाके माँ बहनों को छेड़ते हैं? राहुल गांधी के बयान से मैं आप राय लेना चाहूंगा आप सबसे। जहाँ आप वो सारे पॉलिटिशियंस के नाम गिना रहे थे, मुझे नहीं लगता एक भी बस में चढ़ता होगा पहले तो। मगर जहाँ आप उस बयान पे बात कर रहे हैं, जो सेंस में वो बयान दिया गया, मुझे लगता है बड़ा गलत दिया गया। छेड़छाड़ होती है, सुरक्षा नहीं है। आज हमारे देश में सबसे बड़ी जो जरूरत है वो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की है। कोई हमारी बहन के साथ, माँ के साथ कोई गलत चीज ना कर दे। मगर जिस तरीके से जिस समय पर वो बयान दिया गया, मुझे लगता है उसको एंगल बदलकर बड़ा अच्छी तरीके से दिखाने का काम हमारे मीडिया के साथियों ने किया। सबके लिए जिसको पसंद हो आंसर। 20 साल का एक्सपीरियंस है मेरा कि मैं हर बार मंच से ये सुनता हूँ भ्रष्टाचार मिटाना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन भ्रष्टाचार का जड़ है पॉपुलेशन, उसको कोई मुद्दा नहीं बनाता। आप मैं एक रिसर्च में बता रहा हूँ कि एक आदमी को 5 बेटा होता है, उसमें आप हर बार जॉब बहुत सारे वैकेंसी निकाल देते हैं और एक को जॉब हो जाता है, फिर 4 वैसे रहते, फिर 4 झोपड़ी में रहते हैं, यानी एक बिल्डिंग बन गया, फिर 4 झोपड़ी, फिर गरीबी। जो मुख्य मुद्दा है आप हर चुनाव में क्यों नहीं उठाते? पॉपुलेशन कम करना है। मैं धन्यवाद करता हूँ, भाई ने इतनी बढ़िया चीज रखी। 72 पार्लियामेंटेरियंस ने प्रेसिडेंशियल एड्रेस पे बात रखी थी। आई वॉज द ओनली वन जिसने खड़ा होकर कहा था कि पॉपुलेशन पे नरेंद्र मोदी जी आज तक नहीं बोले, भारतीय जनता पार्टी आज तक नहीं बोली, प्रेसिडेंट ने भी नहीं टच किया। और वो ऐसा मुद्दा है, हम जैसे मैं आया हरियाणा नंबर 1 का बोर्ड था, मैं आके मजाक करने लग गया था, तो नंबर 1 बनने की पराग में कि हमें नंबर 1 बनना है, हमें चाइना को पीछे छोड़ना है, यूएस को पीछे छोड़ना है। हम 123 करोड़ का देश है और चाइना शायद 132 का है। बाय नेक्स्ट 10 years we'll क्रॉस चाइना इन ओनली वन थिंग, दैट इज पॉपुलेशन। और वो सफेद हाथी है पूरे कमरे के अंदर जिसको कोई नहीं छेड़ना चाहता। क्यों? किसको माइनॉरिटीज के वोट चाहिए तो वो उस मुद्दे को छेड़ेगा नहीं, किसी को इसके वोट चाहिए वो उस मुद्दे को छेड़ेगा नहीं। फ्री में सब कुछ दे दो इस देश के अंदर, मगर पॉपुलेशन जैसी चीज पर एक आदमी अपनी जबान नहीं खोलता। नहीं तो आपकी पार्टी क्या करे इसके बारे में? मैं तो इसके पक्ष में हूं, मैंने तो पार्लियामेंट में बोला है, प्रेसिडेंशियल एड्रेस था, आई वाज द ओनली स्पीकर इन द पार्लियामेंट जिसने इस मुद्दे को उठाया था। और अब तक मेरे को तो लगता नहीं पार्लियामेंट में किसी ने है। नेक्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू हैव अ स्पेशल व्यूअर डिस्कशन ऑन इट। अच्छा, एक और मुद्दा बड़ा जरूरी जो आजकल उठा है, वो जो कांग्रेस ने किया है अभी कि जो हरियाणा में जितने गुरुद्वारे हैं उनको HSGPC के अंडर डाल दे, पंजाब से ले ले। आप लोग की पार्टी की पोजीशन क्या है इसके बारे में? एक तो आपको लग रहा है उनको फायदा होगा इसको करके, दूसरा आप लोग व्हाट डू योर पार्टीज फील अबाउट दिस मूव? Our party stand is that it's completely fair for Haryana to have their own committee. इसमें गलत क्या है? It's a different state. और ये सिखों को यदि हरियाणा में इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट कमेटी बना दी जाए which has a control over its functioning in Haryana. So what is wrong in that? Every other organizations have their separate committees in different states. So why should 2 states have a common committee? Fair enough. जहाँ INLD की बात है, we have a clear stand कि it is a religious matter. We will not interfere. We try to negotiate, बीच में बैठकर जहाँ अकाल तख्त की और हरियाणा के जो गुरुद्वारे वाले थे इनकी बात कराई थी टू गेट अ म्यूचुअल वे आउट। क्योंकि हरियाणा में 29 गुरुद्वारे जो बड़े, द इनकम फ्रॉम दैट विल नॉट इवन सर्व द एक्सपेंसेस ऑफ द पीपल वर्किंग देयर। आज जितना चढ़ावा गोल्डन टेम्पल में आता है, मुझे लगता है उससे ही आज पूरे देश के जो SGPC के अंदर गुरुद्वारे हैं उनके ग्रंथियों का, वहाँ पर लाइब्रेरीज का, गांव दर गांव जाकर वो डोनेशंस करते हैं उनका। एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ जो हमने हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी डवाली में करी थी कि हर कैंसर मरीज को SGPC 20,000 रुपये सालाना का चेक देती है जस्ट टू गेट देयर ट्रैवल एक्सपेंसेस, कुछ मदद हो जाए। और वो चीज़ें नहीं कर पाएंगे। आज आपको फाइनेंशियल करेक्ट है, यू हैव टू हैव अ म्यूचुअल वे आउट। अगर are you saying there should be a separate committee or not? I say there should be a separate committee, but it should be under the preview of the SGPC, क्योंकि funds जो हैं, if you talk about realistic things कि हाँ ठीक है धर्म बांट दो, बांट दिया, मगर जब आप बात करते हो कि उसको चलाओगे कैसे, सिस्टम चलेगा कैसे, इट इज बेसिकली यू क्रिएटिंग ए सेपरेट स्टेट। आज आंध्रा तेलंगाना डिवाइड होगी, बजट्स कहाँ हैं?
80 करोड़ 90 करोड़ का वहाँ वेवर हो गया, मगर वहाँ अगर बात करो तो कैसे चलेगा? जब चलने की बात आती है तो मुझे लगता है देयर शुड बी ए म्यूचुअल वे। आप बीजेपी का क्या स्टैंड है इस पे? बीजेपी के स्टैंड के बारे नहीं, पर मैं ये कहना चाहूंगा कि एक ऐसी पार्टी जो बार बार और चुनाव बुरी तरह हारने के बाद भी कॉमनल पॉलिटिक्स की बात करती है, और खुद उन्होंने हरियाणा में क्या किया है ये क्लियर कट है कि कॉमनल पॉलिटिक्स कौन करता है देश में। दूसरा, राजीव बोल जाता हूं बार बार, राहुल गांधी जी के बयान को तो ना बेटर इग्नोर ही करना चाहिए। Rahul Gandhi is not here to defend himself right now. Sorry, that's all we have time for. Okay, one question. Very relevant question. Ma'am, when we talk about the women's rights. Okay, fine. Sorry for interrupting. Good afternoon, ma'am. Ma'am, my question is, as you said that in India we don't need any qualifications to indulge ourselves in politics, to came in politics and do good work. So, ma'am, at present scenario, whatever, if we want to do good, we compare ourselves with US. That US आज यहाँ पहुँच गया है, US आज वहाँ पहुँच गया है, हमें आज US की तरह ये करना चाहिए। US में मैम जब जो भी पॉलिटिशियन स्टैंड अप होता है उसकी एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है कि उसको इकोनॉमिक्स, उसके हिस्ट्री के बारे में, ये सारी चीज़ों के बारे में एक क्वालिफिकेशन उसकी होती है जिसमें वो होना चाहिए। मैम आज हमारे देश में जब हमारे लीडर एक वेल क्वालिफाइड एजुकेटेड पर्सन ही नहीं होंगे तो हमारे देश को क्या लीड करेंगे? तभी तो आपको यंगर जनरेशन को हम कहते हैं कि आपको और एक्टिवली इन्वॉल्व होना चाहिए पॉलिटिक्स में, आपको आगे आना चाहिए, क्योंकि सिस्टम हम सब मिलजुल कर बदल सकते हैं। यू हैव अ चॉइस टू कंटेस्ट, देयर विल बी 10 contestants and it's your mandate, you have a choice to, that's exactly what I said. When they're in for one particular constituency, वहां 10 कैंडिडेट्स खड़े हैं, उन सब में तो हर तरीके की क्वालिफिकेशन होगी, हर तरीके का बैकग्राउंड होगा। तो जब even the most qualified person will not get the vote of the candidates of the majority if it doesn't belong to the same caste of the majority of the voters of his constituency. So we educated people, definitely you should be educated, you should have a certain kind of qualification. What I'm trying to say, in politics, experience also counts a lot. And they say experience is the biggest teacher, biggest educator. So this is one profession where even if you have a grassroots understanding of politics, you can still do fairly well than maybe the person holding the highest degree amongst all the contestants. So that's exactly what I'm trying to say, that when we want to change, that's exactly why we say that youth should play a very big role in bringing about a change in politics. And secondly, when you have a choice, you have your vote, and we have to understand the luxury of choice and the responsibility which comes with it. When you have a choice to vote for a good candidate, then that's the choice you have to make. You shouldn't be going over caste, because majority of the constituencies and majority of politics in India is all based on casteism, where we Indians always lose. Okay, I think we should all take her advice, go out and vote, and pick whichever candidate you Go want. out and vote for the right person, the most able person, the most deserving person, irrespective of caste, creed and region. Okay, thank you. That is only one. Thank you so So do you all agree you'll vote? And vote for the most able candidates, most deserving candidates. We are the ones who have been put, the first ones. There were student elections till 1996. When late Mr. Bhajanlal was tenure time, there were college time elections. After that, there have been all the other parties which have come into power, but they have not reinstated college level elections, which is our first point in manifesto, that you should be given experience at that very level, because that's a replica of elections at the national level. Obviously, where you have a vote, you are going to vote there. That's a different... No, basically then you can always get your vote transferred.
You can have your vote at one place. Whichever The questions are never ending. You know, we'll have more sessions, and your remaining questions can be, thrown to the next session. All right, thank you so much, all the leaders, and I would like to request Mr. Raj Chingappa, the editor Tribune, to please give and come and give the token of appreciation, please. तो सवालों के घेरे में थे हमारे लीडर्स एंड दे मैनेज्ड टू आंसर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एंड रिगार्डिंग द नेक्स्ट सेशन मैं ये कहना चाहूँगा यार हमारे संसद भवन में पहले हमको एक ठो मिलते थे मजेदार, लेकिन अब बहुत सेंसफुल अपने व्यंग कटाक्ष बहुत अमेजिंग वन लाइनर से सबका दिल जीत चुके हैं हमारे भगवंत मान साहब. आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट अंजना कश्यप. Okay, I think the intro has been done, so I'll begin from there itself. Our life is very sorted. We know who we are. We're either a student, we're a doctor, or an engineer. But here is a man who's an actor, a comedian, a singer, a stand-up comedian, a politician. And when he speaks in the parliament, his video goes viral on YouTube. Bhagwant Maan, before all of you, a big round of applause. भगवान जी, ये कॉमेडी करते करते संसद पहुंचने की क्या सोच गई? और सब कहते हैं कि आप कॉमेडी करते हो, आप कॉमेडी करो. कॉमेडी की जरूरत संसद में क्यों? हमारे देश में सबसे ज्यादा कॉमेडी संसद में होती है. क्योंकि जिसका नाम स्पीकर है उसे बोलने नहीं देते. नाम स्पीकर है, पूरा दिन चुप करवा के जाते हैं. आप बैठ जाइए, बैठ जाइए, देखिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए. तो मैंने सोचा कि अगर यहाँ पे कॉमेडी हो रही है तो क्यों ना कुछ सीरियस चीजें वहाँ पे लेके जाएं. एक मुझे बीजेपी के एमपी मिले थे, मध्य प्रदेश से हैं वो. कहते मान साहब आप सांसद चुन के आ गए हैं. मैंने कहा जी बिल्कुल आ गए हैं. इसका मतलब संसद में अब खूब हंसी मजाक होगा. मैंने कहा जी बिल्कुल नहीं, आप लोगों ने ऑलरेडी देश का बहुत मजाक उड़ा लिया. अब कॉमेडियन सीरियस होके आए हैं. अब कॉमेडियन सीरियस होके आए हैं. तो हम एक्चुअली कॉमेडी इज अ वेरी सीरियस बिजनेस. हंसाने के लिए, वो भी आज के माहौल में, बहुत स्किल चाहिए. रुलाने के लिए तो प्याज ही चाहिए, टमाटर चाहिए, और क्या. या तो दीवाना हंसे या जिसे तू तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आकर मुस्कुराता है कौन. क्या बात. अब जब संसद में पहुंच ही गए भगवंत मान जी, तो इनका तरीका वहां भी बिल्कुल अलग है. जब ये इंटरैक्ट करते हैं बाकी सांसदों से तो सब इनके तरीके से बिल्कुल खुश होते हैं, और आप कटाक्ष भी कर देते हैं, उनको समझ भी नहीं आता आधे टाइम. तो ये जो आपका पार्लियामेंट के अंदर इंटरैक्शन होता है इन बाकी सांसदों से, उसके बारे में कुछ बताइए. देखिए, हमारी पार्टी 4 सांसदों की पार्टी है. वहाँ पे हमें 6 मिनट मिलते हैं. पार्लियामेंट में 6 मिनट हमारे पास हैं, क्योंकि गिनती के हिसाब से होता है. 50 मिनट के आसपास कांग्रेस के पास हैं, 4.5 घंटे बीजेपी के पास हैं. इसीलिए वो बेल बजती है, जब बेल के बाद भी बोलते रहते हैं. 4 बेल बज जाती है, 5 बेल बज जाती है, क्योंकि हमारे पास. लेकिन बात यह है कि यहाँ पे बड़े बड़े पत्रकार बैठे हैं. इनको पता है कि खबरें तो जो फील्ड के पत्रकार हैं इतनी लंबी लंबी भेज देते हैं, लेकिन उसमें खबर इतनी होती है. तो हम क्या करते हैं, हम कविता का जरिया या कोई ऐसा ढूंढ लेते हैं कि
2 मिनट की, मेरे ख्याल में 2-2.25 मिनट की कविता थी, अच्छे दिन कब आने वाले हैं, लेकिन उसमें बहुत कुछ है। सुन लेते हैं, वो सुन लेते हैं। 2 मिनट मुझे मिले थे। अब 2 मिनट में अगर मैं वैसे बोलने लगूं तो एक मुद्दा मैं शुरू करके उसको खत्म नहीं कर सकता। उसका एक जरिया है कविता। कविता में एक लाइन में आप 1 घंटे का टॉपिक आप समा सकते हैं उसमें। तो मैंने एक कविता, क्योंकि अच्छे दिन चल रहे थे, तो लेकिन नजर नहीं आ रहे थे, तो जो हुआ तब तक, जिस दिन तक मैं वो कविता बनाई है, ये मैं आपको ये बता दूं, ये कविता एकता कपूर के सीरियल की तरह बहुत लंबी चलेगी। जो होता जाएगा इसमें ढालते जाएंगे। ये तो मैंने एकता कपूर का सीरियल शुरू कर लिया है बस, जिसमें अगले जन्म तक भी चले जाते हैं, 7 जन्म की बातें करते हैं। तो 2 मिनट में बोलना था, बातें दिल में बहुत थी लेकिन टाइम कम है, तो मैंने कविता बनाई। तो जिसको मैंने जब पार्लियामेंट में बोला तो बहुत से लोगों को, जैसे आपने कहा, देर में समझ आया। खासतौर पे जेटली साहब बैठे थे सामने। जेटली साहब को लगा कि कविता है, चलो थोड़ा लाइटर मूड में भी कुछ आएगा। तो आप नोट करें, आप कुछ देखना, पहले 2-3 लाइनों पर जेटली साहब खुश हो रहे हैं, लेकिन जब उनको पता चला कि ये तो मुझ पर ही है, फिर आप उसके माथे पर पसीना देख सकते हैं। उस कविता को प्रयोगशाला में ले जाना। तो मैंने कहा, क्योंकि मैं वहां पे नेता बन के नहीं गया हूं, मैं वहां पे इनकी तरफ से गया हूं, सभी की तरफ से। क्योंकि मैंने देखा क्या बदल गया, चेंज क्या आ गया, क्या चेंज आ गया। जो इधर की सीटों पर बैठे थे वो उधर बैठ गए, जो इधर वाले थे वो इधर बैठ गए। सीट बदल, चेंज तो कुछ भी नहीं आया। सीट बदल। 117 एमपी ऐसे हैं बीजेपी में जो पिछली बार कांग्रेस में थे, तो उनके तो अच्छे दिन चल ही रहे हैं। तो मैंने अच्छे दिन पर एक कविता बनाई थी, जो काफी मेरे ख्याल में सभी की, वैसे बीजेपी का एमपी मुझे बोला, यार तुम हमारे घरों में भी घुसोगे। मैंने क्या हो गया, ये देख मेरे मोबाइल में मेरी पत्नी ने तेरी कविता भेजी है। मैंने कहा इसके में मेरा क्या कसूर है यार। तो मैंने कहा कि पहले किराया बढ़ाया रेल का, फिर नंबर आया तेल का, खुद ही 10 साल करते रहे नुक्ता चीनी, आते ही 2 रुपए किलो महंगी कर दी चीनी। हर कोई सपने दिखाकर आम आदमी को ठग रहा है। मोदी साहब अब हमें डर चीन से नहीं, चीनी से लग रहा है। दुनिया मून पर, सरकार हनीमून पर, पूछ रहे पूरे देश के चाय वाले हैं, महंगाई की वजह से खाली चाय के प्याले हैं, लोगों को तो 2 वक्त की रोटी के भी लाले हैं। मोदी साहब प्लीज बता दीजिए अच्छे दिन कब आने वाले हैं। ये विसल बंद कर दो, ये विसल सुखविंदर के साथ ले जाए, विसल बंद करिए, क्योंकि अच्छे दिन नहीं आए, विसल मारने वाले दिन अब ये नहीं आए। आगे है कि शायद पता नहीं है कि इराक है किस इलाके में, भारतीय इराक में फंसे हैं, सुषमा स्वराज गई ढाके में। क्या बांग्लादेश को विदेश मंत्रालय का ये वफद 10 दिन बाद नहीं जा सकता था? क्या कंधार की तरह विदेश मंत्री का जहाज बगदाद नहीं जा सकता था? हमारे देश के लोग तो बहुत हिम्मत वाले हैं, जिन्होंने इस महंगाई के दौर में भी बच्चे पाले हैं। लूटने वाले ज्यादा, बस गिनती के रखवाले हैं। प्लीज मोदी साहब बता दीजिए अच्छे दिन कब आने वाले हैं। कल रात मेरे सपने में बुलेट ट्रेन आई, कल रात मेरे सपने में बुलेट ट्रेन आई। मैंने कहा जी बधाई हो बधाई, सुना है तुम मेरे देश आ रही हो, मेरे देश की तरक्की की स्पीड बढ़ा रही हो। बुलेट ट्रेन बोली मेरा शिकवा किसी गाय या भैंस से नहीं, अरे मैं बिजली से चलती हूं गोबर गैस से नहीं। मोदी साहब के भाषण लोगों को खूब जचे हैं। एक ही राहत की बात है, काला धन वापस आने में महज 10-15 दिन बचे हैं। हम तो आम आदमी पार्टी वाले हैं,
हमने तो कई सरकारों से डंडे खा ले हैं, हमने तो पार्लियामेंट में और सड़क पर ये पूछने के लिए ही मोर्चे संभाले हैं कि टेल मी मिस्टर नरेंद्र मोदी, अच्छे दिन कब आने वाले हैं। अब इसमें रेल भी आ गई, तेल भी आ गया, चीनी भी आ गई, चीन भी आ गया, चाय वाले भी आ गए, और इसमें गरीबी भी आ गई, इराक भी आ गया, इसमें महंगाई भी आ गई, बुलेट ट्रेन भी आ गई, काला धन भी आ गया। अदरवाइज आप 2 मिनट में ऐसा, अगर आप जनरली बोलोगे तो ऐसा नहीं कर सकते। तो कविता का जरिया मेरे पास है, गॉड गिफ्टेड है, तो मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से यूज करता रहूंगा। पर नहीं आए तो सोनिया और मनमोहन, हाँ जी। बख्शते तो आप उनको भी नहीं है। नहीं मैं, हाँ जी, सोनिया जी पास में बैठी रहती हैं, हाँ। सामने बैठी होती है। और सोनिया क्योंकि पहले 7-8 दिन 10 दिन हमें वेल में जाना पड़ा, जो जब नीचे उतर के वहां जाते हैं ना टेबल के पास, उसको वेल कहते हैं, कुआं। मुझे कहा कि ओरिएंटेशन चल रही थी, नए जो चुन के आए हैं, कहते कुएं में मत कूदना। मैंने कहा जी जो पैदा ही कुएं में हो उसका क्या है, उसके बारे में क्या कहोगे। तो वेल में जाना पड़ा, बहुत दिक्कतें आई, बोलने का टाइम लेने के लिए वेल में जाना पड़ा। तो 10-11 दिन जब हो गए, क्योंकि सोनिया जी बिल्कुल फ्रंट पे बैठी होती हैं, वहीं पे वेल है, सामने उनके वेल है। तो एक दिन सोनिया जी मुझे कहने लगे कि भगवान जी आपको तो सीट अलॉट करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मैंने देखा है, मैंने कभी आपको बैठे हुए तो देखा ही नहीं है, आप तो यहीं रहते हो। मैंने क्या कह रहे हैं जी, मैडम बुला लेती हैं यहाँ पे, क्या करें। तो मैंने कहा अगर मुझे वहां टाइम मिल जाए सीट से तो मैं बेल में क्यों आऊं। तो कई बार क्या होता है कि अपोजिशन को क्योंकि अब सिखाया किसने है, कुएं में जाना सिखाया किसने है। बीजेपी 6 महीने कुएं में रही और सरकार बना गई। हमें तो ये लगता है कि अगर हम कुएं में रहेंगे तो और बढ़ जाएंगे। किन्होंने सिखाया? सीनियर ही सिखाते हैं ना। सीनियर्स अभी मैंने तो राहुल गांधी को भी खींचकर कुएं में ले जाते हैं। राहुल गांधी को मैं लेके गया था, मैंने कहा थोड़ा उठो। अच्छा, वो जो कुएं में यानी वेल में पहुंचे थे राहुल गांधी, यही हिसाब लेके गए थे। हाँ, उस दिन किसी मुद्दे पे चल रहा था। हाँ। राहुल राहुल गांधी ने भी नारा लगाया, वी वांट जस्टिस। शुक्र है, मैंने कहा शुक्र है, शुक्र है। तो क्योंकि हम ऑब्जर्वर हैं, इधर उधर से बातें उठा लेते हैं। पहले ही दिन क्या हुआ, पहला दिन वहां पे एक अखबार ने लिखा भी था, क्योंकि पत्रकार ऊपर बैठे रहते हैं प्रेस गैलरी में। पहला दिन, और हमारी पार्टी का बोलने का दिन अगला था, राष्ट्रपति के भाषण पे बोलना था। तो राजीव प्रताप रूडी जी बोल रहे थे, मुझे उन पर यकीन है। मैंने कहा ये 2-3 मौके मुझे मिलेंगे बोलने के, क्योंकि उनकी कमेंट्री मैंने सुनी थी, कमेंट्री में भी काफी गलतियां थी उनकी। तो मैंने कहा भाषण में भी पक्का होंगी कोई ना कोई। तो मैं आप यहाँ पे हेडफोन लगा के सुन रहा था, अचानक से उन्होंने बोला कि हो जाता है कई बार, जैसे दिल्ली में एक भूली भटकी पार्टी को मौका मिल गया था। मैं क्या, माइंड योर लैंग्वेज मिस्टर रूडी। अध्यक्ष जी, ये भूले भटके किसको कह रहे हैं? कौन? ये दिल्ली की जनता जिन्होंने 34% वोट दिया उनको भूले भटके कह रहे हैं। जो बीजेपी को वोट दे वो सियाने, जो इनको वोट ना दे वो भूले भटके। कैसे हो सकता है ये? तो अध्यक्ष महोदय ने कहा, रूडी जी आप अपने शब्द वापस लीजिए। मैंने कहा चलो जी वापस लीजिए। मैं फिर बैठ गया। ये मेरी पहली प्रेजेंटेशन थी पार्लियामेंट में। तो सभी पूछ लगे थे कहाँ से, कौन है ये? अच्छा हाँ मानी बटे चक्का, अच्छा हाँ कौन सा, अच्छा। अब बड़े बड़े घाघ बैठे वहां पे, कौन पता चलता हमें। तो मुझे उन पर फिर यकीन था। मैंने कहा एक मौका और पक्का मिलेगा। तो मैं फिर बैठ गया। अचानक से उन्होंने बोला कि यहां ऐसा भी है कि जब खुद पर केस हो जाता है तो अपनी पत्नी को मंत्री बना के खुद जेल में चले जाते हैं, तो पत्नियों को मंत्री बनाने का रिवाज आ गया। मैंने कहा जी अध्यक्ष महोदय इनसे पूछिए, इनके बगल में कौन बैठी है? हरसिमरत कौर। ये किसकी पत्नी है? ये किसकी पत्नी है? इनके पति डिप्टी सीएम, इनके ससुर सीएम, इनके भाई मंत्री। इनके परिवार में तो कोई अडल्ट बच्चे ही नहीं जो मंत्री ना हो, सिर्फ इनके बच्चे हैं। मैंने कहा बाल सभा बना के वो भी ले आओ।
अब राज जी पंगा ये हो गया कि कहा तो उन्होंने राबड़ी देवी के बारे में था। अब पप्पू यादव सामने बैठे थे, उनको पता नहीं, समझ नहीं आया, वो अपना कुछ काम कर रहे थे। अब मैं पप्पू यादव जी को उठाना चाहता था कि तुम भी बोलो। अब उसी में पप्पू जी को तो कुछ पता नहीं, फिर मैंने कहा अध्यक्ष महोदय ये राबड़ी देवी जी के बारे में बोल रहे हैं। पप्पू का अच्छा राबड़ी के बारे में बोला। पप्पू जी बोलते का मैं सीधा बेल की तरफ, मैडम ये कैसा मैडम, अरे वो सीधे गए। और अभी 15 मिनट हुए थे तो अध्यक्ष महोदय ने सोचा ये पहले ही दिन, पहले 15 मिनट में लोग कुएं में आने लगे। जैसे उनको आते देखा मैडम स्पीकर ने रूडी जी को कहा आप शब्द वापस लीजिए। तो पहले दिन 2 शब्द वापस लेके फिर मैं आराम से बैठ गया। मैंने कहा चलो अपना काम हो गया आज का। तो वहां पे सभी को सुनना, क्या बोलते हैं, उनकी गलतियां अगर निकालोगे तो ऑब्वियसली आप गए हो सिर्फ खुद बोलने के लिए नहीं गए हो, दूसरों की बोली में से लोग विरोधी, जनता विरोधी जो जुमले हैं या उनमें जो उनके सेंटेंस हैं वो उन पर इतराज करना भी हमारा फर्ज है। युवाओं के लिए बहुत अच्छा मौका है। आप संसद को देखते हैं, संसद में लोगों को देखते हैं। कुछ दक्षिण भारत के जो सांसद वहां पर रहते हैं उनके साथ बड़ा इंटरेस्टिंग आपका है। उनका एक तो उनको तो हिंदी समझ कम आती है ना, तो अभी उन्होंने क्या किया कि कहीं से पूछ लिया, क्योंकि मैं टर्बन पहनता हूँ भगत सिंह स्टाइल की, तो पगड़ी जो भगत सिंह स्टाइल की है, क्योंकि भगत सिंह युवाओं के दिलों में इसलिए रहते हैं क्योंकि वो 23 साल की उम्र में शहीद हो गए थे, अभी तक 23 साल के ही हैं, अभी तक भी 23 साल के हैं वो, तो इसलिए हर जो आने वाली पीढ़ी है उनके भी वो रहेंगे रोल मॉडल। तो उन्होंने पूछ लिया कहीं से कि अच्छा भगत सिंह और नाम क्या है, भगवंत मान, तो वो मिक्स कर गए। एक दिन मुझे बोले नमस्कार मिस्टर भगत सिंह हूँ मैं। कहा यार, मैंने कहा इतने बड़े आदमी के साथ मुझे कंपेयर करो, मैं तो उनके कदमों की धूल हूँ, भगत सिंह के कदमों की धूल हूँ। सिर्फ इस सोच को, वो पगड़ी पहनकर मैं ऐसा नहीं कोई मैसेज देना चाहता कि मैं भगत सिंह बनना चाहता हूँ, वो तो बहुत बड़े आदमी थे, लेकिन एक वर्दी है, एक यूनिफॉर्म है। मैं आर्टिस्ट हूँ, जैसे मैं पुलिस की वर्दी पहनता था तो पुलिस का रोब आ जाता था, स्कूल के बच्चे की वर्दी पहन लो तो वो शरारतीपन बचपन याद आया। जब मैं पगड़ी पहन के पार्लियामेंट जाता हूँ तो मुझे जिम्मेदारी का एहसास रहता है कि भगवंत मान, जिस आदमी की आपने पगड़ी पहन रखी है बहुत बड़ा आदमी था, इसलिए कोई ऐसा काम मत कर देना कि इस पगड़ी को दाग लग जाए। तो जिम्मेदारी का एहसास कराती रहती है वो पगड़ी मुझे। तो इसलिए साउथ वाले जो हैं उनका एक बहुत डेडिकेशन है अपने अपने पार्टीज के प्रति और अपने पार्टी प्रेसिडेंट के प्रति। अब जो विद ड्यू रिस्पेक्ट जो हमें समझ आता है लैंग्वेज उनकी, वो तमिल में बोलते हैं मोस्टली, और तमिल समझ तो हमें आती नहीं, लेकिन इतना है कि हमें अगर वो 5 मिनट बोले तो कम से कम 16-17 बार अम्मा जरूर समझ आता है। जयललिता जी के बोलते हैं इंद्र बड़ा हाथ बड़ा अम्मा, चांगड़ बड़ा उत्तर बड़ा अम्मा, टिंगड़ बड़ा उत्तर बड़ा अम्मा, चापड़ बड़ा उंडड़ बड़ा इत्तर बड़ा अम्मा। मैंने कहा आपके यहाँ अम्मा होता है, हमारे यहाँ कौमा होता है। तो साउथ वालों के साथ बड़ा अच्छा उनके साथ हमारा दोस्ताना है, बैठते हैं सेंट्रल हॉल में बैठते हैं, तो उनका स्टाइल, उनका काम करने का स्टाइल और उनका देखने का स्टाइल और वहाँ पे डिफरेंट रहता है। वो इकट्ठे रहते हैं, वो सभी इकट्ठे रहते हैं। और उनका अभी तेलंगाना आ गया बीच में, तो तेलंगाना की जय जय तेलंगाना भी अब वहाँ सुनने लगते हैं। तो अपने अपने सभी क्षेत्र के मसले उठाना चाहते हैं। और एक अच्छी बात यह है कि क्योंकि सोशल मीडिया आ गया है, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, उसकी वजह से होगा शायद कि हर सांसद बोलना चाहता है, क्योंकि उसके जो वोटर हैं वो जब कॉन्स्टिट्यूशन में वापस आता है वो कहते हैं वीडियो दिखा क्या बोला तुमने। तो इसलिए कोई ना हर सांसद को ये है कि मैं भी बोलूँगा। तो आजकल ये नहीं है कि हमने ये बोला निकले ही नहीं, दूरदर्शन पे आई खबरें उसमें चला गया ना। आजकल और इस सेशन में अध्यक्ष महोदय ने बताया था, इस सेशन में जो अभी चला था बजट सेशन, 250 से ऊपर सांसद बोले थे, 250 से ऊपर। तो अच्छा डिबेट का लेवल भी बहुत हाई है इस बार। दुशांत हैं वो भी अच्छा बोले, अभी 26 साल के हैं। कुछ डॉक्टर्स चुन के आए हैं, कुछ इंजीनियर्स हैं, पुलिस के चीफ हैं राजस्थान के जो एक्स थे,
बीजेपी की तरफ से आए हैं। हमारे फौज के जो हेड हैं, वीके सिंह जी हेड थे, वो भी आए हैं। तो इस बार आर्टिस्ट बहुत हैं। शताब्दी रॉय, वो बंगाल से दोबारा, वो बंगाली फिल्मों की एक्ट्रेस हैं। मुनमुन सेन हैं। और दूसरी तरफ और हमने सुना है उनको देखते हैं लोग, मतलब देखते हैं मुनमुन, शताब्दी। नहीं, शताब्दी तो यहाँ से 5:50 पे जाती है ना, वो वाली जो संसद पहुंचती है, जो संसद जाती है, संसद वाली शताब्दी। शताब्दी रॉय बहुत बहुत कलरफुल है वो। और आप 11 बजे लोकसभा टीवी लगा लेना, अगर मैं पहले बैठा हूं वो मेरे पास आके बैठती हैं, अगर वो पहले बैठी हैं तो मैं उनके पास जाके बैठता हूं। कुछ मसले डिस्कस करने होते हैं, मेरी वाइफ बैठी है सामने। इतनी भी मत करना कि बाद में घर पे जाके मैं करता रहूं, क्योंकि टाइम टाइम की बात है, वक्त वक्त की बात है। जवानी में आदमी चीख मारता है, बुढ़ापे में निकलती है। तो वो 34 हैं टीएमसी के, और सभी जो हैं बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत मैं उनसे पूछता भी रहता हूँ, क्योंकि मुझे कई बार पता नहीं लगता कि मैं इस पे बोल सकता हूँ। मैं इस पे कई बार मार्शल को बिल्कुल टाइम पे भी आप अगर दे दो लिख के कि मैं भी बोलना चाहता हूँ, तो कई बार सप्लीमेंट डल जाता है। तो मैं उनसे पूछता भी रहता हूँ, और वो मुझे बहुत अच्छा मुझे गाइड भी करते रहते हैं। मनमोहन और सोनिया पर आपने कुछ लाइनें भी लिखी थी। हाँ जी, वो अगर याद हो तो। हाँ, याद आई, वो कभी बोल सकते हैं। असल में ये था कि लाफ्टर चैलेंज की शूटिंग चल रही थी, जब उस दिन काउंटिंग हो रही थी यूपी की, जब पिछली बार जब मायावती की सरकार बनी थी, उस दिन काउंटिंग थी, जिस दिन शूटिंग थी। तो मैंने स्टार टीवी को कहा कि आज मेरे वाला जो पार्ट है वो आज की बजाय आप कल के शेड्यूल में रख लीजिए, क्योंकि मैं आज होटल में बैठ के ना देखूंगा रिजल्ट इसके, जो भी रिजल्ट आएंगे उस पर हम फनी कुछ बनाएंगे, और कल रिकॉर्ड करेंगे। 4-5 दिन बाद जब टेलीकास्ट होगा तो लोगों को बहुत फ्रेश लगेगा, ये अभी बनाई हुई है। उस जो मायावती बहुमत से आ गई थी, उसमें राहुल गांधी इंचार्ज थे यूपी के। मैं बहुत देर पहले से ही बहुत फॉलो करता हूँ पॉलिटिक्स को, क्योंकि अगर आप ऑब्जर्व करोगे तभी अभी आप उन पर कटाक्ष कर सकते हो, व्यंग कर सकते हो, अगर उनको आपको नॉलेज है। तो मैंने एक कविता बनाई जो बहुत बहुत हिट थी उस समय, और पीएमओ से मुझे फोन आया कि सर ने लाइक की है। सर मीन्स मनमोहन सिंह, और मनमोहन सिंह पर ही थी। हाँ, उनको पसंद आ गई। अरे पंजाबी हैं हम, अपने आप पे हंसना जानते हैं। 90% जोक सरदारों पर हैं, और सरदार ही सुनाते हैं। और खुश भी होते हैं, हंसते भी होते हैं। हाँ, तो सुना दे वो। एक ट्रेन जा रही थी लखनऊ को, एक मियाँ जी बैठे थे, एक सरदार जी बोर होने लगे, तो सरदार जी ने कहा मियाँ जी कुछ जोक सुनाओ। मियाँ जी ने जोक शुरू किया, था सरदारों पर, लेकिन उसने कहा यार गुस्सा ना कर जाए, हम चेंज कर लेते हैं। कहता एक था मियाँ, सरदार जी ने था चपेड़ मारी। कहता सरदार क्यों नहीं था भाई, हम मर गए थे क्या? तो जो अपने आप पे हंसना जानता है उसको दूसरों पे हंसने से कोई रोक नहीं सकता। तो मैंने कविता बनाई कि हमारे देश में राजनीति के नाम पर हर रोज कोई ना कोई हंगामा होता है, पार्लियामेंट में हर रोज किसी न किसी मुद्दे पर नया ड्रामा होता है, जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में करते हैं छेद। मनमोहन सिंह सोनिया गांधी से बस एक ही बात पूछते रहते हैं, मैडम कल पगड़ी कौन सी पहन लूं, नीली या सफेद? दो ही पगड़ियां थी, नीली या सफेद। एक दिन मनमोहन सिंह सोनिया के घर गए, सोनिया ने पूछा हम यूपी में क्यों हार गए, हालांकि राहुल ने बहुत हार्ड वर्क किया, फिर यूपी में कांग्रेस का बेड़ा किसने गर्क किया, मायावती कैसे छा गई, अकेले ही अपनी सरकार बना गई, आखिर यूपी की जनता मायावती की क्यों साथी है? मनमोहन सिंह बोले मैडम बात इतनी है, हमारे पास हाथ है, उसके पास हाथी है। हाथ से हम मुलायम सिंह यादव के साइकिल का हैंडल मोड़ सकते हैं, बीजेपी का कमल का फूल तोड़ सकते हैं, यूपी में जीतने का और कोई नुक्ता नहीं है। बहुत जोर लगाकर देख लिया मैडम, हाथी हाथ से रुकता नहीं है। एक तो हाथी ताकतवर था, ऊपर से हमारी पार्टी में भी थे मतभेद। ये बातें छोड़ो, ये बताओ कल पगड़ी कौन सी पहनूं, नीली या सफेद? मनमोहन सिंह सोनिया जी के घर से जाने लगे
बोले ठीक है मैडम मैं जा रहा हूं, लेकिन जाते जाते एक बात बोलनी चाह रहा हूं कि अब मीडिया के सामने मत खोलना ये भेद कि मैं तो ये पूछने के लिए भी आपके घर पे आता हूं कल पगड़ी कौन सी पहनूं, नीली। अब कुछ बाकी विषयों पर भी बात कर लें। आपके अरविंद केजरीवाल जी पर जी सब कह रहे हैं कि भाग गए दिल्ली की सरकार छोड़ के जी, और उसके बाद अब हरियाणा से भी भाग हाँ जी। गए, हरियाणा में भी चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। जी जी। तो क्या यहाँ से भी भगोड़ा कहलाएंगे? देखिए पहली बात तो ये है कि भाग गए क्यों? हमारे यहां कुर्सी से चिपकने वाले को ही नेता कहते हैं। अगर अरविंद केजरीवाल जी इस्तीफा ना देते तो आप लोगों की हेडलाइन होती गोल चक्कर बनाकर, कहां गया लोकपाल, कुर्सी से चिपक गए केजरीवाल, देखिए ये मुख्यमंत्री पद पाने के लिए ही क्या यहां पे आए थे। ये भागना क्या, इससे एग्जाम्पल भी तो ले लो कि एक आदमी, आजकल ऐसा जमाना है शमशान कमेटी की प्रधानगी नहीं छोड़ता कि उसने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी है। लेकिन काम भी तो छोड़ दिया ना, काम भी छोड़ दिया। एक मिनट काम पहले करना बड़ी चुनौती होती है। एक मिनट, जो नेता कुर्सी नहीं छोड़ते येदियुरप्पा उनको कहते हो आप भागते क्यों नहीं हो? आप कुर्सी के बदले काम देखिए शब्द बोलते हैं। हमने अपनी तरफ से त्याग किया है। हाँ लोगों में इसको ये कर दिया भाग गए, लेकिन हम किसी की बैसाखियों पर काम करने वाले नहीं हैं। अभी दिल्ली में भागेंगे नहीं, अभी दिल्ली में आएंगे, अभी दिल्ली जीतने वाले हैं। बीजेपी इलेक्शन करवा ले। हरियाणा का जवाब नहीं दिया आप। हाँ जी, हरियाणा में चुनाव लड़ने से क्यों डर गए? दे देंगे जवाब देते। पहली बात तो आम आदमियों को पॉलिटिक्स में वेलकम करो। जिन्होंने 67 साल हो गए कुछ नहीं किया, 49 दिन वालों से साहब मांग रहे हो, 77 साल का साहब मांग लो यार। पहली बात हरियाणा हमने आम आदमी पार्टी नई पार्टी है, उसको कुछ नहीं पता कि हमारी वोट बैंक कहाँ है। अगर हमने पूरे देश में 434 आदमियों को इलेक्शन लड़ा, पूरे देश में हमने बीज अपना फैलाया। जहां जहां से हमें अच्छी फसल मिली हम वहां मेहनत करेंगे, जहां नहीं मिली हम वहां क्यों जाएंगे? पंजाब और दिल्ली वोट बैंक देख के चुनाव चलने, और क्या, और कौन सा बैंक देख के चलना? हम वोट बैंक देख के लड़ते हैं, ये स्विस बैंक देख के लड़ते हैं। बैंक का फर्क है। चलिए ठीक है। हाँ इसलिए हरियाणा में सिर्फ 2% वोट हमें मिले। तो हम चाहते हैं कि क्योंकि छोटी पार्टी है, नई पार्टी है, कई बार छोटी पार्टियां खुद चाहे सक्सेसफुल ना हो, लेकिन बड़ी पार्टियों का एजेंडा रीसेट करवा देती हैं। अब मोदी कह रहे हैं ना खाने वाले हैं ना खिलाने वाले हैं, ये कब था पहले? अब कहते हैं ना आगे ना हेलीकॉप्टर से थोड़ा नीचे। तो कई बार छोटी पार्टियों का एजेंडा जो है बड़ी पार्टी को अपनाना पड़ता है। हमारे लिए ये भी प्राप्ति है। अदरवाइज हम कोई खानदानी पॉलिटिशियन नहीं है, नए हैं, गलतियां भी करेंगे। और रसूल हमजा तोब ने अपनी किताब मेरा दागिस्तान में लिखा है, जिसने कोई गलती नहीं की इसका मतलब उसने कोई काम भी नहीं किया। तो इसलिए काम के दौरान गलतियां हो जाती हैं, नए हैं तो इसलिए सीखते हैं, धीरे धीरे सीखेंगे। लेकिन ये बात हम आपको बताना चाहते हैं कि जो आदमी को टिकट देंगे उसके खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं होगा, उसके खिलाफ कोई बलात्कार का आरोप नहीं होगा, वो ऐसा नहीं होगा कि कोई डॉरी में होगा। तो इसलिए हम चाहते हैं चाहे किसी भी पार्टी से आदमी आए, संसद की सीढ़ियों पर चढ़े, लेकिन अच्छे लोग आए, डिबेट भी अच्छी हो, अपोजिशन भी अच्छी होनी चाहिए। इसलिए हरियाणा की बजाय हम दिल्ली में ज्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो मैं हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं बहुत अच्छे नोट पे पूरी बातचीत का अंत हो। जी भगत सिंह जी के आप भक्त हैं, कोई भी गाना, कुछ भी जो आपने, क्योंकि वादा किया था लोगों से यहाँ पर कि एक गाना गाएंगे और आप गाते भी अच्छा है। अच्छा। तो गाने तो वैसे बहुत से हैं, लेकिन मैंने एक भगत सिंह जी को चिट्ठी लिखी थी कि आपकी आज़ादी और यहाँ की आज़ादी में बहुत फ़र्क है। भगत सिंह ने, राजगुरु सुखदेव ने, हज़ारों और शहीदों ने कुर्बानी इसलिए नहीं दी थी कि 23 मार्च को छुट्टी होगी, जहाँ हमारे चौक में बुत लग जाएंगे। वो चाहते थे कि आप सभी लोग अपना अपना वोटर कार्ड देखना घर पे जाके, फोटो तो उस पर आपकी ही लगी हुई है, लेकिन उसमें गौर से देखोगे तो हजारों शहीदों के खून की सुगंधी भी है उसमें। आप सोचोगे यार वोटर कार्ड का शहीदों के खून से क्या संबंध हुआ? मैं बताता हूं। असल में वोट डालने के हक को ही आजादी कहते हैं। और आजादी क्या होती है? अंग्रेज यही करने नहीं देते थे।
भगत सिंह कहते थे, राजगुरु सुखदेव कहते थे, चंद्रशेखर यादव और सभी शहीद कहते थे कि हमें वोट डालने का हक दो, तुम जाओ, हम अपने नेता खुद चुनेंगे। इसी सिलसिले में उनको फांसी पे लटका दिया, वो चले गए। लेकिन अगर हम वो वोटर कार्ड 500-1000 रुपए लेके या कोई नशे वशे लेके या कोई किसी रिश्तेदार के दबाव में आके किसी को पकड़ा देते हैं, असल में हम वोट नहीं बेचते, हम शहीदों के खून का सस्ता सौदा करते हैं। शहरों में, सिटीज में वोट खरीदने का इतना नहीं है, गांव में है, लेकिन शहर वालों पर मुझे थोड़ा शिकवा ये है कि वो वोट इलेक्शन वाले दिन को पिकनिक डे समझते हैं। उस दिन शिमला चले जाते हैं, मनाली चले जाते हैं और आके 4.5 साल गालियां सबसे ज्यादा वही देते हैं। तो ये उसमें हिस्सा लो, लोकतंत्र में हिस्सा लो, यंग गर्ल्स आए, यंग लड़के आए, तो और अब तो अच्छे अपॉर्चुनिटी सभी को देनी पड़ेंगी। अब ये भी पता चल गया सभी को। तो मैंने एक चिट्ठी जो लिखी थी उसमें क्या था कि जिस मकसद वास्ते जी तुसी सी फांसी दे रस्से चुमे, ओ भुल भुला गए जी जिन्ना दे देश चलाउणा जुम्मे। कई साल तां बहस चली, कई साल तां बहस चली, फेर किते संसद विच बुत लाया, तेरी कुर्बानी दा भगत सिया कौडी मुल नहीं पाया, तेरी कुर्बानी दा भगत सिया कौडी मुल नहीं पाया। सो मैं ये कहना चाहता था कि अगर भगत सिंह की का बुत लगाने पर भी डिबेट होगी कि लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, फिर मेरे ख्याल में वो लोग डिबेट कर रहे हैं जिन पर बलात्कार के केस चल रहे हैं, करप्शन के केस चल रहे हैं। भगत सिंह ऑलरेडी इन बुतों से, इन डिबेटों से बड़ा है। भारत रत्न की बात चल रही है, मैंने भी वहां ये मुद्दा उठाया था पार्लियामेंट में कि भारत रत्न को पॉलिटिकल क्यों कर रहे हो, भारत रत्न का राजनीति क्यों क्यों कर रहे हो। कांग्रेस आती है राजीव गांधी को और बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी। हमारे पास बहुत से और रत्न हैं जिन्होंने भारत बना के दिया था, करतार सिंह सराभा, शहीद उधम सिंह, चंद्रशेखर यादव, राम प्रसाद बिस्मिल, अबशाक उल्लाह और बहुत से रत्न हैं। भारत रत्न देने का क्राइटेरिया क्या है? प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करता है। आपको पता है 2 प्राइम मिनिस्टरों ने खुद को रिकमेंड किया हुआ है, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी, कि मुझे दे दो, मिल गया। तो क्राइटेरिया क्या? आजकल तो इतना सोशल मीडिया इतना आ गया, अगर चैनल्स वो जो इंडिया स्टार या कोई इंडिया का रॉकिंग स्टार पता करने के लिए एसएमएस करवा लेते हैं, क्यों नहीं दुनिया से, पूरे देश से हम ऐसी सूचनाएं ले लें कि किसको भारत रत्न मिलना चाहिए। तो मैं पार्लियामेंट में जो बोलता हूं, मैं चाहता हूं कि वो राजनीतिक कम हो, सोशल ज्यादा हो। एक दिन महिलाओं की सुरक्षा पर बात चल रही थी, मैंने कहा क्या सुरक्षा की बात करते हो आप, हमारा देश किधर जा रहा है। हमारा एक रॉकेट हमारा मंगल ग्रह की तरफ चला हुआ है, दूसरी तरफ हम कोख में कत्ल करवा रहे हैं बच्चियों का, और दहेज उत्पीड़न के मामले सामने आ रहे हैं। मैंने एक कविता बोली, एक लाइन की थी, पंजाबी में मेरी लिखी हुई, अगर समझ ना आई तो मैं हिंदी में कर दूंगा, बाद में उसका ट्रांसलेशन कर दूंगा, कि जो बच्ची अभी पैदा नहीं हुई वो अपनी मां से कह रही है, आजा बैठ नी माए गल्लां करिए काम दियां, आजा बैठ नी माए गल्लां करिए काम दियां, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह मामा ही ने जम दियां, की पता मैं जम देवां कोई अगमड़ा मर्द नहीं माए, कुख दे विच ना कतल कराई, यही मेरी अर्ज नहीं माए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत मेहरबानी। और एक अभी भी कोई क्वेश्चन है यार? सारे जवाब तो उन्होंने दे दिए। अगर चाहते हैं तो कर ले, कर। हाँ जी, चूड़ा पहनो है, मुबारकबाद पहले। अभी कैप्टन साहब ने अभी उन्होंने बोला कि 2017 से पहले आम आदमी की पार्टी की फुस हो जाएगी, हवा निकल जाएगी, प्लीज उनको बता दो। देखिए बात ये है, देखिए बड़े बड़े नेता जिसका नाम लेने लगे इसका मतलब वो आगे बढ़ रहे हैं। बादल साहब ने कहा जूती फेंकने में भगवंत मान का हाथ है, मैंने कहा अगर आम आदमी पार्टी ना होती तो ये कांग्रेस का हाथ होता। ठीक है ना? देखिए मुझे 2 किस्म की जिंदगी जीने का मौका मिल गया, बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर मैं अपने आप को मानता हूं। एक कलाकारी, आर्टिस्ट वाला जीवन, जिसमें जितनी तारीफ होगी उतना आप ऊपर जाओगे। जैसे आपकी निंदा शुरू, आलोचना हुई, आर्टिस्ट नीचे आ जाएगा। इधर उल्टा काम है, जितनी आपकी आलोचना होगी उतना ऊपर जाओगे, जैसे आपकी तारीफ होने लगे आप नीचे आना शुरू हो जाते हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, नेता लोग, जो बड़े नेता जब नाम लेते हैं ना किसी का, इसका मतलब उनको पता चल गया कि ये आदमी आगे आ रहा है। जैसे संगरूर में
बादल साहब ने कहा कि भगवंत मान तो नया है। मैंने कहा जी आपके बर्थ सर्टिफिकेट पे चीफ मिनिस्टर पहले ही लिखा हुआ था क्या? मान साहब एक चीज मैं कहना, कोई नया होता है। उसी दिन मुझे पत्रकारों के फोन आ गए कि तुम जीत गए, उन्होंने तेरा नाम लेना शुरू कर दिया है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हवा निकल जाएगी जजे। हम आम लोग हैं, हमारा आंदोलन है, हम अपने आप को राजनीतिक पार्टी कम मानते हैं, आंदोलन है। आपने जैसे कहा कि आम आदमी, मैं भी एमपी हूं, मेरे पास कोई गनमैन नहीं है, मेरे पास कोई लाल बत्ती वाली गाड़ी नहीं है, मैं रेड लाइट पे रुकता हूं, मैं कल 17 सेक्टर में मैं अपनी वाइफ के साथ शॉपिंग करके गया, ऐसे ही मिला लोगों को। क्या फर्क पड़ता है इससे? आप एमपी हो, एमपी होने का अरे 750 गनमैन लेके आप जा रहे हो, परे हो जाओ। अरे यार पंगा ही ले लिया यार आपको जिता के। अगर इतना खतरा कोई और काम कर लो, ये क्यों खतरा मोल ले रहे हो आप? या फिर ऐसा है, अगर इतने हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है, यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। मान साहब एक चीज कहना चाहूंगा कि आपके जैसे ही लोग चाहिए हमें, जो खून चूसे ना खून बढ़ाए। तो आपने जो खून बढ़ाया, जाते जाते बहुत बहुत शुक्रिया। राज जी, अभी एक कविता मैंने और बना रखी है काले धन पे। अभी 100 दिन पूरे नहीं हुए ना, तो जैसे ही अगले सेशन में 100 दिन पूरे होंगे, उसका एक छोटा ट्रेलर दिखा देता हूं कि कहा गया ये बीजेपी की ओर से, काले धन का मुद्दा उठाया गया पूरे जोर से, क्योंकि तब तक ये 100 दिन पूरे हो जाएंगे, इसलिए उस हिसाब से आप सुनना। कहा गया ये बीजेपी की ओर से, काले धन का मुद्दा उठाया गया पूरे जोर से, कि हमारा बहुत मजबूत इरादा है, काला धन वापस देश लाने का वादा है। मोदी जी 100 दिन को कब के निकल गए, क्या योग गुरु के साथ आपके भी इरादे पिघल गए? पूरे देश की जनता के मन में ये सवाल है, मेरा भी यही ख्याल है कि कब खुलने वाला स्विस बैंक का ताला है। चलो अच्छे दिन तो नहीं आए, काला धन कब आने वाला है। I would request Mr. Raj Singappa, Editor Tribune, please come and give a token of appreciation to Mr. Bhagwant Maan, Sangrur di Shan, Bhagwant Maan. And for the next session, I would request Ms. Kalipuri. मान साहब चक दो फट्टे, नप दो किल्ली, आज जो चंडीगढ़ ते पहुंचो जल्दी दिल्ली। All right, for the next session, I request Ms. Kalipuri. The Group Synergy and Creative Officer, India Today Group. Check, check, check. Okay, that was an awesome session, but can you please settle down because there's more to go. Can I please invite on stage our next panelist, Reena Dhaka. I know. Okay, we'll start. I'm sure they'll finish the exit. Okay, Reena has been in fashion for more than 20 years. She's one of the foremost designers in India. She's in fact responsible for bringing the sexy back into Indian clothing, especially the sari, transparent churidars, and the hot blouses. So Reena, we'll get to it straight away. How has fashion changed in the last 20 years? Hi. Good evening, everyone, and thank you for staying on to listen to fashion after the exit of a phenomenal gentleman. I was lucky I got the chance to hear him with you. Fashion's changed a lot since the time of its inception. I see it in front of me. When I was studying here in Chandigarh, perhaps a young girl in college, it was very hard for us to have fashion on our doorstep. Today, you can bring it home on the internet. There are shows galore. I remember when I did my first fashion show in 1995.
I got Doordarshan to cover it live. And by the end of it, I found myself weeping uncontrollably on the stage in front of live television. So great was the harassment of trying to put that thing through. Doordarshan carried your fashion show live. You were quite fashion forward. They Yeah. they must be weeping as well. I mean, I wept. I don't know why. Maybe it was just a relief that it's over. But to put together a fashion show in those days was quite a job and very arduous and something unheard of to do what we call now solo shows. And of course, today there's an industry. It's I think there are about 3,500 students since the past 15 years coming out of NIFT. So there's a lot of great designers there in India right now. Did you face a lot of resistance in your choice to become a designer? Because 20 years ago, fashion designers, weren't in people's frame of mind like they are now. Well, resistance in the sense we were looked upon as oddities. It was not considered a profession of repute. It was also not considered a fashion. It was considered like a dumb blonde profession. It wasn't considered a profession which would contribute, one, to economy, towards jobs. There was no sense of seriousness to fashion, which today people have had to acknowledge. It's probably one of the third or the fourth largest industry in the world. Okay. Do you find that in the last 20 years the size of the model has changed? Have the models become thinner? Has the ideal become thinner? There was a show recently I was doing at London Fashion Week. It was winter, because the London Fashion Week, the summer collections are in Feb. And in that 9 a.m., and you see there's a protest happening there. And the size 16 or 18 and pluses are there in fishnet stockings, fighting their way and protesting about the size of the zero models. In the early days, we didn't have, the very skinny models. Today, I think it's the middle years where the models were very skinny. And then where there was a waif like Kate Moss and models went down to size 0. Size 0 means a chest size, I think, of 30 to 32 inches, which is really narrow, especially on a 5'10". So what do these models do to stay that thin? Some of them are lucky, some of them are young, I guess some are tall, some don't eat. Okay. 3 tricks that you can give all of us sitting here to look instantly thinner. To look instantly thinner. Yeah, the whatever best you're wearing. and the easiest one is wear similar toned clothing. That always helps. And if you've got the out hips, get the line straight, follow us or me. Or if you are bigger on the stomach, probably not very loose clothing, I would advise, because a lot of people feel very loose clothing is what makes a person hide their fat, but actually the eye can perceive the size. It's better to give it more tailored form and rectangular shapes. Okay. Is it true that black makes you look thinner? Yes, black, navy, purples, all make us look thinner. And breaking them, patterns I don't think make us look fatter, which is a myth. Big patterns, I think that has no relevance. They probably hide it. Okay. Do you think that designer brands, fashion is a luxury that a country like ours cannot afford? Yeah, I remember telling that once to P.R. Singh that we're never going to be doing well with designer wear in India. We Indians psychologically look for sales and deals. If we're going to buy designer wear, we're going to buy it on sales. But I think it's probably changing. Today's generation, the younger one, they have a different viewpoint on it. There's a different perception of prices. And everybody wants to have, a kind of a bit of designer wear or a designer something in their lives. What do you think? Does wearing designer clothes make you more desirable? Not true. So then what makes you more desirable? Because fashion is about being desirable, I think right? fashion and what makes a person more desirable is his attitude, his approach. Yes, grooming, styling, identity. It doesn't have to be with designer wear. It can be just with clothes. I mean, when I grew up, we had Sarojini Nagar. Yeah. So we survived. So can the youngsters. And even now, the most fashionable people I've had to meet in my life don't wear head-to-toe designer wear. They mix it. So what would you say to people
about being fashionable, right? What to you is fashionable? And don't say, oh, it's about being comfortable in your skin. That's the most fashionable. And don't be a fashion victim. It has to be something more than that. How to be fashionable? Yeah, how to be how to be stylish in all situations. I think the most stylish you can be is to be who you are. You can step it up by taking a risk. Most of us follow patterns. We tend to wear pretty much what we, even if it's designer wear, even if it's non-designer wear, we tend to form a habit. That habit is how we program ourselves into buying, and we never take that risk. It's just that little edge where you step out of your comfort zone of dressing, of your pattern of thought, of buying. That's what I would call being fashionable also. Once in a while you were known as a Nangu Pangu designer. Yes. And everyone wanted to come to your fashion shows because it was very sexy. Have you toned down? I remember once a journalist asking Nina Manuel, who I sent out in one of the 90s, probably before the kids were born here, and in a fishnet sheer thing, and we sprinkled some sequins here and some sequins here. Those days we didn't even have thongs, they weren't invented. I don't know how that brave Nina Manuel did it. Because she has a stunning body, maybe. Yeah. So, but we didn't do it as provocative. I didn't do it from the angle of cheap. I did it from the angle of fashion and from the angle of belief that this is really it. And we, of course, muted down the lights so that it's aesthetic. And she did float sort of onto the ramp. And I got a lot of flack for it, but c'est la vie. And then I saw youngsters doing that. I mean, now you see them wearing them out in clubs sometimes. It's risky, but they're doing it. What do you think of that? I mean, I find that fashion, with especially the latest outings of Miley Cyrus, Riri, is just getting more and more provocative, more and more skin. Yeah. I mean, just going out in your swimsuit to a mall or, not wearing any underwear and showing up. What do you think of that? I think you have to draw a line, and safety is very important in India. So if clothing like that, and especially when we live in India, I mean, I myself, I may want to follow fashion, I may want to wear that swimwear, but I would rather wear that at a place where I'm comfortable, where I'm not going to be gawked and stared at, where I know I'm safe. I think India, we need layers, whatever the weather be, when it's the car, the driver, the family groups. Clothing can't just be what we see always on the ramp. You've got to layer it, and that's how you've got to wear it. Okay. What about 3 things that you think should be banned in Indian fashion, which has just gone wrong or we've had too much of? I've had some suggestions from the audience before saying these things just have to be banned. What's your view on few things? Banned in fashion. I think, soap operas, they need to be banned, and that overdoing of Indian clothing. Who wears 200 kilos of jewelry and sits at home with the tilaks and all that panning of that... You'd be surprised. And that makeup, where the grannies also wearing so much makeup. It's not real. I think the fashion of the soap operas needs to be real. I remember working with Lara Datta for a film, and I told her, Lara, you play a poor fisherman girl. I mean, you can't be really wearing a Missoni swimsuit and having these heels, which is what we were shopping for her on her request. And she said, Reena, this is Hindi cinema. This is how we are. Just get on the side. It's not real. Get the logic. That, I think, the overdose of cinema fashion, of at least soap opera, needs to be going away if I could take it away. The other thing is, of course, the nightie and the chunni, which I know it's very midnight comfy. walk. Yeah. I know it's very comfy, but I always see them, going to work, and you have the carts of the fruit, and then there's a sneak. And then I don't like those comfy shoes. What's they called? The Birkenstocks? I can't bear them. Crocs? What about Crocs? There's Birkenstocks, which are like slippers, the German ones. Yeah. And then there's Crocs, which are like, sort of like plastic with the holes, which doctors wear. Yeah, the Crocs, no. I think it's the Birkenstocks, because those, after you wear them, you stop wearing good footwear. Your Right. feet are not any more nice looking in those.
Okay, so You, we've you gone down obviously to... advocate the third, right? What? Once you wear No, them, no, they no, say no, no. nobody gets Yeah, off once them. that's true. Once you start wearing them, you Yeah. don't get off them, and I'm a big one for comfort. I Yeah. never wear anything which is So uncomfortable. I understand comfort, but I'm scared if I go for that comfort, I'll never go back to fun with shoes or fashion in shoes. I'll end up in that monotonous. No, but from the time when Indian fashion, especially Indian clothes, was really sexy with like, you design like hot blouses, bikini blouses almost, and the transparent churidar, to now going to these massive tent anarkalis. Yeah. Where is it going? I think the anarkali is not going to go anywhere. It will stay as long as we have hips, as long as we have stomach, and we have great necklines to show off. Anarkali will live. It is a great invention like the churidar. Mine was purely a necessity because I found myself getting married and I had to buy these churidars and I opened them and they were higher than me. And when you're that young, you're really fashion ki mari. So I invented it from the catsuit. I took it longer and I made it sheer. So more desperate to get more sexy. And lo and behold, today it's everywhere. The maids are wearing it. Everybody's wearing it. Schools are wearing it. Colleges are wearing it. It's there. What would you think is sexy in style today? Or what is like maybe two things which are really sexy or really in? I think the sari for me is forever sexy. It's never going to lose its appeal. Is sari, is it practical? Not in today's day and age, is it practical? Yeah, but when you wear it in a freedom fighter format, maybe. What is a freedom fighter format? Which is also popular. Yeah, I feel like a freedom fighter when I wear a sari, like, the good girl, wear crisp and with like all that. the pins. Yeah. It's okay. But it's still very sexy. And what is the second thing which I think is very sexy? Oh, jeans, blue jeans. They would always be sexy. Okay. I was thinking, do you think that we can go into the audience and give maybe... Yeah, we need to bring them back. I mean, I know the Sakshi, get the audience back. Once the audience comes back, Till then, what there is the was latest... a wonderful girl here with a great hairstyle. Has she left? Yeah. We wanted to give her a style award and she's left. Talk about bad timing. Really nice hair. Okay, till some of the audience comes back. I thought we'll give an impromptu style award. Maybe we could walk around and you could choose a few people who you think are very stylishly dressed. Or you could give some impromptu style advice and say, oh, if you had done your hair just a bit like this or just a bit like that. And then you can just catch the next flight out so they don't catch you. Yeah, you can get away with it. Back in your bed. Yes, yes. So till they're coming in, why don't you tell me something about what you think is going to be in fashion for the next season? Now winter is coming and we've got all the Diwali season. This is where all the Indian fashion comes in. Yeah. What's going to be I big think for colors? the guys, I would say, I like the idea of Manmohan Singh and the turbans because here there's a lot of turban culture. I know I grew up in Chandigarh and I personally want to wear the turbans myself. One, it makes me 3 inches taller. Two, I think it's very chic to wear turbans. And for the guys, the kurtas are very good. You can wear them over your jeans. I know Akshay does a lot of it, but even in brocades, now it's getting more edgy. And what did you think of Modi's turban at the Independence Day? I like the flyaway shots. I don't know how he looked in real because I saw it on TV and you can get length in TV. So I can't imagine how he looked in real, but the flyaway with the turban really was very nice, yeah. Okay. And with the women, I think we have so much choices with today with the shirts, the pants, the leg wear. Wear all the fashion wear the anarkalis because at Diwali time it's cold. Chandigarh gets cold like Delhi. And shiny is good. Gaudy is very good. I love chum chum. So one piece of advice for somebody who's going to be a bride this season. Oh, the young... You might have one of these people getting married. The waist. Show the waist while you have it. Midriff. Don't waste the waist. Yes. Forget the in-laws, forget the grandpas, forget what the mums are going to say. Show that waist. Force yourself. You will love it 20 years later. They like that. Okay, even the Dole guy is woken up. Yeah.
I woke someone Okay, up. should we have a little walk around and select some people? Yeah, yeah. Okay. I think I might have to go out in the alley because the chick I wanted to give the awards run off there. I'm sure you'll find somebody else here that you'd like. I want to know, where are you all from? Which college are you from? Wow, because this is a city of students. And you know, when I used to be here, every girl was on a rickshaw or on a moped, including me, and behind me was my clan of bikers, the boys. No boy spoke to me, but one guy marked me as his, and the others had to call me Bhabhi. I only found out many years later. Does it still happen here? So you were, as Chetan Bhagat says, a half girlfriend. Yes, half girlfriend. I had no clue who my followers were, but wherever I went, my rickshaw or my moped had its own bikers. Like you were protected. Yeah, patrol. Yeah. Nice. Okay, now off with you. Go and have a little walk around. Okay, so let me go to the boys first. Scary. Okay. True? You're from the school? No. Huh? From the college, right? No. Oh, okay. Let's say true. Okay. India today? No. Okay. Where are you from? I'm from LPU Jalandhar. And you all are from LPU Jalandhar? Most of them. I've been to Jalandhar and I've done a fashion show. We found a wonderful crowd there. Yeah, ma'am. Yes. And you also marked a girl you like? No. No. Yeah. And what about Rose Garden? Do people still walk through it? No, I visited Chandigarh like 2 years before. I don't know much about that Rose Garden and all. I know they are places of interest, Rock Garden, Rose Garden, but I've visited them long before. So what is your most fashion? Like, what would you do if you thought, this is my most cool look, this is the maximum you want? Reena, we can't hear you. You have to put the mic to you when you speak and then put it back. Okay. So what I'm trying to ask, sorry about that, Kali, you know my inexperience on being on TV. Check. The mic is well. So what I want to ask you is, for you, what is your life's fashion dream moment? What is it? How you would dress your own self? What is that one thing you will buy, eat, be in, car, whatever, movie? Like for me, the most basic look would be a black t-shirt with a blue denim. It would be the most cool look for me. What about a band gala? Like, would you like to see yourself like in a makeover like that? On my wedding day. On your wedding day. Okay. How about this guy? This guy, yes, still got one. Thank you. I've got to get your mic. So are you a fashion student? No, ma'am. I'm a civil student. Civil student, wow. So you know what you're wearing in our language. This is this new kind of a graffiti art where you're Superman and then you have your plaid shorts. These ochres are very big color in the next season. I'm just beginning my collection on it. Wow. And your turban, you've worn it in a very cool style. Wow. This is really big. Can I have a picture at least? Reena, do you want to give him a style award in the men's? Yeah, I think so. Because you're trying to be different. Hang on, your award is coming. Thank you, ma'am. Thank you. अच्छा, I have a question. शक्ल छोड़ के गुंजाइश बता दो, मतलब शक्ल छोड़ के कहाँ कमी है बता दो, मतलब थोड़ा सा. किनको? इनके? No, मेरे लिए पर्सनल क्वेश्चन है मेरा. पाजी, thank you so much. बिराजो अवार्ड मिल गया तन्नू. I think you should wear his turban. It will really look nice on you. अरे वाह, I have also got some suggestions. What do you think is all right, now very cool turban? Let's take a look on to girls now. No, you please don't take a look at any girls, okay? You're support staff. Come on, Reena. In Chandigarh, nobody looks at the girls. You have to be behind them. That's what I remember. Hi. This is a city where every girl I went to school with was so beautiful. I mean, the prettiest girls come from this city. And they're tall. They can be all models. But the only thing is they're strong. You know, they can beat you in basketball. Hi. Are you from Jalandhar as well? I'm from Chandigarh.
I'm from Kashmir. You're from Kashmir? Yeah, I'm from Kashmir. How do you like it here? I like it good. Yeah? Yeah. Are you studying? What are you studying? I'm studying biotechnology in LPU. Wow. You're not only pretty, you're also intelligent. Thank you. Yeah. Would you ever like to be on TV like India Today? No, thank you. Yeah. So can we give you an award of some kind? Maybe she would be Elegance Award from me. लकी से दूर रहना पर You all are winners, huh? Each one of you. Thank you, ma'am. We have a second style award winner. Fantastic. Well done, Reena. Grace of Manaka. Would you want to come along? Come along. No, I can't give style awards. I'm in the media space. I can't become a designer now. I think everybody's a designer. I just feel we can all create things after all their clothes. I mean, now in our business, all our original 500 clients are now designers. Painful designer. Every family has one designer of its own. Is there one more style award you want to give? Yeah, my favorite's gone out. She had a great hairstyle. I think she left behind the popular. I keep thinking he's a singer, but he's not. He's a politician. चलो कोई और नहीं है तो इधर आ जाओ देख लो. No. Let's just find one tall girl. Which one of you is tall? About 5 feet 6. Stand up. Whosoever feels, she. Oh, there you go. Huh? Okay. Yeah. There you are. I'm finding you. I saw that. I found my girl. Found her? Yes. Awesome. This is the big hairstyle. This is the big trend. Look at that. That's the Quite big hair. really. She reminds us of Preeti Zinta, na? Preeti Zinta from Lakshya. She reminds us of Preeti Zinta. Also very now, that pixie look, the hairstyle is very fashionable. Where did you cut your hair? Headmasters. So, are you studying with them? No, I'm from Chandigarh University, Okay. and I'm a computer science engineering student. Okay. Wow. So look, you've got great potential. Thank you so much. Okay, Reena, I'm calling you back for the last question. So thank you so much for all these tips. No, you didn't. Thank you so much for all these tips. I think one of the last questions I'd like to ask you, because there may be some people in the audience who are thinking about fashion designing as their career option. Is there money in this? Okay, guys, there is lots of sweat, lots of hard work, and those 5 minutes you have seen of fashion are truly over 5,000 hours of work behind the scenes. And training is very important, especially in today's time. You do need inherent taste. And the only good thing with fashion is you don't have to be academically a genius to do well in fashion. You know how to work hard, you learn the trade, you can even learn on the job. And then you don't give up. The usual thing, I always ask for assistance with good health. Health, because mostly we are not working in the most, comfortable of environments. A lot of our work is done in the slums, in areas where you have difficult access. So if you're able to survive the long hours of work, this is a good profession. Yes, there is money, and there is immediate money in the sense, if you have a product which you've made with a low capital, which stands to have a buyer, you get immediate return. But in the long run, no, maybe. Maybe it's not as big as being in a... You mean it doesn't keep growing? It's medium it's money. fast, but it doesn't... Yeah, it can. And where's the money? Is it in the weddings? Yes, for the designers who are successful in weddings. 1% make, though, of 100. 99% So that's the area to don't. focus in. Yeah. If you're going to go into fashion designing, look at becoming like the wedding designer. I think more than that, the bespoke designer is going to work now because there's so much of fashion. There is such a, it's an oversaturated market at the moment in India. People, what they want, like they want Flipkart to come and deliver things or Myntra at their doorstep. Equally so, if you're the designer of a smaller city, don't leave home.
don't go for the big cities. It's not true. The best bet are the smaller towns. They don't have their local designers. They don't have their own guys they want to call their own, and who they can go to for their emergency collections or, you know, the doctorates. They need their own stars. So small town in India stands a good chance for the designers, I think. Thank you very much, Reena. Thank you for flying the fashion flag for all of us. Thank you for coming here. I would request Raj sir, please, if we can come and hand over the token of appreciation to Reena. पाजी आपकी तालियां नहीं आई, आपको तो गिफ्ट भी मिला है. For the next session, I would request Anjana Kashyap ji to please come and take us through the next session. How many of you have heard of the film Kaum De Heere? That's very less. And you don't know about the controversy. So you know about it. Okay, so we have the cast and crew of this film here with us today. We'll be asking some really hard questions. Because this is about the Iron Lady of the country, a chosen Prime Minister, her assassination. And can a film or art have the liberty to glorify her assassins? That's the big question we're going to ask. I now want to welcome on stage Sandeep Bhalla, who's the producer of the film, Mr. Pradeep Bansal, co-producer, Isha Sharma, actor, and Sukhdeep Sukh, actor. A big round of applause for them because, see, it's a film and at least we should have a debate on such films so that we understand the boundaries that art can go to or go ahead with. We're usually very nice with our guests that you've seen through the session, but we are going to ask some really hard questions here without any ill will. The very fact that they are here to answer those questions shows that they're open to discussion and debate. You agree on that? Isn't that good? That's really nice. Because now it's clear that the INB ministry has said that this film is not going to run in the country. But let me also tell you that it's already been released in countries like New Zealand. And audiences there have watched the film. Just for your knowledge, because very few of you know about the film, Indira Gandhi, the Iron Lady of the country, the Prime Minister, her assassins have allegedly been glorified in this film. And the very name suggests it. Mr. Pradeep Bansal, I want to start with you. आपने पिक्चर का नाम रखा है कौम दे हीरे. आप हत्यारों को हीरे बोल कैसे सकते हैं, वो भी देश के प्रधानमंत्री के हत्यारों को? सबसे पहले तो मैं इंडिया टीवी और इंडिया टुडे और आज तक का धन्यवाद करता हूं कि उन्हें हमें स्टेज साझा करने का मौका दिया. हमने इनको कौम दे हीरे नहीं बोला है. नानकशाही कैलेंडर के अंदर हर साल इनकी बरसी मनाई जाती है. अकाल तख्त के अंदर इनको कौम दे हीरे बोला गया है. 31 अक्टूबर को बेअंत सिंह जी की बरसी मनाई जाती है. 6 जनवरी को सतवंत सिंह जी और केर सिंह जी की बरसी. आप नानकशाही कैलेंडर उठाकर देखेंगे, उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि इनकी दोनों की बरसी, तीनों की बरसी मनाई जाती है हर साल. तो अकाल तख्त जो बोल देगा वो आप फिल्म बनाकर देश के सामने पेश कर देंगे. हम इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, हमारा काम है फिल्म बनाना. पिछले कुछ सालों से सिर्फ कॉमेडी के ऊपर पंजाबी फिल्म मूवी बना रहा था. हमें लगा कि किसी जीवनी के ऊपर कोई ऐसी मूवी बनाई जाए जो ऐतिहासिक हो. तो हमने इतिहास से किसी को उठाकर अगर ऐतिहासिक हो या जिस पर बवाल मचे. नहीं, ऐसा बवाल वाली बात नहीं है. कुछ लोग जिन्होंने अभी मूवी देखी ही नहीं है
वो लोग बवाल मचा रहे हैं। अगर आप मूवी देखेंगे ऐसा कुछ नहीं है मूवी में, सिर्फ हमने जो उनकी जीवनी के ऊपर मूवी बनाई है। जीवनी के ऊपर मूवी बनाना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उनको सच्चाई को पर्दे पर लेके आना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो हमने सिर्फ सच्चाई के ऊपर मूवी बनाई है, ना कि हमने उनको ऐसा कुछ बोला। एक बैलेंस्ड मूवी है, आप अगर मूवी देखेंगे तो बिल्कुल बैलेंस्ड मूवी है। इतिहास का सच कैसे आप तय कर सकते हैं? आप इतिहास के सच में आप एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? आप इतिहास के सच में कैसे कह सकते हैं कि 2 हत्यारे थे, एक प्रधानमंत्री का, चाहे किसी का भी हत्यारा हो, वो हीरा कैसे हो सकता है? ये एक बेसिक ह्यूमन क्वालिटी है जिसको हम आपसे बहुत सीधा सवाल कर रहे हैं। हम ये नहीं पूछ रहे सिर्फ कि इंदिरा गांधी और प्रधानमंत्री, किसी का भी हत्यारा हीरो कैसे बन सकता है? आप पूरे मैनकाइंड के खिलाफ जा रहे हैं साहब। नहीं, ऐसा नहीं है। आप मूवी देखेंगे जब आपको पता लगेगा, उसमें हर वो चीज दिखाई गई है। एक साइड उन्होंने हत्या की तो उनको हत्यारा बोला गया है, तो आपने और मूवी दिखाने के लिए ये नाम रख दिया। उनको फांसी की सजा भी दी गई है। और ठक्कर रिपोर्ट की, जो ठक्कर कमीशन की रिपोर्ट है, वो दिखाई गई है कि उनको ये नहीं करना चाहिए था। उनको बुलेट का यूज नहीं करना चाहिए था, बैलेट का यूज करते अगर उनको नहीं हटाना था तो इसलिए हमने तो सिर्फ और सिर्फ एक नाम उठाया है। अकाल तख्त जी ने उनको एक नाम दिया है, हमने वो नाम, उसके कारण मूवी बनाई। आप अकाल तख्त के पीछे ना छिपे, पिक्चर आपकी है, नाम आपने दिया है। बाकियों से भी बात करते हैं, वापस लौटूंगी आपके पास। सुखदीप सुख साहब, सतवंत सिंह का किरदार आप निभा रहे हैं। अच्छा हुआ कोई तो मुस्कुरा रहा है सेशन में। एक एक्टर को ये आजादी है कि वो किसी के भी कैरेक्टर को पोर्ट्रे करेगा, और विलेंस जो पोर्ट्रे करते हैं उनको भी लोग उतना ही पसंद करते हैं। तो आप वहां पर जस्टिफाइड हैं। लेकिन क्या एक देश के नागरिक के रूप में आपको नहीं ये बात चोट पहुंचाती है कि देश के प्रधानमंत्री के हत्यारों को हीरो बताया जा रहा है और मैं उस फिल्म में वो हत्यारा का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूं? सबसे पहले आपने जो बोला है कि जो पोर्ट्रे कर रहा हूँ एज एक्टर, तो मुझे जो स्क्रिप्ट दी गई उसके हवाले से मैं बोल सकता हूँ कि ये मुझे पता था कि एक कंट्रोवर्शियल इशू हो सकता है, बट एज अ एक्टर इट्स माई ड्यूटी टू डू माई जॉब टू माई एबिलिटी, एंड मैंने कोशिश की है कि शुड पोर्ट्रे दिस रोल अप टू माई पोटेंशियल। सो आई एम ट्राइंग कि ये मैं दर्शकों को सामने बता सकूँ। आफ्टर सीइंग द मूवी, अगर वो देखते हैं तो वो लगता है कि the people were better judge कि ये फिल्म अच्छी है या बुरी है, because lot of controversies have come out because lot of the people don't know about the movie. After seeing the movie you should say कि ये बुरी है या अच्छी है, because फिल्म देख लेंगे तब तो आपका काम निकल जाएगा। यहाँ पर तो दिक्कत ये है कि आप हत्यारों को हीरे बोल रहे हैं, आप बवाल मचा रहे हैं ताकि लोग सिनेमा हॉल तक पहुंचे। हम बवाल नहीं मचा रहे थे, एक्चुअली ये मूवी बनी थी, वी आर जस्ट अपनी तरफ से जो हम प्रमोशंस कर रहे थे, वी आर डूइंग अ ट्रायल लेवल बेस्ट टू रीच द ऑडियंस, बट समहाउ इट हैज ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन। बट हमने अपनी तरफ से बवाल नहीं मचाया था, हम नहीं चाहते थे कि हमारी मूवी बैन हो, बिकॉज लॉट ऑफ मनी हैज बीन पुट इन, लॉट ऑफ एफर्ट हैज बीन पुट इन। वो एंगल तो हमेशा रहता है। सो नोबडी वांट्स कि उनका पैसा खराब हो। सो और सिर्फ आप 4 लोगों का पैसा नहीं, जो तमाम लोग और भी जुड़े होते हैं, क्रू मेंबर्स जिनके चेहरे सामने नहीं आते, उन सबकी जिंदगी जुड़ी होती है फिल्म से। लेकिन फिर भी फिल्म अगर मौलिक रूप से देश और नागरिकों के खिलाफ हो। अब मैं ईशा आपके पास आना चाहती हूँ, आपको ये नाम ठीक लगता है? ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग तो आपको ठीक लगता है। तो आप मानती हैं कि जो इस फिल्म में पोर्ट्रे किया जा रहा है, हत्यारों को हीरा कहा जा रहा है, वो सही है? एक्चुअली अकाल तख्त ने उन्हें हीरे कहा है, तो आई थिंक आप तो अकाल तख्त के पीछे क्यों छिप रहे हैं? क्या आप अपनी सोच नहीं रखती? नहीं, मेरे अकॉर्डिंग तो ठीक है। आप उसकी लाइफ में देखो ना क्या क्या हुआ है। आप सिर्फ इंदिरा गांधी को कि उसको मारा है तो कौम दे हीरे नहीं कहना चाहिए उन्हें, लेकिन उनकी लाइफ में क्या हुआ, उनकी कौम के अकॉर्डिंग देखा जाए ना, तो हत्या हल है, किसी की हत्या कर दो। इट्स नॉट गुड। मैंने ऐसा नहीं कहा कि हत्या गुड है, लेकिन नाम मेरे अकॉर्डिंग ठीक है। तो आप ही बता दीजिए कौन सा नाम सुटेबल रहेगा उनके लिए। नहीं, हमसे कुछ और कह दे जो क्या फिर फिल्म भी हम भी बना लेते, फिर आप क्या करेंगी? मेरे अकॉर्डिंग तो ठीक है ये नाम। संदीप भल्ला साहब। हाँ जी मैम। हाँ जी बोलिए। सर इतने सारे सवाल हो गए हैं तो बस आप सवाल समझ ही गए होंगे। आप भी को प्रोड्यूसर हैं। पैसा लगाने के पीछे इस फिल्म में मकसद क्या था आपका, क्या सोच थी? मैम पैसा लगाने के पीछे ये नहीं कि हमने तो सच जो है वो दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि सच के 2 पहलू होते हैं। एक सच तो ये है कि किसी ने उनकी मतलब हमने जो उनकी बायोग्राफी दिखाई है, जो उनका मतलब रहते थे वो और उनका क्या जीवन था, वो कैसे मोटिवेट हुए मारने के लिए,
कोई ऐसा मतलब हमने ये पक्ष दिखाने की बात की है कि कभी भी ऐसा ना हो कि ऐसे सर्कमस्टांसेस आए कि ऐसा किसी को करना पड़े। एक सच ये भी है कि मैं कंट्रोवर्सी आपके सवाल का जवाब देता हूँ। हो जाएगी। एक मिनट, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। एक सच ये भी है, हाँ जी, एक सच ये भी है प्रदीप साहब कि कंट्रोवर्सी करो तब शायद लोग सिनेमा हॉल पहुंच जाएंगे। कंट्रोवर्सी करना हमारा मोटिव नहीं था। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंट्रोवर्सी से बचते आ रहे थे, हमें कंट्रोवर्सी नहीं करानी, हमने फिल्म दिखानी है, सच दिखाना है लोगों को। किसी की हत्या करना जुर्म है, उसको सजा मिली है और उनको सजा दी गई है, फांसी की सजा हुई है, लेकिन हत्या का कोई मकसद जो था उनका वो क्या था? उनकी कोई पर्सनल रंजिश थी? नहीं। अकाल तख्त साहब ने उनको सम्मानित किया कौम दे हीरे, वो एक जुम्मेवार संस्था है, मैं उनके पीछे नहीं छुप रहा हूं। अकाल तख्त साहब कोई आप छिप रहे हैं? नहीं, हम छुप नहीं रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि अकाल तख्त साहब उनको कौम दे हीरे मानता है। तो आप अकाल वो तख्त हर प्रोडक्शंस हैं? साल उनको तो साहब आप वो अकाल संस्था तख्त प्रोडक्शंस हैं, मेरा सवाल सुनिए। तो आप अकाल तख्त प्रोडक्शंस हैं? नहीं, हम अकाल तख्त प्रोडक्शन नहीं है, हम तो सच दिखाने की कोशिश करी है। जो सच है वो हमेशा कड़वा होता है। ये जो घटना घटी, देखिए ये घटना घटी, देखिए हम नहीं ये चाहते घटनी कि नहीं इस चाहिए मंच का थी, इस्तेमाल आप लेकिन ऐसी किसी भी बात मुझे को सिर्फ एक चीज का जवाब अरे चाहिए भल्ला साहब, कि वही इंदिरा हमें गांधी भावना के हो। हत्यारों को तो इंसाफ, भल्ला साहब, इंदिरा गांधी को तो मिल भल्ला गया, साहब, लेकिन जो इंसाफ का- 3000 भल्ला सिख साहब, जो 3000 सिख कत्लेआम में मारे गए हैं, उनको इंसाफ आज तक नहीं मिला। अगर क्या उनको इंसाफ मिलना चाहिए था? नहीं मिलना चाहिए था। 3000 परिवारों की हत्या हुई और 3000 लोगों का कत्लेआम हुआ, हर एक सिख को घर से बाहर निकाल के मारा गया। क्या उनको आप सजा देने के लिए आप नहीं बोलते? उनको सजा भी मिलनी चाहिए। अगर उनको उस दिन सजा मिल जाती तो ये फिल्म आज ना बनती। इंसाफ का इंतजार इस देश में बहुत लोग कर रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछे, उसके बाद आप अपनी बात रखिएगा। सवाल ये है कि घूम फिर कर कला की आजादी पर सवाल खड़ा होता है। आप लोग में से कितने लोग मानते हैं कि कला की आजादी के नाम पर हम कुछ भी दिखा सकते हैं, हम हत्या को भी, हत्यारों को हीरो बता सकते हैं? नहीं, कितने लोग हमने मानते किसी को हीरो नहीं दिखाया, हमने किसी को ग्लोरीफाई नहीं किया है। नहीं, हमने आपने फिल्म का नाम ये क्यों रखा फिर? नहीं, देखिए ये टाइटल, फिल्म का नाम क्यों रखा? जो टाइटल मिला माइक, गया एक है सेकंड, वो माइक देते कौम दे हीरे, मैं उसका जवाब देता हूँ, टाइटल का मैं जवाब देता हूँ। एक सेकंड, उसके बाद सेंसर बोर्ड वाले, सेंसर बोर्ड ने इसको पास किया है। सेंसर बोर्ड एक जुम्मेवार संस्था है, अगर उन्होंने इसको पास आप किया, सेंसर बोर्ड की बात छेड़ रहे हैं तो बता ही दें। हाँ जी बताइए। सेंसर बोर्ड के सीईओ ने सीबीआई के सामने ये कन्फेस किया है कि मैंने पैसे लेकर इनको सर्टिफिकेट दी थी। अब इसका जवाब क्या है? मैं इसका जवाब आपको देता हूं कि हमने जो इसका सेंसर अप्लाई किया था वो जनवरी में अप्लाई किया था। 28 फरवरी को ये फिल्म सिनेमाघरों में आनी थी, लेकिन ड्यू टू सेंसर उनकी रिजेक्शन हुई, फिल्म नहीं आई। दूसरी कमेटी ने इसको देखा और उसको पास किया। फिर 14 मार्च को पूरे ऑल ओवर दी वर्ल्ड ये फिल्म रिलीज हुई है। नॉट आ न्यूजीलैंड, ओनली कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके, हर एक कंट्री में रिलीज हुई है। कहीं कोई बवाल नहीं हुआ, हिंदुस्तान में कहीं कोई बवाल नहीं हुआ। जो बवाल हो रहा है राजनीतिक लोग अपनी राजनीति मंशा के कारण बवाल कर रहे हैं, अदरवाइज कोई बवाल आपको कहीं सड़कों पे नजर आ रहा है? मैंने तो आज तक नहीं देखा। एक सेकंड भल्ला साहब, आप सवाल नहीं समझे। मेरा सवाल आप दोनों से ये है कि सीईओ सेंसर बोर्ड जिन्हें सीबीआई ने हिरासत में लिया है, वो खुद कन्फेस कर रहे हैं कि 29 मई को उन्होंने तो सिंघम के बारे में भी कहा है, किक के बारे में भी कहा है। धीरज नहीं है क्या? हाँ जी, सवाल सुनिए। 29 मई को फिल्म रिलीज हुई, अगर मैं सही हूँ 29 मई को आपकी फिल्म रिलीज हुई है, सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट मिला 29, हाँ 29/5 को। हाँ मुझे पता है। तो उन्होंने खुद कहा है कि इन फिल्म वालों से मैंने पैसे लिए हैं। मैडम एक मैं आपको बात बताना चाहता हूँ अमाउंट भी कोट किया है कि हमने किसी को कोई पैसा नहीं दिया है इस फिल्म को पास कराने के लिए। देखिए एक रूटीन प्रोसेस जो एजेंट्स वहां पे रखे गए हैं वो फिल्म पास कराने के लिए, देखिए मैं बॉम्बे में जाकर फिल्म पास कराने जाता हूँ, थ्रू एजेंट ही करानी पड़ती है। वहां एक सिस्टम बन चुका है, 50-60 एजेंट वहां काम करते हैं। वो काम करते हैं कि हम फिल्म पास कराना है, आप फिल्म पास नॉर्मली जो एक प्रोसेस है, एजेंट को कितने पैसे जो एजेंट जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं वो रूटीन प्रोसेस के हिसाब से पैसा चार्ज करते हैं। नॉट वो सभी फिल्म, सभी प्रोमोज
सभी के लिए प्रचार करते हैं, नॉट ये नहीं है कि हमने कोई एक्स्ट्रा कोई मनी दिया है, कुछ दिए। भल्ला साहब कितने पैसे दिए? मैडम हमने जो रूटीन प्रोसेस के पैसे होते हैं हमने कोई वैसा मतलब एक्स्ट्रा नहीं दिया है, ना किसी रिश्वत के नाम पे। भूल भी जाते हैं आप। हमारी हमने एजेंट की जो फीस, एजेंट की फीस रहती है, किसी भी प्रोड्यूसर को कोई पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैडम वहाँ पे आप नहीं, मैडम मैं चुप नहीं रहा हूँ, आपने शायद सुना नहीं, जनवरी से लेकर अभी तक उन्होंने एक सिस्टम बना दिया कि जो फिल्म आएगी उससे पैसा चार्ज करेंगे, जो प्रोमो आएगा उससे पैसा चार्ज करेंगे, ठीक है ना जी? हम सवाल लेंगे एक दो। हाँ। राकेश कुमार जी का हमारी मूवी से कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने कहीं कन्फेस नहीं किया है कि सीबीआई के सामने कन्फेस किया है? बिल्कुल नहीं किया है, बिल्कुल किया है। ऐसा है ना कि वो बिल्कुल कन्फेस नहीं किया है, उनका हमारी मूवीज के सेंसर से कोई लेना देना नहीं है। हमने जनवरी में अप्लाई किया था, हमें 29 मई को मिला है, 2 बार स्क्रीनिंग कमेटी हुई है, हर बार हुई है, इसलिए उनका कोई लेना देना नहीं है। और मैडम मैं आपको सेंसर का प्रोसेस शायद आपको पता नहीं है, मैं समझाना चाहता हूँ। एक्सक्यूज मी, मैं आप सबको सेंसर का प्रोसेस आपको शायद नहीं पता। आप काफी बोलिए, अब जरा बच्चों की बात। मैं एक कुछ सवाल लेते हैं प्लीज। हेलो सर। हेलो मैम, आज से एक सवाल करना चाह रहे हैं सर। आप लोग से ये क्वेश्चन है, जैसे मैम आप लोग से जवाब पूछ रही है तो आप लोग डिफेंस अपने आप को अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, सिंपल थॉट्स है तो आप एक एक्सक्यूज देके वो आप बता रहे हो अपने आप को। इस दुनिया को पता है, इसको सबको पता है कि सच्चाई क्या है। If you prove yourself in a right way manner, then no one is going to question you. मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। आपकी बात का जवाब देता हूँ। बंसल साहब, मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। नहीं, मैं एक आपको अलग से सवाल पूछ रहा हूँ कि ज़्यादा कंट्रोवर्सी इसके टाइटल से उठ रही है। फिल्म में क्या है, जैसा कि आपने बोला कि आम लोगों को अभी पता नहीं क्योंकि फिल्म देखी नहीं है, बाहर कुछ लोगों ने देखी है। फिल्म में क्या है, फिल्म में थोड़ा विस्तार से बताइए ताकि हमें भी लगे कि आप कुछ कहना चाह रहे थे और फिल्म बनाई है तो उसका मकसद बताइए, उस फिल्म में क्या है ताकि हम माने कि ये सब नहीं है। जीवनी पे आधारित फिल्म है, ये सतवंत सिंह जी, बेअंत सिंह जी की जीवनी के ऊपर है। इसमें वही दिखाया गया है जो उनके साथ वापरा है, जो उन्होंने किया, उनको क्या जरूरत पड़ी कि उन्होंने इंदिरा गांधी का पे अटैक किया, उसके बाद क्या हुआ, उसके पूरे परिवार के साथ क्या बीता, उसके परिवार ने क्या दुख महसूस किया, उसके बाद उनके साथ क्या हुआ है। आपने सतवंत जी और बेअंत जी कहा, जी तो हम किसी के लिए भी सोच समझ में आ जाती है, इसी के साथ करते हैं सेशन का। मैंने इंदिरा गांधी जी भी बोला, हर चीज है, हम किसी को सम्मान के साथ बोलना कोई गलत नहीं है। हत्यारों को सम्मान देना हिंदुस्तान नहीं सिखाता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लकी Can I request Kaveri Bamzai, editor India Today, to please give a token of appreciation? And शायद हम लोग को, जितने लोगों ने मूवी देखी है शायद उनसे हमें पता लग पाए। अभी हम लोग को क्लैरिटी उतनी नहीं मिली कि इस मूवी में क्या होने वाला है। All right, one question. One question. आ जाओ। सबसे ज्यादा गुस्से में जो प्राणी मुझे दिख रहा है, मेरे ऊपर मत उतारे गुस्से, तेरे टी शर्ट के डोले पे दिख रहे हैं मुझे। तू संजीव कुमार जी बन जा, हाथ पीछे कर। I have only one question. बंसल साहब एक क्वेश्चन है। So I have only one question. If you knew that it will be a controversial banner, matlab a name which will be causing a lot of controversy, you have projected a story, I can believe on the story. I'm not questioning any religion or anything, but I'm asking why you chose that name exactly. You could have gone for a million of names. You could have told the whole story, everything, but just because of that name, you are creating a story, you can cause violence in it. That is really wrong. So the only question is कि नाम अगर आप नाम सही रखते
उसके बाद चाहे मर्जी आप जो दिखाते वो एक क्लैरिटी हमें मिल जाती, बट नाम सिर्फ ये कहना यहाँ के यूथ का है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि हम सबसे समझदार हमारा यूथ है, तो वो बोल रहे हैं कि सिर्फ आपको नाम ये नहीं रखना चाहिए था, यू कुड हैव चोजन अ डिफरेंट नेम। ऐसा है कि इस मूवी को लेकर हम सेंसर बोर्ड के पास गए, सेंसर बोर्ड की स्क्रीनिंग कमेटी ने इस मूवी को देखा, उसका नाम ही प्रूव किया। अगर इस नाम से सेंसर बोर्ड को प्रॉब्लम होती तो सेंसर बोर्ड को उसी दिन नाम चेंज कर देना चाहिए था। हमारी एक सेंसर बोर्ड एक जिम्मेदार संस्था है, सेंसर बोर्ड एक जिम्मेदार संस्था है, अगर उसने नाम प्रूव किया है कुछ सोच के किया होगा। मैं आप सब यूथ से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप मूवी को देखिए, देखने के बाद अगर कोई बवाल होता है फिर आप बवाल कीजिए, ऐसा नहीं है। सेंसर बोर्ड एक जिम्मेदार संस्था है, अगर सेंसर बोर्ड ने इस मूवी का नाम भी पास किया है, अगर मूवी भी पास की है, कुछ सोच के की होगी। जो लोग इस मूवी में बवाल मचा रहे हैं, और आज का यूथ, मेरे हिसाब से आज का यूथ बहुत समझदार है, उसको सब पता है, मूवी देख के ऐसा नहीं है वो रोड पे निकल जाता है। वो पुराने जमाने की बात थी जब लोग छोटे सी प्रॉब्लम के बाद रोड पे निकल आते थे। एसी तेज कराओ। चलिए साहब, दुनिया भर में गर्मी थोड़ी ज्यादा हो गई है। दुनिया भर में बड़ी बड़ी असैसिनेशन पे फिल्में बनी हैं, कैनेडी असैसिनेशन पे कई फिल्में बनी हैं, इसे भी हम देख लें, देखने के बाद फैसला करें जैसा कह रहे हैं। बिल्कुल और बिल्कुल। और अब ये ट्राइब्यूनल के पास गई है और शायद नाम बदल के आ जाए। बात तो कर लेने दो। I want to say only one thing to all of you. इन्होंने जो कहा बिल्कुल सही कहा। We should be mature as a nation, mature as an audience, and especially from youth. I expect far more open-mindedness and far more sense of understanding. It is important to know the history of our country, the history of so many events. Let us not personalize anything. It is the story of what happened in 1984. And I think if you want to see it in that way, you will be more enriched by it. So our voice should be for freedom of speech, freedom of a thought, freedom of expression. Let's not put anything down. Thank you very much. All right, the final session of the evening. और मैं कहना चाहूंगा 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। एंड टू टेक यू थ्रू दिस सेशन वी हैव अंजना कश्यप, और जिनकी बात हो रही है उनके बारे में थोड़ा सा वर्णन होगा। जब बात किरण खेर की हो तो शब्द कम पड़ जाते हैं, गाने ही सही बैठते हैं। नाउ कॉल अपॉन स्टेज किरण खेर टू जॉइन अस। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर बस कर लो यार। Isn't this overwhelming? क्या यहाँ पर आज कोई जवान लड़कियां नहीं आई कि आप सारी सीटियां मेरे पे वेस्ट कर रहे हैं? What is this? क्या बोला? Thank you very much. It's kind of you. वाह क्या बात है। लड़कियां भी बोल रही हैं 14वीं का चांद। Thank you so much. Thank you. Isn't this overwhelming? I think it's wonderful. ये सारे जो चंडीगढ़ के बच्चे मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मुझे पता है। इसीलिए इन्होंने मुझे 70,000 वोट से जिताकर संसद में भेजा। Thank you so much, kids. Thank you. Seeing the audience here, we'll have questions from you also. See? Okay. ये बात कर लें, फिर उसके बाद आपसे बात करूं।
So, seeing the audience here, we want to talk about you portraying women in your cinema, through your cinema. You've done some amazing work, and your body of work is always appreciated by people and kids here. But जो माँ को आपने represent किया अपनी फिल्मों में, माँ दा लाडला, ये देखिए. But my all-time favorite is Devdas. Devdas? Veer Zara. Yes, 1984 Punjab is the mother closest to my heart. She is the woman of the soil, looking in search of her son and in search of peace and giving universal love to everybody, whether they are the oppressors or the oppressed. So I like her very much. We'll go back to that, but just before this, we had this session, and you said that on the very point that there should be freedom to art and expression and everything. You said these youth should be allowed to see that film, but it's your INB ministry which has banned the film. I know, but I can disagree. You know, I don't think any film should be banned. I think it should be certified but not banned. I think we should mature, and I'm sure the INB ministry has a point of view, and they must have taken a considered view. This is my view as an actor and my view as a citizen, that we should now start certifying films and making sure that we implement the certification. What happens if you certify a film for only above 15 or above 13 or above 18? The cinema hall owners do not implement that certification the way they should. They allow people to go in the greed of selling tickets. If that can be done and certification is allowed as it's allowed anywhere in the world, I think we would have matured as an audience and as a government. But the entire controversy here is not about age or age-related issues. It's about religious unity and whether this could lead to some kind of problem in the society, because you're calling the assassins of Indira Gandhi Qaum de Heere. So they want to change the title, is it? नाम बदल दो, इसमें क्या film release कर लो if there's an objection to the title. हाँ जी? What? सब एक साथ बोलते समझ. तो अब change कर दो title. कौम के हीरे. This is very important. As a BJP parliamentarian, Kiran Kher feels don't make that into some breaking news on headlines today. Just because I'm here, don't get me into trouble with the government, please. But it's my very personal view that if the problem is with the title, then if it's a good film, people should see it and maybe they can change the title. If it's only the title, that's a problem. It's an easy way out, is what I mean. Okay, so we leave it at that. अब माँ वाले इशू पे फिर से जाते हैं. Thank you very much. Don't land me into trouble with the rest of it. ऐसा ना हो, I regret it and say नहीं. मैं सोच रही हूँ इसको आगे ले भी जाऊँ. How do I go about it? They started, these young boys here were saying old is gold, and I mean giving the girls here a run for their money. Hi, that's very kind of you. I don't think that's really true. I can see such lovely young faces here. And जो जवानी में बात है वो मेरी उम्र में कहाँ रह जाती है. आप लोगों में बहुत. अच्छा, तो इस audience से we can pick maybe some boy and you can just advise him like a mom. Can we do that? उसके चेहरे से, शक्ल से कुछ आपको लगे उसकी जिंदगी में क्या कर रहा है वो. Sure. Because what he says really matters. How about that? कौन आप में से कौन खड़ा होना चाहता है? सारे मत हो जाना प्लीज. She's really going to advise you. Okay, stand up. Okay, here. Can you get a mic? Can you get a mic? I suddenly feel I'm on Comedy Nights with Kapil. Why do I feel that? किसको करना है भाई? हाँ. Up. He's against the light. I can hardly see him. You could come on stage. You could come on stage. बताओ अपना नाम बताओ, क्या कर रहे हो जीवन में, क्या बनना चाहते हो? What do you want to do? Myself, Divya Pratap Singh Rathod, and myself, Divya Pratap Singh Rathod. Divya Pratap Singh Rathod. Yeah, I am from Jaipur. I'm studying in St. Xavier's College, Jaipur, and I'm doing BCom.
And I want to pursue MBA as my career for future. MBA. Yeah. Well, that's wonderful. What else do you do? Do you do help any kind of Yeah, I have been association? working with an NGO named Boond, which was initiation of seniors. And what does Boond do? We work for unprivileged children. For underprivileged children. Yeah. How much work do you, how many hours do you put in a month or a year? We do events often, like in a month, event in a month. You do an event for them? Yeah. And you raise money for them, is it? No, the fundraisers are different and the educational events are different. So this is for education. For Yeah. That's very good. मैं इसको क्या सिखाऊं? ये तो he is very good at everything. बहुत सियाना है. ये तो पढ़ाई भी अच्छी कर रहा है. पढ़ाई भी अच्छी कर रहे हैं और he's got social responsibility भी समझ रहे हैं. And you're also it's so important, I feel, you know. We talk about freedom. It's wonderful. But somehow I've realized today's youth, the only freedom they seem to want is to be allowed to party all night, sleep all night, get up late in the morning in the day. But that, I'm sorry, I don't endorse it. Huh? Please party all you want. I mean, I can understand your desire to party. We've all loved it during our times. But I think it comes with responsibility. So you have to be responsible for yourselves, your future, and that you somehow contribute to the growth of the other kids in this country. So I think it's a great job you're doing. Thank you so much. Because you talked about parties and late night dinners and everything. Which side is the camera today? It's fine. It's fine, na? Yeah. The angle is perfect, yeah. The dimple is showing. She always keeps the camera on the side so that the dimple shows. And I always tell you that it's not because of the No, dimple. it's the the third face time profile. I've told you it's a better Face profile. better profile. But coming back to that very serious topic, Punjab and Haryana is witnessing a huge crisis in the sense that the young is going towards drugs. What would you say? What is it? The kind of emotional backing they need from the family is not coming. How do they tackle with the stress of life, career options or lack of it? How do they go about it? See, there are two sides to this. One is the fact that drug mafia has infiltrated at school level and many kids have got hooked onto this. The second is that this is a very delicate phase of life. It is a time when your energies are so high and at the same time you have so many insecurities within you. Your self-esteem is just developing. So if you do not give the youth of today a direction in which to expend their energies, whether it's sports or it's other activities, which makes them feel important. It's this desire to be important that drives people to terrorism, because they are suddenly made to feel that we are doing something for our kind and our, you know, हम अपने लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं, which is misguided. The same way I think people, when they don't have very much to do, then they just hang out and they get hooked onto all this with peers doing it, other people doing it. So I think they need to have some kind of channelizing. इतनी energy होती है कि इनको इतनी ऐसी कोई extra curricular activities, कोई ऐसी चीजें इनकी इतनी ज़्यादा, what should I say, regular basis में होनी चाहिए जिसकी टाइम में प्रतिबद्ध हो, टाइमिंग, ताकि ये थक टूट कर रात को सो जाएं और उनको ये सब ना हो. It is very important for you to expend that energy in a positive way. So I think people need to do, they themselves won't do it. Parents need to do it from a very young age. जब से ये छोटे हैं, तब से excellence in some form, in something besides just studies is important for them. Energy को channelize करना. You've played the mother to almost most of these actors, Shah Rukh Khan to Aishwarya Rai to everybody. But among the men, who's your favorite? Oh, they're all very sweet. They're my pals actually, because we're somewhere in between our ages, you know. कोई 10 साल छोटा है, तो कोई just barely 12 साल छोटा है. So it is like hardly a margin. It's hardly in between है Anupam and me, in, you know, generations gave. So I think we are friends. So we were friends even before I played their moms. So that gets carried on. They're all very sweet. Shah Rukh is great fun. He's so much energy and he's full of, you like him. Obviously, some guys who like him very. Akshay is great fun too. I mean, I've been done movies with him. Abhishek is a darling. He's my real beta. He's so sweet. बहुत अच्छा है. And so I've never acted with Salman in a film. Never acted with him. Anupam has. I haven't. John's a nice guy, very nice, very sweet, but I'm not so free or friendly with him as I am with Abhishek ke saath. We have family ties.
no, because of Dostana nahi, I knew Abhishek from much before. So, जब से वो इतना सा था, तब से जानती. Diljit is very sweet, very hardworking, very focused, very nice, very nice. I loved working with him. Who else have I? Aishwarya, of course, again is a wonderful girl to work with. Katrina is a wonderful girl to work with. Salman's a nice guy, but I've never worked with him. So Sunny Deol is somebody who's my age actually. So it was quite embarrassing. It was quite embarrassing for us even for him to suddenly find me playing his mom in a film. And then I played it in Apne also. And he insists he wants to play the actor in every film. चलो अच्छी बात है. Why not? Why not? हाँ? अनुपम खेर की माँ का रोल अभी तक मैंने किया नहीं भाई. इतना मैं आपको बता दूं. Mada Ladla बिगड़ गया. Can you just do a little bit of that thing for us? I wish I could do it, but you know I'm so bad at singing. I think I've told you this before. जब मेरा बेटा छोटा सा था, 2 साल का भी नहीं था, तो the cot had been enlarged from a bassinet, and he was standing in it, and he was lying down. I was trying to put him to sleep, and I tried to sing a lori to him, and it's a horror struck. He got up from his cot and stood, "Mama, Naga, Naga." He was so frightened. I'm really so bad at it. Please, Miri, it'll be a punishment for me. But there's one thing that no one can do better than you. The kind of intense acting you did in Devdas, or one of those dialogues for us. I can't remember the dialogue. I've never done this dialogue bazi thing, you know. I really can't remember them. I mean, if I could, I would never be able to say them with the kind of emotional intensity that I did on screen. To me, that's a job that I do. It's not a persona that I carry in real life. To be an actor. Most actors are very happy to, you know. I don't look at them as fans. I look at them as people, kids from India, from my city, or from outside visiting. People I relate to, people whose problems I have to solve. I'm not in the actor mode. Okay, I'll give her very easy because she doesn't remember the dialogues. I'll give her easy little situations that probably I remember you a can do. Bengali dialogue. Okay, but nobody will understand it from Bari. No, but we understand your emotions. No, there's no emotions in it. I just remember it. I'm so thrilled I remember the whole script in Bengali. It's উই আর কি মাছ টাছগুলো রয়েছে পায়েসটা রাখবো ভেবেছিলাম দীপঙ্কর বাবু এত ভালো লেগে গেল চেটেপুটে পুরোটা খেয়ে নিলেন. You'll never be able to do that. So, if you have to scold your boy, how would you scold him? My son. हाँ. आप कहाँ इतने बड़े लड़कों को आप स्कोल्ड कर सकते हैं? You'll be thankful if they don't scold you back, you know. It's such a आप खुद बच रहे हैं उनकी स्कोल्डिंग से, you know, Mom, I know you, this is great. Mom, you always do this. I mean, you know, so suddenly the mother's in the dark. This is, you know, the problem. You bring your kids up thinking we're going to be friends with them. It's all wrong. You shouldn't bring them up as friends. You should have a bit of a distance so that they listen to you. ये बहुत मुसीबत है, and Kaveri agrees with me 100%. तो उनको scold नहीं आप कर सकते, बड़ी carefully सोच कर you have to say, बेटा, don't you think you're putting on a little weight? You know, it's like this. And he growls at you and he says, no. So then you back off. That's why I never sit with you. Okay. So it's like that. Again, back to the mom scene because we want this youth to talk to you. Some of you had questions. Okay, we'll start with a few questions. Oh my God. अच्छा बताती हूँ. कुछ भी हो सकता है. चंडीगढ़ से चुनाव जीत गए. चंडीगढ़ से चुनाव लड़ना है, कुछ भी हो सकता है. Because 3 साल पहले I had been told, why don't you think about Chandigarh? And I said, I don't want to fight an election. I'm not into electoral politics. I'm not a politician. So I really don't know how to handle the politics of it. So I said, I don't want to do that. And finally I gave these hints to everybody and said that, look, I'm not interested. I was very relieved, and 15th dawned, and the news channels were saying that tickets were being announced. Parliamentary board meeting is going on, and you know how exciting news channels make even the most boring meeting sound. Ab ye ho raha hai, ye andar ja rahe hain, wo bahar. I was having chai, sitting on my bed. I just finished India's Got Talent, and I thought to myself, "Hai, main aaram se dekhoongi, how exciting." And I thought to myself, suddenly I thought, I hope nobody calls me at this last minute. And I said, no, now nobody will. And while I was saying this,
Suddenly I looked like this and the phone was ringing and it said private number. And my heart sank. And I picked it up and it was one of our leaders and one of the main leaders of the parliamentary board, and he said, Kiranji, can we still consider you for Chandigarh? Who was that? I said, no, this is not Who fair. was that? I can't do that. Okay. I said, this is not fair. This is not fair. You can't do that because I'm not prepared and I'm not even thinking about it. He said, so slow, take your time. I said, ठीक है, अभी 2 बज रहे हैं, 4 बजे तक बता देना. I said, take your time, बस 2 घंटे. And then about 6, 7 of them called. And it became, suddenly I felt it was very peevish of me to say no. And if the party wanted it so much, I should try. I've never fought even a monitor's election in my life, in a class monitor. I've never stood up for any competition except maybe essay writing or something which involved something like that. No beauty contests or anything. And here I was in Chandigarh, and the rest is history, as they say, but the making of that history was like World War II. So it was so uphill, the whole thing. But God was kind. He carried me through it. So I think that was kuch bhi ho sakta. And today, sometimes I find it difficult to believe that I represent Chandigarh in the parliament. I always thought one day I might be in the Rajya Sabha or something. I never really thought about the responsibilities of a constituency which are 24/7. If you really want to do it, it's 24/7. If you can go away to Bombay and sit, but I haven't gone. I'm here. I've shifted base. There's rumor that you're ICCR member, but you might become the head. How true is that? It's just a rumor. It's obviously not very true. It's doing rounds in the. I'm hearing it from friends who sent me an SMS. इस पेपर में ये निकला, इसमें वो निकला. But Congratulations तो नहीं नहीं, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा. Please आप ऐसा ना करें. मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा. Yeah. आवाज नहीं आ रही. हेलो मैम, 2 क्वेश्चन है. पहला कि आपकी लव मैरिज हुई थी कि अरेंज? अनुपम कश्मीरी ब्राह्मण है, मैं जाट सिख हूँ. अरेंज मैरिज थोड़ी डिफिकल्ट है. मैम, एंड सेकंड क्वेश्चन इज, अभी कुछ दिन पहले एक अनुपम सर का जो शो आ रहा है उस पे सर ने कहा था कि काफी जल्दी उनके बाल झड़ गए थे. हाँ, तो पसंद कैसे किया आपने? पसंद कैसे किया? मुझसे शादी से पहले ही झड़ गए थे. एक एक्टर थे वेस्ट में जो मेरे बड़े फेवरेट एक्टर थे, उनका नाम था यूल ब्रेना, and he was just so good looking even though he was all bald, and he was played the bad man, and he was far more attractive than the heroes he worked with. So I think I don't think hair has anything to do with it. I think Anupam was very attractive even without hair. Okay, I also have a question. Good evening, ma'am. Good evening. अच्छा, सबसे ज्यादा पॉलिटिकल नेता किसको पसंद? नरेंद्र मोदी जी को. हाँ, क्यों? ये तो जग जाहिर है. आप सिर्फ उनका काम देख लीजिए गुजरात में इतने साल से. I like him. He's a no-nonsense man. He just wants to get the work done, get on with it, and let's move on. वो मुझे अच्छा लगता है. फजूल की तामझाम नहीं है. और बाकी बहुत सारी चीजें सियासत में स्पीचेस वगैरह देनी पड़ती हैं, लेकिन जो इनकी अभी इंडिपेंडेंस डे की स्पीच मुझे बहुत अच्छी लगी. जिस तरह वो बच्चों में चले गए, बिना, सबसे ज्यादा थ्रेटेंड नेता रहे हैं, सबसे ज्यादा सिक्योरिटी है, फिर भी बिना बुलेट प्रूफ कांच के उन्होंने वो स्पीच दी. तो उनकी बहुत सारी बातें, उनका काम करने का तरीका, जो वो डिलीवर करते हैं, वो चीजें बहुत पसंद. लकी. अच्छा, I don't have actually a question. एक एडवाइस चाहिए मुझे. जैसा आपने कहा कुछ भी हो सकता है, मेरे साथ भी कुछ भी हुआ. somehow I managed to get a girlfriend और somehow मेरी शादी हो जाएगी. तो अब ये एक आपका डायलॉग था, जैसे आपने बोला मुझे डायलॉग याद नहीं है, तो एक डायलॉग मुझे जो याद आता है, जो बहुत बार सुना है, वीर ज़ारा का डायलॉग है, जो मेरी गर्लफ्रेंड भी बोलती है बहुत बार कि तुम्हारे प्यार में मेरे प्यार में बहुत फर्क है. एंड यू सेड कि एक औरत के प्यार में और एक मर्द के प्यार में बहुत फर्क होता है. कब बोला मैंने? वीर ज़ारा के एक डायलॉग था. तो मुझे जो फर्क लगा वो ये लगता है कि जब एक लड़की प्यार, बेबी शोना, ये वो, तो वो एक ये डिफरेंस तो डेफिनेटली है. उसके अलावा क्या डिफरेंस है एक औरत के प्यार में और एक मर्द के प्यार में? ये औरत और मर्द पे डिपेंड करता है. ये मैं नहीं सोची इसको आप जनरलाइज कर सकते हैं कि बहुत मर्द भी बहुत वफादार होकर इश्क कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं. और बहुत सारी औरतें भी जरूरी नहीं कि बहुत वफादार रहें. तो आजकल के ज़माने में जो फ्रीडम है, लेकिन लड़कियों का क्या है,
लड़कियों का क्या है, वो इमोशनली अटैच बहुत जल्दी हो जाते हैं. They get very attached. So and then they think of marriage immediately. ज्यादातर देखा गया है कि लड़के एकदम शादी के बारे में नहीं सोचते, थोड़ा सा संकोच करते हैं. तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा फर्क है. और लड़कियां बहुत समय स्पेंड करना चाहती हैं अपने हस्बैंड के साथ. आदमी पहले तो बड़ा एक्साइटेड रहता है 1-2 साल, उसके बाद वो अपने काम में इतना मसरूफ हो जाता है. तो अगर लड़की का खुद का काम इतना एक्साइटिंग ना हो या वो इतनी ज्यादा करियर ड्रिवन ना हो, तो वो अकेलेपन का एहसास उसमें आ जाता है. घर को संभालने की, बच्चों को बड़ा करने की जो सारी उस पर जिम्मेदारियां आ जाती हैं, उससे भी बहुत सारी चीजों में फर्क पड़ जाता है. सो आई थिंक इन दैट सेंस मैंने अपनी माँ से नहीं पूछा, आपसे पूछा, बिल्कुल सेम एडवाइस मुझे मिली है. थैंक यू सो मच. जी नहीं, एक सेकंड प्लीज, माइक है आपके पास, बोलिए. प्लीज कीप योर क्वेश्चंस शॉर्ट सो दैट वी कैन टेक मैक्सिमम क्वेश्चन. माइक इज नॉट वर्क. उसको देखो नीचे होगा उसका स्विच कहीं. हेलो, माई वर्क. हाँ बेटा आप बोलो. मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं अभी पंजाब में कुछ दिन पहले नया आया था, तो मैम जब ये राज्यसभा इलेक्शन चल रहे थे, तो यहीं पे जलंधर के पास में एक चौक पड़ता है, वहाँ पे नशाखोरी ना होने के कारण, नशाखोरी ना होने के कारण, क्योंकि इलेक्शन के प्रति पुलिस की ज्यादा चेकिंग चली बॉर्डर वगैरह पे, तो मैम ड्रग्स वगैरह नहीं आ पा रहे थे. हरियाणा से हैं? नहीं मैम, यूपी से हूँ. यूपी से हो? तो मैम ड्रग्स यूपी हरियाणा के बॉर्डर से हो? यस मैम, सहारनपुर से हूँ. तो मैम वो ड्रग्स जैसे नहीं यहाँ पे, तो मैम वहाँ पे जाम लगा दिया था जो मैम ड्रग्स माफिया थे. तो मैम उनके खिलाफ ना तो कोई खास एक्शन लिया गया, ना उनके गवर्नमेंट ने कोई कदम उठाया. तो मैम आप इसके लिए क्या कदम उठाना चाहोगे? जी, इसके लिए मैं कोई कदम उठा नहीं सकती. मैम आप भी एमपी हो ना? क्योंकि मैं तो चंडीगढ़ की एमपी हूँ, आप तो पंजाब की बात कर रहे हैं. पंजाब, चंडीगढ़ पंजाब में नहीं है बेटा, वो तो अकाली दल का की यस मैम, अकालीज एंड बीजेपी का है. लेकिन मैं प्रभारी नहीं हूँ उस स्टेट की, ना ही मैं उस स्टेट में चीफ मिनिस्टर लगी हुई हूँ, ना कोई मिनिस्टर हूँ. मैं चंडीगढ़ की एमपी. चंडीगढ़ की बात हो तो आई कैन टेक इट अप. किसी और स्टेट में मैं टांग अड़ाऊंगी तो वो बोलेंगे हम अपना काम कर सकते हैं. जी बिल्कुल, अगर मैं होती तो मैं एक्शन लेता. गुड इवनिंग मैम. मैम सबसे पहली बात कि मैम आज आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो. मैम मेरा क्वेश्चन नहीं है, आई जस्ट नीड एन एडवाइस. मेरा एक फ्रेंड है जो कि इस थिएटर लाइन से जुड़ा हुआ है और 4-5 साल से काफी अच्छा काम कर रहा है इसमें, और ऑन सेकंड हैंड वो बीटेक भी कर रहा है, और एट प्रेजेंट वो बीटेक के फाइनल ईयर में है. अच्छा. एक तरफ मैम उसकी जॉब है और उसकी फैमिली है जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है. दूसरी तरफ उसका पैशन है जो कि उसको बोलता है कि बॉम्बे जाओ और मेहनत कर. आप उस जगह होते तो आप क्या चुने? कहाँ पर है वो? वो यहाँ खड़ा है. हाँ, मुझे लग ही रहा था. आप चंडीगढ़ के हैं? नो मैम, मैं मेरा होम टाउन बनारस है. मैं एलपीयू जालंधर में बीटेक कर रहा हूँ. बीटेक कर रहे हैं? कितने साल रह गए बीटेक के? लास्ट ईयर है मैम. अब इसके बाद सीधे बीटेक अपना कंप्लीट करें, उसके बाद आप अपने आप को एक सीमित समय दें और बहुत क्या मैं कहूँगी कि बहुत फोकस के साथ कि कहाँ पर आपको काम करना है. बड़े बड़े सपने लेकर बॉम्बे ना जाएं कि मैं हीरो बन जाऊंगा और मैं नेक्स्ट शाहरुख खान बनूंगा. अब बॉम्बे में बहुत सारे एवेन्यूज खुले हैं, तो आपको टीवी में अच्छा काम मिलता है तो आप जरूर करें. आजकल टीवी स्टार फिल्म स्टार्स के बराबर गिने जाते हैं और बहुत पॉपुलर हैं और पैसे भी उन्हें बहुत अच्छे मिलते हैं. अगर आपको 1-1.5 साल में आपको लगता है आपका कुछ बन रहा है तो ठीक है, नहीं तो वापस आकर नौकरी करें. दैट्स माय. थैंक यू मैम. कुछ लड़कियों के सवाल लेते हैं, कुछ लड़कियां यहाँ पर. हाँ प्लीज. First of all, ma'am, there's no doubt that you're a wonderful actress, and also your win from Chandigarh have proved that you are also in politics and social. So I just wanted to ask, your movie is coming, Khoobsurat, and you definitely have a very hectic schedule. So how do you manage your acting as well as your responsibilities in the parliament? That's all. And managing looking so beautiful all day. Definitely. I think this has only happened because I've lost weight, so मैं किसी भी हालत में अब ठीक लग रही हूँ. I don't think अब ऐसे otherwise मैं beautiful लगती हूँ. Every girl needs tips on that. I'll tell what you. made you lose your weight? Oh, no, I lost weight because of the election to start with, then I became vegetarian. So I think that helped me. My thyroid was imbalanced. It got balanced due to naturopathy, and I'm looking the way I used to look earlier. I wanted to just tell you that both are very demanding professions. I have never done a lot of films.
मैं हमेशा गिना चुना काम करती रही हूँ। पिछले 3 साल में मैंने एक भी फिल्म नहीं करी थी। फिर सडनली आई शॉट फॉर पंजाब 1984, आई शॉट फॉर खूबसूरत, तो ऐसे लगा कि एंड फॉर टोटल स्यापा, तो ऐसे लगा कि काफ़ी फिल्में हैं। पिछले महीने मैंने 3 फिल्में मना कर दी, नॉट बिकॉज कि मैं पॉलिटिक्स में हूँ, क्योंकि मुझे वो फिल्में कुछ खास लगी नहीं टू बी अ पार्ट ऑफ। So I have to make this choice. My first choice would be my responsibility to my constituency, because that is something they have voted for. So I can't let them down. And अगर मेरे को India's Got Talent करना होगा next season, वो तो मैं जरूर करूँगी। उसमें सिर्फ that is incomplete without that you, is 21 days of shooting in 4 months, and the dates can be managed. They're in chunks of 3 days, then 4 days, like that. So I can manage that, you know. That I would do. But otherwise, it's an impossibility, really, unless it's a great film like 1984 Punjab, for which I might take a month off. Okay, now last 2 questions, ma'am, please. We're through with your questions. Thank you. Last 2 questions, yeah. Gentleman here in black. Ma'am, first of all, I would like to say that you are one of the very few Indians who have managed to be accepted globally. And one example is that you are the only Indian who is currently featuring on Zindagi, that is a Pakistani channel. How does it make you feel being the only Indian who is loved equally by the neighboring country? It makes me feel wonderful. I did Khamosh Pani in Pakistan. It was directed by Sabiha Sumar. She's a Pakistani. Her husband is a Sri Lankan. The entire unit was European. And the film got Best Film in Locarno. I got Best Actress in Locarno. I got 3 Best Actress International Awards for that. पाकिस्तान में लोग मुझे वैसे ही बहुत प्यार करते हैं। मेरा एक शो आता था पुरुष क्षेत्र, which was very popular. It dealt with issues of gender bias and various other things. And मुझे लगता है कि जिंदगी जो चैनल है वो जी की है. It belongs to India, but they are buying software from Pakistan, and I'm introducing that. So I feel very happy because my mother came from Sialkot, and हमारे पाकिस्तान के साथ लोगों के बहुत रिश्ते हैं आपस में लोगों के, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है. हम लोग कल्चरली एक हैं, सिर्फ ये सीमाएं बन गई हैं और बहुत सारा खून खराबा हो गया, विच इज़ वेरी सैड. अदरवाइज लोग दिलों से वहाँ हमें बहुत इज्जत और प्यार करते हैं. जब मैं वहाँ गई थी शूटिंग के लिए, उन्होंने मेरी इतनी इज्जत करी, इतना प्यार, और हर दुकानदार पैसे लेने को मना करता था. आई यूज्ड टू से ये क्या कर रहे हैं, वैसा ना करें. नहीं जी, आप तो इतने बड़े मुल्क से आती. सो दे हैव दिस फीलिंग दैट इंडिया इज सो बिग एंड दे मिस द टाइज विद. जब अब्रॉड लोग मिलते हैं, दे से थिंग्स लाइक वी आर फ्रॉम पंजाब, दे डोंट से वी आर फ्रॉम पाकिस्तान. सो वो फीलिंग ऑफ पंजाब का जो फीलिंग है ना, वो कभी नहीं जाती. Ma'am, excuse me, please. Ma'am, may I please come over there and touch your feet once? Ma'am, please. बेटा क्यों टाइम वेस्ट कर रहा? अच्छा. Ma'am. क्या आपने क्या कहा? Ma'am, may I come over there and touch your feet, please? Okay, please do. Yeah, that's the final question we'll take. जीतते रहो, खुश रहो बेटा, जीतते रहो, खुश. Good evening, ma'am. Okay, the final question here. Okay. First of all, you're looking very beautiful in this outfit. After a I love long this day color at work. actually. Ma'am, my question to you is कि काफी टाइम से ये ट्रेंड चला आ रहा है कि एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस पॉलिटिक्स में आ रहे हैं. And what according to you helps them कि जिससे वोट्स आए, popularity or their acting skills? No, how can it be their acting skills? It would have to be their popularity. But I don't think that it helps everybody in the same way. It helps you maybe the first time you get elected, but I think the second time round, you have to have delivered in those 5 years for people like Mr. Vinod Khanna. This is now going to be he's the third time he's in parliament. And many people must have seen that he's done good work, because I believe he's very active in his constituency. That's very important. Whereas many other actors only fought one time elections and the party never gave them the ticket again. So I think it depends on, a first time round it's that you're a star, maybe many people get attracted. But I don't think Chandigarh that really works much. I think they also see, with my case, I feel they see me as a person they can relate to. Especially because of India's Got Talent. Everybody felt that I was somebody who was real, who was not sort of a touch me not kind of a star. And I think my campaign was also all out there.
amongst the people, hugging them, holding them. So it wasn't a starry campaign in which I wouldn't get out of the car or something. I was among the people, whether they were the colonies or the villages or the cities. So I think in that sense, Chandigarh is a very educated constituency. So you can't really just get any film star here. And चंडीगढ़ के लिए कोई पहला काम जो अब आप सांसद बनने के बाद whatever after well, the first thing I did was get the medical seats raised from 50 to 100. Okay. That was the first thing I did. And I think that was wonderful for Chandigarh. Really. Thank you so much. It was lovely having you here. Thank you. Thank you very much. May I request Reena Dhaka to please come and give the token of appreciation to Kiran Kherji. और जरा देखो Reena, do you think there is something you can advise? कुछ भी मुझे लग नहीं रहा कोई गुंजाइश है यहाँ पे. What do you have to say about her? Like the way she's looking. I think she's beautiful. Is it on? Kiran, you look stunning. I'm very fortunate. I got to meet you, and I wish you all the luck. And I hope Chandigarh can have you for way longer than your term this season. I hope you're here with them forever. Thank you. Thank you. I hope so too. Maybe then they can let me chill a bit for maybe a day or two off I can get. And they finally believe I'm here forever. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया. Please. All right. Now we have एक म्यूजिकल अंजाम देना चाहते हैं अपने इस इवेंट को, इंडिया टुडे माइंड रॉक्स यूथ समिट 2014, एंड वी हैव अ बैंड परफॉर्मेंस. अच्छा, इंडियाज गॉट टैलेंट को मैम जज करती हैं. फटाफट से एक बंदा कोई अगर आना चाहता है, बाय द टाइम दे आर सेटिंग अप, एक बंदा या बंदी जो अपना टैलेंट दिखाना चाहता है, जो सबसे पहले चढ़ जाएगा स्टेज पे वही करेगा. देखो, फर्स्ट कम फर्स्ट. सो फटाफट से आ जाओ. इधर से आ जाइए प्लीज. ऑल राइट, किरण मैम, देयर इज दिस गर्ल हु इज गोना शोकेस हर टैलेंट. क्या करने वाली हैं आप? I'm going to sing a song. शी इज गोना सिंग अ सॉन्ग. किरण मैम, शी इज गोना सिंग अ सॉन्ग और आपको जज करना है. वही इंडियाज गॉट टैलेंट वाला ना, तो चंडीगढ़ गॉट टैलेंट कर देते हैं. चंडीगढ़ गॉट टैलेंट कर देते हैं ना हम लोग. आजा पिया तो है प्यार दूं, गोरी बैया तो पे वार दूं, किस लिए तू इतना उदास, सूखे सूखे होंठ अखियों में प्यास, किस लिए हो. आजा पिया तो है प्यार दूं, हो गोरी भैया तो प्यार दूं. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. अभी शुरू होने वाले यहाँ पे बैंड परफॉर्मेंस. अच्छा, आप भी आइए आइए आइए. ग्लैमर आइए आइए. आप क्या करने वाली हैं? मैं एक वेस्टर्न सॉन्ग परफॉर्म करना चाहूंगी. डांस परफॉर्म करेंगी? वेस्टर्न सॉन्ग गाना चाहूंगी. डांस भी कर लो यार. कोई डांस करेगा? जो ये गाएंगे उस पे डांस करने वाला है कोई? और सीटों पे ही कर लेना आपने. I hope you will all like. गाना कौन सा पहले बता दो. Shakira and Rihanna का Can't Remember to Forget You. Where do you get that accent from? As the note on my bedpost, said not to repeat yesterday mistakes. What I tend to do when it comes to you, I see only the goods, selective memories. You make me feel right. You make me feel I never felt somebody so stupid. Oh, here we go. You bounce me now. You bounce me. So where you go, I'll follow. Oh, I can't remember to forget you. And when you look at me, her in my memories is us kissing in the moonlight. Oh.
Oh, I can't remember to forget you. Thank you. मुझे सिर्फ एक ही वर्ड समझ आया। इसमें एक वर्ड आया था स्टूपिड, मुझे वही समझ आया बस। आइए। आप क्या करने वाली मैडम? आप भी सिंगिंग रियलिटी शो बन गया है तो आ जाओ। कौन सा गाना गाने वाले हैं आप? आजमा लक आजमा। आइए आप। आजमा लक आजमा वक्त आजमा अपनी किस्मत की बाजी आजमा, सुबह नहीं आजमा ख्वाब सारे आजमा अपनी किस्मत की बाजी आजमा। और जब सारे दिखा रहे तो मैंने कहा मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी दिखा देता हूं। तो मेरे को ना बड़ी जोर से कुछ करना है। किरण मैम, आप मेरी बात ही नहीं सुन रही हो। किरण मैम, किरण जी, लक्की, माइंड रॉक्स, लाइटिंग, खूबसूरती इतनी ज्यादा, मैं कहूं रिन से भी इतनी खूबसूरती नहीं आती कपड़ों पे, जितनी खूबसूरती आपके ये कपड़े पहनने से इन कपड़ों पे आ रही है। लकी, किरण जी बाय बाय। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम। एंड आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी टू प्लीज सेटल डाउन, क्योंकि वी आर अबाउट टू start off with this band performance by Tricolin the Easta. Tricolin the Easta. Tricolin the Easta. थोड़ा सा एक्सेंट आ गया। थोड़े हिंदी गाने मिलेंगे ना हमको, मतलब मुझे हिंदी समझ आते, हिंदी नहीं मिलेंगे? एक आधा हिंदी भी सुना देना, एक आधा पंजाबी हो जाए तो और मजा आ जाएगा। Check. पंजाबी नहीं आंदी? Check. On the monitors as well. Hello, check. Hello, reverb. Hello, check. Hello, check, reverb. Hello, check. ट्रैवल थोड़ा। यार एक बार वैसे चेक करोगे जो रोड पे जो बैंड चलते हैं वैसे चेक करोगे एक बार? हाले ले। Excuse me. On the guitars, acoustic. Come in again. Yeah, that's right. Thank you. No, acoustic is not working here. Check acoustic guitar. Sound of acoustic guitar. Switch it on, please.
Good evening, everyone. How are we doing? I can't hear you. So we're doing okay, huh? Just for fun, huh? Louder. How are we doing? I can't hear you. That's right. I think this side of people are more energetic than this side. So, guys, we're traveling the east up from Himalayas. And we've come up with this wonderful music. We call it folk rock, progressive folk rock. And we play our original numbers and we write on the social issues. So you can take a note of that. This song is dedicated to the innocent people of Malana in district Kullu, Himachal Pradesh. Yep. And they're pointed out to be the drug addicts, the drug sellers, but they're not. And this goes out.
प्यारे पर आशरा. Thank you so much. Thank you so much, guys. I would like to explain this song to you guys. Please don't mind the aggression on the music. There's no story behind the aggression, this music, but some people, there's a small village called Malana in district Kulu, and it's people go there for doping and smoking, and they bring some churros, and they become churchy, and then they blame the people from Malana. So this is the whole story behind the song. Thank you so much. Guitars. Okay guys, this next track is called Rama Re Rama. And it's again an original composition, and it's written behind all the sarcastic things that happens in the society and politics. There's no sound on the acoustic guitar. Please turn it on. We really need the sound on the acoustic guitar. The song is not possible without it. I hope you understand. Alright, let's do another song. How about a love song, guys? Do you like a love song? Okay, this little composition of our band, it's called Koraum. We released it back then. You can download it now from our SoundCloud. This one's called Koraum. It's a love song. Enjoy. हो रहा हूँ मैं तेरी प्यारी सी मुस्कान में, बस रहा हूँ मैं तेरी आंखों के जंजाल में। हो रहा हूँ मैं तेरी प्यारी सी मुस्कान में, बस रहा हूँ मैं तेरी आंखों के जंजाल में। तू है यही है मुझको यकीन, दूरी तेरी मिटती नहीं। तू है मेरी जानो का है मौसम, दिल में तेरी चाहत की सरगम। मैं तेरा दीवाना यूं ही दिल से जाना, मेरे दिल में बस गया तेरा ठिकाना। ओ जाना प्यार ये निभाना, कह रहा हूँ तुझसे
वक्त मैंने देखा उसे, चेहरे पे हर पल खुशी है। खोया था मैं जिन यादों में, जिंदगी भी अब तो नहीं है। यादों में तू, बातों में तू ही तो मुझ में बसी है। बाहों में आ यूं रास्ता, मुझको बस तेरी का शक है। तू है वही जो सपनों में थी, दिल में बसी जो तस्वीर थी। तू है मेरी जानम, का है मौसम, दिल में तेरी चाहत की सरगम। मैं तेरा दीवाना, यूं ही दिल से जाना, मेरे दिल में बस गया तेरा ठिकाना। ओ जाना प्यार ये निभाना, कह रहा हूँ तुमसे ना ये दुकाना। Not many left though. Not many people left though. But We would like to hear some more. If you'd like to give us some sound, we'd like to give you some music, some good music, better than this. The acoustic guitar is not working, sir. Please make it work. Steve Paji? The one on the console. कोई डिमांड है यहाँ पे किसी की? रिक्वेस्ट है कोई? हाँ? हाँ, can we have that? If we get the If, no, but. और यार हमें कुछ सुरों के पक्का ऐसा कुछ हमें we just want to enjoy, है ना भाई? अभिषेक अपना अकोस्टिक ले आओ यार। अभिषेक अकोस्टिक। Who said that? Anybody who would like to sing along? एक टाइम पे एक ही गाना गाएंगे ना यार वो। एक टाइम पे 3 गाने थोड़ी आएंगे। रूबरू से स्टार्ट करते हैं हम लोग। Okay, give us some moments. We gotta change the guitar. Yeah. है ना? Yeah, exactly. You got good voice, man. You should try. किन्ने लोग की सवेर दे आए बैठे ने? सवेर दे किन्ने लोग की आए बैठे ने? सवेर दे बड़े वेले हो यार, बड़े वेले हो यार तुम। मैं भी हूँ यार, मैं तो कल रात का आया हूँ। वीकेंड है, अरे वाह। चंडीगढ़ में वीकेंड में सबसे ज्यादा कहाँ जाते हो तुम? 17 सेक्टर के अलावा गेड़ी रूट लड़कियां भी जाती हैं गेड़ी रूट पे? लड़कियां जाती तभी तो लड़के जाते हैं ना। ऑन करना सर, चेक। अच्छा, पिंक सिटी से भी कुछ लोग आए ना यहाँ पे, पिंक सिटी से।
Urvashi, Urvashi, take it easy, Urvashi. कम न जैसी पतली को नहीं चाहिए फार्मेसी. मेरे संग संग हो जलिया के रंग हो जा रंगी रे, रंग रंग रंगीला रे. Alright guys, have All you set? your request now. So the first request, that I got from around here. Rubaru, yeah. I heard some Sheila Ki Jawani from the movie Rockstar. Yeah. So this next track, guys, is called Munni Badnaam Hui from the movie Bhag Milkha Bhag. कोई डांस करना चाहता है हमें मुन्नी बदनाम पे? कोई मुन्ना है? मुन्ना यहाँ पे मुन्ना कोई? And this song is dedicated to all those who suffer from some type of crisis. Thank you. चंद्र कह गए सिया से, ओ रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा. हंस चुगेगा दाना, और कौआ मोती खाएगा. Guys, this is our original composition. This song is called Rama Re Rama. It's a philosophical number. We've written this back in 2 months before. So Rama Re Rama for you guys. I need your claps, come on. Let's do it. Let's do it together. रामा रे रामा तेरा कैसा ये जहान रे, ओ रामा रे रामा तेरा कैसा ये जहान रे, ओ धरती का देखो हुआ कितना बुरा हाल रे. सर पे ज़मीं है, सर पे ज़मीं है, सर पे ज़मीं है, पैरों तले आसमान रे, आसमान रे हो, आसमान रे. सब है यहाँ पर पंचू में जकड़े, फिर भी झुके तेरे नाम के आगे. रामा रे रामा with me, रामा रे रामा, रामा रे रामा, रामा रे रामा. सब है यहाँ पर
झूठा ये संसार रे। ओ धरती का देखो हुआ कितना बुरा हाल रे। सर पे ज़मीं है, सर पे ज़मीं है, सर पे ज़मीं है, पैरों तले आसमान रे, आसमान रे हो, आसमान रे। Rama 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 O Rama 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 O Rama 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 O Rama Re Rama Tera झूठा ये संसार रे हो हो। Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, India Today, for inviting us. Thank you so much for being such a पता है हमारी गलती क्या रहेगी, हमको तुमको ना शुरू में we should have introduced the session with you. I said we should have introduced the session with you. Like शुरुआत तुमसे होनी चाहिए थी, है ना? Now the problem is कि people are here since morning. It's okay. तो सब लोग ना थके हैं, इसलिए सब don't feel bad. यहाँ पे रिक्वेस्ट आ रही है, यहाँ पे रिक्वेस्ट आ रही है. Which song? Rock on. Okay, okay. ना वो वाला. तेरी बाहों में जो सुकून सा मिला, मैंने ढूंढा बहुत था फिर ना मिला। दुनिया नोचे नोचे मुझको यूं, जैसे उनकी सारी की सारी मैं दुनिया देखे रूप मेरा,
जाने बेचारी मैं, हाय टूटी सारी की सारी मैं, तेरे इश्क में होई आवारी मैं, हाय टूटी सारी की सारी मैं, हो तेरे इश्क में होई आवारी कोई शाम बुलाए, कोई दाग लगाए, मैं भी ऊपर से हंसती पर अंदर से हाय क्यों दर्द छुपाए बैठी हूँ, क्यों तू मुझसे कहती है मैं भी तो बिखरा हुआ, हाय टूटी सारी की सारी तेरे इश्क में खुद ही से रूठी मैं, हाय अंदर ही अंदर से टूटा मैं, तेरे इश्क में खुद ही से रूठा सारी की सारी मैं, तेरे इश्क में होई आवारी थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। अब सबको थैंक्स करने का मौका नहीं मिला, कुर्सियों को कह देते हैं, बड़ी देर से बैठी हैं यार सवेरे से। थैंक यू सो मच द बैंड ऑल्सो यार, दे हैव ऑल्सो बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग। चले अब क्या खाना वाना लंगर मंगवाए तुम्हारे लिए? थैंक यू सो मच एवरीबॉडी यार, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। फेसबुक का बता दो अगर बताना चाहते हो, इफ यू वांट पीपल टू जॉइन यू। Please join us on Facebook. Yeah, facebook.com/triculin, TRSULN. Triculin. See you there. There's a lot more things for you. Thanks man, thanks. Thank you so much. They don't, huh?